Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon. Award. Yes, all set for the last match of Group A. It's B-Boys Alikala taking against United Paturu. After this match, we are heading to the one big match of the evening. It's Yennamangalore taking against Sneha Malamar. I request both the team, all the members, please come left side of the commentary box for sign and official chart. Yennamangalore taking against Sneha Cricketers Malamar. And here is the two opener already in the middle, Nizam and Altaf Walpadi, the big name in Underarm cricket. Rifwan will starting the procedure for United Patur from that end, that KFC end. Yes, we are getting the green signal
Fayaz Emmekere now joined the umpiring panel. Heartily welcome Fayaz sir. And it's Satish Modabidre, the square leg umpire. Here the first delivery from right arm round. First delivery from Rifan just played into that deep mid wicket. There's a protection there where the fielder collected the ball. United Oh, this time there is a waiting for the umpire signal wide down the leg side, and 2 extra run added here. Batsman meant for the run. This is a big name in Underarm cricket. Altaf Walpadi is such a fine cricketer. Last 7 to 8 years, he dictated in Underarm cricket with his brilliant batting. He's such a quality player, top of the order. But United Pathur, one of the finest club, not only in the cricket, even in a charity. United Pathur, they are doing a very good job actually. United Pathur Sports and Charity Club register Pathur. One good side with some quality players in their team. The previous match, Ravi played really good innings. Rifan once again is poorly marked. Low full toss delivery just outside off stump. Altaf Nizam wanted run, but Altaf denied that. Low full toss delivery. He could not put any bat on it. That's a dot ball here. Here is Rifan once again now from that KFC, and he's a fantastic bowler. Beautiful delivery. Big appeal came, but ball is pitching outside the leg stump. Yes, that ball coming in the middle stump line, but once ball is pitching outside the leg stump, yes, wicketkeeper just thought that that's almost in front of the stump. Yes, that's in front of the stump, but round the wicket bowling, when the ball is pitching outside the leg stump, very difficult to get LBW in the favor of fielding team. That's the rules of the cricket is saying that ball should pitch the stump line, then it come near the pitch, near the stump. That only possible chance of getting LBW in the favor of fielding team. Rifan. Oh, that just sliding down the leg side. Once again, big appeal came. Waiting for the umpire. That's an interesting replay. But yes, that's a only by signal actually. That's why I little bit confused because of that appeal. Yes, heartily welcome two of the finest commentators for the night in this evening. It's one of the famous couple. Jodi number 1, it's Gopi and Satish sir will join the commentary box for the next matches in the commentary box. Once again, heartily welcome behalf of KFC Konaje. Is the first over completed. After the completion of first over, 7 on the board. B-Boys Alekala without losing any wicket. Good start here for B-Boys Alekala. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, KFC ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ನ ರೂಪಾಯಿ ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ನಾಡಿದ್ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ 7. It's a Modipi Express Zubair from commentary box and bowling over the wicket to right-handed batsman now. Altaf Walpadi at the striker's end.
Yes, Modipu Express Zubair from the comment box and bowling over the wicket to right-handed batsman Altaf Wall Party. Beautiful delivery. This late appeal came from the bowler actually. Impact may be just outside of them. They are confident. Yes, it hit the boot actually. That boot is the front end outside of stump line. Impact just outside of stump. That's umpire's call. We call in cricket language. This time far away outside of stump. You can clearly see that replay also. Bowler confident. Oh, this time just bowls the very far away outside of stump and white signal from the umpire. So one of the very good side in Modipu Cricket Association, United Paturu. Not only good in cricket field, also very good in charity work. Beautiful delivery. This time try to go for the sock sweep. Waiting for the umpire signal. Maybe no, that's a leg by signal from the umpire. With that extra score now reached double digit 10 without losing any wicket. Good start here for B-Boys 11 Alekala. Oh, this time went for a big shot. This is Altaf Wall Party for you. We always say in the commentary box, no matter which ground he is playing, under daylight, under floodlight, he is the man can who six hitting like a drinking of water. Look at that. That's not a bad ball at all. The way he's connected, that's a perfect connection of the bat, and it went into the deep mid wicket boundary for six. Good crowd catch actually. Very good catch, but it's outside the rope actually. What a shot! Absolutely brilliant Altaf Wall Party. 3 ball completed, 7 on the board, 1.3, 16. Good comeback from Zubair. Ball, lovely delivery. Too long chase for the fielder. Aziz. Can he stop it now? Ball races into the deep extra cover boundary for 4. He bisected that two fielder mid off and shot extra cover. Long chase for the both fielder, but ball flying very quickly. Quick outfield here, even under floodlight. And got a 4 more run added. 6 followed by 4. Beautiful delivery, lovely ball that, excellent bowling from Zubair, wonderful comeback. This time ball that just outside of stump line, that the 5th stump line he bowled. It's a good comeback from the ball at 20 without losing any wicket. B-Boys Alekala, good start here for them. And a good delivery, lovely looking shot. After the couple of bounce, fielder collected the ball, but it could not able to stop the batsman to take in that second, and 2 more run added. Good power play over for B-Boys Alekala, which came 22 run after the completion of 2 over, 22 without losing any wicket.
So heartily welcome Abu Toir Panjikal, one of the finest Kannada commentator known as Voice of Sulya. His over number 2 completed, 22. Is Rifon once again brought into the attack from that KFC Konaje end, bowling round the wicket to right-handed batsman Nizam. Good delivery, just swept the ball behind the square and onside, long chase for the fielder. He's a little bit off balance. That allowed the batter to complete that 2 easy runs. Runs are coming thick and fast here for B-Boys Alekala. 24 without losing any wicket. What a dream start under floodlight. If you're scoring 24 in a 2.1, definitely good start. Rifon, second time is poorly marked from the round the wicket. Beautiful delivery, lovely shot into that deep mid wicket. With the fielder collected the ball once again, batsman had enough time to take that single. With that single, 25 on the board. Good start. Quite a century they reach here. 25 without losing any wicket. 2 balls completed of the third over. Little bit of expensive previous over for United Pathur, which including that towering 6 from the bat of Altaf Walpadi. Beautiful delivery, lovely ball there. Look at that ball, how quickly that ball traveled. I think himself he got hurt there, maybe bat hitting his leg. That's good to see that even United Pathur cricketer came and just checking him. That's the spirit of the game actually. No matter they are playing against each other, but situation like that, they came all together and just checking him. There's a slight delay as now the things are good, looking okay there. That's a good to see Altaf back and ready to face the next ball. 2.3 completed, 25. It is once again Rifon from round the wicket, right-handed batsman Altaf Walpadi, the big name in Underarm cricket. Just tap the ball in front of the square on the offside, and they're going for the second and good running between the wicket. Nizam always quick, but he just wanted to respond from his partner. That's a good running between the wicket. 27. Last 2 balls remaining of the third over. This time they completed a single waiting for the umpire decision, wide, and 2 wide runs added here with the 2 extra score now 29. A definitely good start here for B-Boys Alekala. Their opener started very well. Nizam playing anchoring role at other end. Altaf Walpadi started with good way, and what a shot he played. Absolutely brilliant shot. Lovely delivery just for in front of the square and onside into that deep mid wicket, and where the fielder collected the ball, batsman had once again enough time to take that single. With that single they reached 30.
2.5 completed. 30. They must again flick the ball into that deep and collected easy single. Over number 3 completed. After the completion of over number 3, it's 31 without losing any wicket. So halfway mark in the first inning is 31 without losing any wicket. Definitely good start here for B-Boys Ali Kala. Courtesy led by Altaf Wall Party. 17 from just will ball. Nizam at other end just playing the anchoring role. So Ashfaq now brought into the attack from the commentary box end. Ashfaq, beautiful delivery, just keeping air on the pad of the bat and just keeping out of the hitting zone of Altaf Wall Party. A little bit of struggling. Now they are asking for the third umpire, maybe stamp out check. Oh, there is something is happened there. Is that automatic stamp out or not? Oh, that will be the interesting replay actually. Yes, out signal from the third umpire. It's automatic stamp out actually. Well, the wicketkeeper tried to collect the ball. Same time ball hitting his hand and it came into the stamp. Base come off. That time Altaf is out of the crease. And a very good decision from Pradeep Kottari, third umpire. So Ashfaq got a big fish in his net as a lucky breakthrough for him. Every 6 batter will get 500 rupees. KC, Riaz Ahmad and Mercy Travels. The new batsman Ayaz into the middle. Just play the reverse sweep very effectively. He's a master playing the shot like that. He's one of the busy cricketer with the ball and with the bat. Such a fabulous cricket journey for him.
He known as a pocket dynamite from South Sporting Jaipur, and also played for Deadly Kankanadi, represented NM Mangalore, various clubs in Mangalore. Such a fine cricketer, Ayaz. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ this time Flum. This time Flum as you get Nizam departed. No doubt in the mind of the umpire. That's a very good call from the umpire. Nizam departed after a little bit of shuffle cross. Tried to work on the onside. It's a good bowling from Ashfaq. Wicket number 2. 2 set batsmen now already in the pavilion. Yes, that's a Flum as you get. No doubt in the mind of the umpire. Nizam little bit of shuffle cross and try to work on the onside. Ball missed the bat, hit the pad, and loud appeal came. No doubt in the mind of the umpire. Straight away raised his finger and he is walking back to the pavilion. New batsman Nawaz Urmane into the middle. Oh, this time try to save the ball. Is there is any bat in ball? Oh, there is appeal came that. Wide signal from the umpire. Definitely will ask for the third umpire. Yes, it is. Now some work for Pradeep. Definitely that white ball, no doubt about it. And throw came into the non-striker's end. Now was just ball watching. Oh, this is going to be touch and go actually. Yes, there's a confirmation out. Half meter shot when base come off. Nawaz departed. Now they are losing Vidamia. After getting very good start in the first 3 over. And this is a wonderful over from Ashfaq. 2 wicket for in his account. And 1 from the run of 3 quick wicket. Now Khalil into the middle at number 5. The next match, Sneha Malema take against NM Mangalore. Everything is ready now, and also 2 more commentator. The 2 big names as a commentator, Satish Salian sir and Gopi sir will join the commentary box for the upcoming matches. Once again, heartily welcome. So I request Sneha Malema cricketers and NM Mangalore, all the members, please come to the left side of the commentary box and sign an official chart. We can see the presence of owner of Mercy Travels, K.S. Riaz Ahmed. He really enjoying in the cricket tournament. Every 6 batsmen will get 500 rupees. Offered by K.S. Riaz Ahmed, owner of Mercy Travels. Just played a sweep shot after a little bit of shuffle cross behind the square on the onside and take an easy single with that single score now 34 for the loss of 3 wicket. For the next match, once again call for the both team, NM Mangalore and Sneha Malamar. Left side of the commentary box, signature sheet already open there. Humble request, both team, all the members, please complete the sign it official chart and get ready for that high voltage match of the evening. It's Sneha Malamar taking against NM Mangalore. Oh, this time once again down the leg side, chance for an out. Oh my goodness.
Similar kind of job. Once again, he's asking for the third umpire. Far away down the leg side. And they went for the run. Khalil late responded actually. Third umpire Pradeep Kotari just checking that every possible angle. So batsman reached there, not out. Signal from the third umpire. Bat already landed when base come off. 36 including that 2 wide. 3.5 completed. 36 for the loss of 3 wicket. So once again, after a little bit of shuffle cross and played behind the square and the onside into that deep backward square leg where the fielder Altaf collected the ball. Batsman had once again enough time to take the single. With that single, over number 4 completed, 37. Now their scoring rate so far 9.25 run per over after the completion of 4 over. Good going for B-boys. Yet they lost the 3 wicket in that last over, but definitely good going here. Yes, after the completion of 4 over 37 for the loss of 3 wicket. First over came 7 run, second over 15, third over 9 and 6 run in the last over. Good over. If he did not bowl that wide delivery, definitely. That will go in one good over for them, but unfortunately bowled couple of big wide ball. It is Altaf brought into the attack for the penultimate over from that KFC Konaje end, bowling over the wicket to right-handed batsman Ayaz and Khalil at the non-strikers end. This time wide signal from the umpire. So this is the problem with the United Paturu. They are not consistent with the line of the ball. Length is okay. They are bowling very good length along with the carpet. Beautiful delivery. Lovely shot in front of the square on the onside. Into that deep square. They are going for the second run. Good running between the wicket. Brilliant running between the wicket. Ayaz and Khalil. 2 more run added. With the 2 run score now moves on to 40 for the loss of just 3 wicket. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ KFC ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಡಿನ್ನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, there's a good delivery. Bend for the appeal. Oh, they're going for the second run, but denied that. I think bowler came right in front of the umpire. That's why umpire just said that if you're coming in front of me, I could not see what exactly happened there. Without giving any warning, just said that just don't come in front of me. This time just left the ball behind the square into that deep backward square again, collected easy single. With that single score now moves and 42 for the loss of 3 wicket. Good over started from Altaf. 3 ball completed. Yes, he conceded 5.
It's a 4-time is Polly Mark. Oh, lovely shot! Ball races into defense for 4. What a shot! Slock sweep at his best. What a shot! How well he fed the ball. Brilliant. Outstanding batting from Ayaz. Look at that. There's no problem at all with that ball. That's a good delivery. The way he fetched the ball from outside off stump, and he knows exactly there is a deep square leg and deep mid wicket. He bisected that two fielder. No chance for anyone to stop that ball. That ball races into the fence for 4. With that 4 run, they reach 46 on the board. Last 2 ball remaining of the penultimate over. Altaf. This time just play the reverse sweep. And collected easy single with that single 47 for the loss of 3 wicket. Last ball remaining of the penultimate over of the first innings. Khalil and Ayaz. Ayaz taken the role of senior partner here, including that wonderful looking 4 run with his bat. Beautiful delivery, lovely looking shot. They got a sweeper there. He stopped the ball, but he could not able to stop the batsman to take it that single. With that single, 48 for the loss of 3 wicket after the completion of 5 over. 6 legal ball remaining. Wait and see how many more they will add to the total. So young talented Hijaz brought into the attack for the final over. Both batsmen set to launch the big shot, especially Ayaz. 48 for the loss of 3 wicket. Last 6 ball remaining of the first innings. It is young Hijaz. He bowled really well in that United Pathor Premier League. Good delivery, even for the big shot! That's a fantastic work from the tall man, Rifan. There's an advantage having tall for him. If any other fielder that could have been easily cross over the head of the fielder, but the advantage of tallness for Rifan. Look at that replay there. Yes, that's a fantastic save from Rifan. Time up. Now they need to look at the replay. That very good capture from the cameraman of King Sports. So with that 2 run they reach the 50 mark. Congratulations, B-Boys Alekala, 50 for the loss of 3 wicket. This time try to go for the reverse sweep. Waiting for the umpire decision. That I don't think so any bat involved. Yes, by signal from the umpire. Batsman and a wicket keeper missed that ball. It went to the short third man fielder. He collected and threw the ball. Same time batsman had enough time to take that single. 51. Once again went for the reverse hit. Ayaz missed the line completely. That's a clever bowling he does.
So it is last 2 ball remaining, 52. Every 6 batter will get 500 rupees from Riaz, owner of that Mercy Travels. A beautiful delivery. Just run out. I think Khalil already given up. Last 1 ball remaining of the innings. So Ijaz into the middle. 52 for the loss of 4 wickets. Last ball remaining of the first innings. 52. The boys under floodlight 6-over game. Definitely good score, but cricket unpredictable game. Anything can possible. United Pathur, they got a formidable batting lineup. Last delivery, just play the sweep shot behind the square and onside. They're going for the second run. One more run out there. With that run out, they finished 53 for the loss of 5 wickets after the completion of 6 over. Yes, we were going to start off the innings number 2. Shafi Parpunja will join the commentary box in state and sweet language Kannada. Heartily welcome Shafi Parpunja. And also we got 2 more commentators for the next matches. It's big names as the commentators in South Kannada district. One of my favorites, Satish Salian sir and Gopi sir will join the commentary box when NM Mangalore take against Sneha Malamar. Before that, I request both the team, all the members, please come to the left side of the commentary box and complete the signed official chart. And also Riaz Mahakali Padpu. Every time when NM playing, we can see the presence of him. He is a good supporter of NM Mangalore. Heartily welcome Riaz. Yes, it's over to Shafi Parpunja. ಧನ್ಯವಾದ ಶಮೀರ್ ಮಲಾರ್ ಅವರೇ.
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈ ದಿವಸದ ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲಾ ತಂಡ 53 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 54 ಎಂಬ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯುವ ತುರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ನಿಜಾಮ್. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ವೈಡ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಕಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ ಪಾಡಿ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. 54 ಎಂಬ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ರು ನಿಜಾಮ್. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳು NFC ನ್ಯೂ ಪಡುಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರವಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಕಡೆಗೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಜೋರಾದ ಮನವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ತೀರ್ಪು ದಾಳಿಗಾರನ ಕಡೆಗೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2. ಮುಸ್ತಫಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಎಂಬ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ ಮುಸ್ತಫಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಯಾಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದ್ರು. ಹಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ 2 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ +1. ಹೀಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಈ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ರವಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ನಿಜಾಮ್. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ನಿಖರತೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಎಡವಿದ್ರು. ಈ ಇರುವ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಿಜಾಮ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಓವರ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
That's it, end of the first over, and after the end of the first over, it's 5 on the board for the loss of 2 valuable wickets. ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್ 4ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಪರವಾಗಿ ರಿಫ್ವಾನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತಹ ರಿಫ್ವಾನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ರವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ, ಈ ಚೇಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ರವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಕಡೆಗೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದೇ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ ತಂಡ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜುಬೈರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1.1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳಿದೆ. ಜುಬೈರ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರಿಫ್ವಾನ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಫೀಲ್ಡರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಚೆಂಡನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಾದಿ ಇದು. ರಿಫ್ವಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, 6ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ಮುಸ್ತಫಾ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ರಿಫ್ವಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 5ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ 2 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜುಬೈರ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಲಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಅಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಜುಬೈರ್. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ ಇದೆ 11 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿತಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರವಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಚೇಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ರವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ರವಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 41 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 25 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂತಹ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ರವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಜೋರಾದ ಮನವಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ರವಿ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಜುಬೈರ್ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡುಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜುಬೈರ್. ಆಫ್ ಕಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮೊದಲೇ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು.
ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 2.3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 17 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಓವರಿನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಆಟವನ್ನ ನೋಟವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ, ಆದರೆ ವಿಫಲತೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಾದಿ ಇದು. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್ 16 ಓಟಗಳನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಅಜೀ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಜೀ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಪರವಾಗಿ ಅಜೀಜ್. ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಜಾಮ್ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓವರಿನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಬಲು ದೂರದ ಚೆಂಡು ಇದು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನೇ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಹಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಕೊರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜುಬೈರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಿಜಾಮ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ರು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕೊರುಳ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18ಕ್ಕೆ 19ಕ್ಕೆ 6 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಜನತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ನೋವುಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓರ್ವ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಶೀರ್ ಕೆಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾವುದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ತೋಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಡಾರ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ತೋಡಾರ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಬೆದ್ರಾ ಕಪ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಓರ್ವರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 19ಕ್ಕೆ 6 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಜೋಡಿ
ವೀಕ್ಷಕವನ್ನೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ನೆನಪಾಗುವಂತಹ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅವರ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೇನು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳುವವರಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ 19 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, 20 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರಿನ ತಂಡ. ಅಯಾಸ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸೌತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಿಪ್ ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರಥಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಯಾಸ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಹಯಾಸ್ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಭರಿತರಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ಅವರ ಬಿಬಾಯ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್. 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಯಾಸ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು, ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಪನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಯಾಸ್. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಆಸಿಯ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 12 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ 31 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿಯೇ ಹೌದು, ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆದಿದ್ರು, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಜುಬೈರ್ ಎಸೆದ್ರು, ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆದ್ರು, 4ನೇ ಓವರ್ ಹಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, 5ನೇ ಓವರ್ ಇಜಾಜ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ, ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ ಇಜಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಇಜಾಜ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಪರವಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಜಾಜ್ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಚೆಂಡು 29ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಜಾಜ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರೌಂಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಿಚ್ಚುಮುವಿಕೆಗಾಗಿ. ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲು ಇನ್ನು ಕೇವಲ 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಅಪ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್.
9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 27ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. SBR ಗ್ರೂಪ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ಮರ್ಸಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಸಿಫ್ ಮಲಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳು 26ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 7 balls 26 runs required for the victory. Here comes the last ball, slow delivery, ನಿಧಾನಗತಿ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 25 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 25 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ನಿಜಾಮ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ನಿಜಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ 6ರ ಮುಂದೆ 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜೀಜ್ನ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡು 24ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಗಳು 7 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಗಳು 7 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎರಡೂ ತರದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಜೀಜ್ ಅವರ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಜ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಹೊಡೆತವೇ ಆಗಿತ್ತು. 1 ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೇರ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ. ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ. 2 ಚೆಂಡು 19ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು 18ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ತರದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಟೈಮ್ ಅಪ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್, ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಲ್ಡರ್ 30 ಗಜಗಳ ಒಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ತುದಿಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದರ ಮುಂದೆ 17ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ನಿಜಾಮ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನಂಬರ್ 45ರ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ನ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಫ್ KFC ಟ್ರೋಫಿ 2024. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲೆಕ್ಕಲ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂಬ್ಲಮಗುರು 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. NFC ನ್ಯೂ ಪಡುಪು ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ಸಾವಿರ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎನಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 2 ಯೂನಿಟ್ O ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ಇದ್ರೆ, O ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಎನಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ತೆರಳಿ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಕ್ತದಾನ ಎಂಬುದು ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ದಾನ. ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎನಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, O ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಸಂಘಟಕರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಸಂಘಟಕರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಿಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರುವೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಳ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಜೀಬ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ರಕ್ಷಕ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 6 ಓಟಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ಬೌಲಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ನಿಜಾಮ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ನಿಜಾಮ್ ಅವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು, 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು. ಕಳೆದ ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಎನ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಇದು. ಹಿಯರ್ ಮುಜೀಬ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿ ಆಟಗಾರ ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 1 ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಅರೀಫ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕಡೆಗೆ ಮನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಾರನಿಂದ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಿಫ್ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಗಲ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ದ ಲೈನ್
ಬಹುಶಃ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬುದು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 2 ಓಟಗಳು 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಾದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತುದಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಜೀಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಕನ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 2 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಯಿಸೋದೇ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ಷಕ್ ಅವರಿಗೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಜೀಬ್ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಕ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ರಕ್ಷಕ್. ಕಳೆದ ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ವಿರಾಜಮಾನವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು ರಕ್ಷಕ. ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಮುಜೀಬ್ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯತಿನ್ ರಾಜ್ನ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಮ್ರಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4. ಮುಜೀಬ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಜೋರಾದ ಮನವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೆಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ರಕ್ಷಕ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಮುಜೀಬ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗಂತೂ ಗುರುತಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ರಕ್ಷಕ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಮನ್ಸೂರ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭ ಇದು ಮುಜೀಬ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿಯ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 4 ಓಟಗಳು. 4 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟದವರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರವೇ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ಕೊಡದ ಯಶಸ್ಸು. ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟಕ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಆ ಚೈರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಂಡಿಗ ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಬಳಿಕ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಂಡಿಗೆ ಯತೀನ್ ರಾಜ್. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ರಿಯಾಜ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರತಾಪ್. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಆಸೀಫ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ. ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 10 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯತ್ತ ಚೆಂಡು. ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ. ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಗಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಮುಜೀಬನ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೊಡೆತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಹೊಡೆತ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖ್ಯನ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಯತೀನ್ ರಾಜ್. ಎಸ್, ಮುಜೀಬ್ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಬಳಿಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆಟಗಾರರು ಮುಜೀಬನತ್ತ ತೆರಳಿ ಆತನ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟಕರು ಕೂಡ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಜೀಬ್ ಅವರ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನೇ ಸರಿ ಬೌಂಡರಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಸರಿ. ಖಂಡಿತ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಗಾಯಾಳುವಾಗಿ
ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅರ್ಕಾನ ಚೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಬಲ ಕಾಲು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಜೀಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಮುಜೀಬ್ ಅವರನ್ನ ಮೈದಾನದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಜೀಬ್ ಅವರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಶಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆತೀಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಗಾಯಗಳ ಮಧ್ಯ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮರೆತಿದ್ವಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಯತೀನ್ ರಾಜ್. ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆತೀಫ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಆತೀಫ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಲಗೈ ದಂಡಿಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರತಾಪ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಜಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಜ್. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಅಡವಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. 16 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. 7 ಓವರ್ಗಳು. ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಆಡೋದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತೀಫ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಹಾಗೂ ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 42ಕ್ಕೆ 42 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರಿತದ್ದೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸೈಡಲ್ ರನ್ ಔಟ್. ಪ್ರತಾಪ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರನ ಕೈಗೆ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತೀಫ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖ್ಯನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತೀಫ್ ಎಸೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಎಡವಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆತೀಫ್ ಗೋಟ ರಕ್ಷಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ.
ನಂಬರ್ 4 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರಿನ ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ ಬೀಸಬಲ್ಲಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಗೀತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ನಂಬರ್ 4 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಪ್ಪಟ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್ ಆತೀಫ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆತೀಫ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಗೀತೇಶ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಗೀತೇಶ್. 1 ಓಟದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 19 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈಸಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಾಗುವ ಮೊದಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೌದು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮೆರುಗನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೌದು. ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಡ್ರೈವ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೈವ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೀತೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಖರ್ ತುದಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು, ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, ರೈಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಫೈಸಲ್ ಅವರ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಂತಹ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇದು. ಫೈಸಲ್ ಅವರ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಯಾರ್ಕರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಫೈಸಲ್. ಅತಿ ಸುಂದರತೆಯ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಯಾರ್ಕರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ಲೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೀತೇಶ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 21ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 21 ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ 21 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. LBW ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ 42ಕ್ಕೆ 42 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ತಂಡವೇ ಹೌದು. ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವವರಿದ್ದಾವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖ್ಯಾತ ಧ್ವನಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಸಲ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಂಡಿಗ ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ
ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು, 23 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ 23 ಓಟಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದರು, 9 ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸಿ 13 ಓಟಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯತೀನ್ ರಾಜ್. ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. 24 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 24 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸ್ನೇಹ ಮಲೆಮಾರ್ ತಂಡ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಗ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. For recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Shafi Panja as well as Samir Malar did a great job as a commentator for this prestigious KFC Trophy 2024, which is proudly organized by Konaje Friends cricketers in this most beautiful and huge central stadium here in Konaje. So, good evening everyone, and a special good evening to all the spectators of Konaje. Absolutely, it's going to be a fantastic way. Have a look at the crowd here. The jam-packed stadium out here in this most beautiful cricket ground, and you are going to witness one more fantastic match between Sneha Malemar versus NM Cricketers Mangalore. After completion of 4 overs, it's 24 for the loss of 3 wicket, and over number 5 will going to start from the commentary box. And right above the wicket balls, some lovely delivery of towards legs of the batsman, and batsman is quite nicely flexed on of his legs down to mid-wicket region before the fielder from deep mid-wicket region to collect that one, returns that one. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, Coburn moves on to 26 for the loss of 3 wicket. And just coming back to these 2 teams, of course you are watching this match of the Mangalore poll. 2 top teams in Mangalore having a contest with this fantastic cricket tournament KFC Trophy 2024. Again, nicely bowled. This time the batter wanted a run. Shravan wanted to get the single, but his partner Yatiraj is not interested. Rightly so. Fielder, a little correction, Atif is very, very good fielder on his follow through. Quickly moving to the direction of the ball, denying the single from the batter, and no question of any run. Score remains on 26 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Atif away from us, right arm of the wicket. Again, that was a fantastic one. Shravan, technically very sound player. Have a look at that way that is stretching his front foot. The line of the ball. This time overthrow. They will definitely going to grab this opportunity of overthrow. Each and every run going to be a very, very crucial in this match. You can't give this much of runs, especially for the against a team like Sneha Malemar, because they got a fantastic bowling department. After they're winning that very prestigious title, Yuvaratna Trophy in the last week, they are definitely going to have a different team. They definitely have got a lot of confidence behind them. So that is a lot of hard work is required for each and every run against their fantastic bowling department. And Atif again bowling right arm over the wicket, bows to Shravan. Nothing much to do with the delivery. It looks like the batsman thinking that it's definitely going to be a wide, just getting away from the line of the delivery. Left the ball into the hands of wicketkeeper, but ball went to that short fine leg region fielder. No question of extra run, just a wide, and with that wide, Coburn moves on to 29 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Atif, the big all-rounder for the side of NM Cricketers Mangalore. Lovely delivery. Looks like something is going in behind the wicket, but a slight bit of excitement rather than confidence. Mansoor behind the wicket. Maybe he's just wanted to get Shravan stump out, but Shravan's back foot absolutely right inside the line, so no question of asking for third umpire as well. Have a look at that one replay. Atif just coming wide of the crease and ball just getting a shape away from outside the line of leg stump, but fantastic work. And everybody knows that Mansoor is one of the greatest wicket keeper behind the wicket, and even under floodlight it's not so easy for any wicket keeper to gather the ball, especially when you're gathering the ball outside the line of leg stump. Lot of technically sound work which is required. He's definitely very technically good wicket keeper as far as underarm cricket is concerned, and he kept the ball and uprooted the stumps, but no damage done. Shravan once again back to his
crease. Facing the next delivery from Atif, away from us. Right arm over the wicket. Oh, what a shot. Beautiful. Absolutely glorious. And then plays it down to cow point region. We'll have a look at the running between the wicket. Oh, my goodness. There's a misfield there by the fielder. It's absolutely unforced error. Looks like it was just a couple of runs at least for that cricketing stroke, but have a look at the stroke they have shown. Beautiful, absolutely. Just like in international cricket, you are watching that kind of cricketing stroke. And have a look at the fielder. It's absolutely unforced error. He's not really getting his two hands behind the ball, just in the last moment removing the eyes on the ball, and pays a big penalty for that. I already mentioned each and every run under floodlight is definitely going to be a very, very crucial. That boundary brought the team to, brings the total score into 33. Thank you. 33 for the loss of 3 wickets. That's sensible batting. This is really a very good sensible batting from Shravan. Just let the ball to coming to his bat and places the ball down to short cow point region for a single. So thank you very much. Please listen what organizer are requesting you, because everybody knows, of course, you are very good followers of cricket, but at the same time, you need to follow the rules and regulation of traffic, isn't it? If you keep your vehicles in either side of the road, it's very difficult for the traffic and very difficult for the vehicles to pass between. So your cooperation is much required, and without your cooperation, it's very difficult for us to organize this big cricket tournament like KFC. And please ಕೋಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಇರಿಸಬೇಕು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಾಡಿಯ ಓನರ್ಸ್ನವ್ರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ರೋಡ್ನ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್, ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6, and looks like it's a vehicle battle is on, and 34 for the loss of 3 wicket. NM Cricketers Mangalore, certainly one of the most prestigious team in South Kent district. They also got some very good success in the season 23-24, and just suddenly they wanted to get one more crown in the crown because they know that this is one of the most prestigious cricket tournament, and they wanted to win the match. For that, a lot of hard work is required in the first round itself. They are facing the one more formidable team of South Kent district, that is none other than Sneha Malemar. Next match will be played between one more big match which is going to coming up in front of huge spectators here, and Gori Young Boys versus Torpedoes Kana. So that I request all the players of both the teams, and please complete your formalities of signatures as soon as possible. Right arm of the wicket bounce. This time off the toes, plays it down to short mid wicket region. That ball just coming into the batter, but there is no bat involved. In fact, ball which is having missing the leg and missing the bat and hitting his leg, so that umpire called it leg by umpire Pradeep Kottare, at square leg umpire Fayaz. Two very good umpires doing the job in this very good match between Sneha Malemar versus NM Cricketers Mangalore. Riaz from the far end, right arm over the wicket. This time ball is in there. Chance here for the fielder to take the catch. This is absolutely huge wicket for NM Cricketers Mangalore. Yatiraj looks so dangerous so far in this particular match. He just wanted to play a long innings for his team, but this time he couldn't manage to get what he really wanted. Just his ambition to get that one down to third man region, but ball is just getting into the top of the bat, and have a look at that one. Absolutely, he wanted to get that one to third man region, but ball because of the extra bounce, he couldn't manage to keep it down. Backward point fielder takes a catch. Wicket number 4, which is back into pavilion of Sneha Malemar. Well, we are talking about this cricket tournament. Fantastic cricket tournament is in progress. It's not so easy to organize the cricket tournament. Of course, you are seeing there's 2 days of cricket tournament, but more than 2 months of efforts which is required for organizing such a huge tournament under floodlight. And thank you very much, organizer, for your great effort to make this possible and giving the opportunity for the cricket lovers here to watch this fantastic and prestigious cricket tournament. And this is, we can see that if the cameraman of
King Sports will go into. Just have a look at the crowds here. Absolutely, have a look at the crowd. They are the one responsible for the success of any cricket tournament. And this is what it shows the popularity of underarm cricket. You can't get better than this, isn't it? Absolutely, huge stadium, and more than anything else, we love to see the crowds enjoying the game of cricket. And Riaz from the far end. Right above the wicket again. That was a gentle push down to short square leg region. They're looking for the second. There's a sensible cricket, absolutely sensible cricket there from Ranjit. The successful captain of Sneha Malamar now walks into middle. What a great season he's having as a captain. Of course, everybody knows the World Cup of underarm cricket, UFC trophy, 30 overs per minute game. He leaded NFC Urva, and he leaded NFC and takes his team into victory with his great leadership. And after that, in the last week, Ivaratna Trophy 2024, he is the one leading the Sneha Malamar and takes his team into victory. And he is the one who is responsible for all the success being leading from the front. This time, Divan right in the gap down to cow point region. Just a single here. With that single score, moves on to 38 for the loss of 4 wicket in the over number 6 in progress. And always he is coming in right position whenever the slog over is going. And he is the kind of batsman, Ranjit. He just knows that what kind of the batting is required in the slog overs. Again, right arm over the wicket, Shawan. Someone is playing a sensible knock here. So far, he is looking so good. Have a look at the placement there from Shawan. Shawan knows that the condition very well. He knows that they're playing under floodlight. Of course, very difficult to get the boundaries and sixes. It's not like that every matches you need to deal with the boundaries and sixes. Sometimes if you're playing in this such kind of cricket ground, huge ground, the placement absolutely exquisite from Shawan there. And have a look at the runs he scored. 13 runs which came from the bat. 10 balls he faced. Now umpire Pradeep Kottar is suggesting that NM cricketers Mangalore there exceeds the time limit, so that they need to bring one fielder inside the ring as a penalty. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಅದು ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Oh, what a delivery. What a fantastic. This is the last thing what Riaz wanted to do here for Shravan, to get one fantastic delivery, because Riaz is a master of doing that. It's not the first time he's doing that kind of deliveries. Whenever he wanted to get the big wicket, this is the delivery he always used. This is one of the biggest weapon he will going to use if he wanted to get a wicket. Have a look at that one replay. Coming wide of the crease. Oh my goodness. This time maybe I think Shravan's mistake. It's not like that it's going to be a wicket taking delivery, but Shravan just wanted to place the ball. He wanted to get the ball between point and extra cover, so that he was just a bit lazy to get that ball into his bat. Because of that, ball just defeating his bat and went into the stump. Have a look at the cricket ground here in this in monitor. Absolutely, it's a very round, isn't it? Just like a cricket ball. That much of round shape we can say this cricket ground. You can't get better than this. The ground, if you are seeing in the South Kent district, the ground, it is definitely going to be in a round shape. Absolutely fantastic capture here from the cameraman of King Sports. And a lovely view of this cricket ground from drone camera, capturing this beautiful view of this cricket ground. Fantastic. And the cricket lovers will going to remember this tournament for a long time. It was absolutely fantastically organized by the organizers. Now I request Torpedo Skana, few players are not signed yet, so that I request those who are not signed, and please complete the formalities of signatures as soon as possible. This I'm driven that one down to cow point region. They will go in to run quickly then. They're looking for the second, but very difficult to get the second then. And ample time for the batter to complete that one valuable runs. With that single scope, and moves on to 41 for the loss of 5 wicket. Both the teams are each other in that Ivaratna Trophy as well. And Ivaratna Trophy, the team Sneha Malamar, they defeated Torpedo Skana in the semi-final. And what a fantastic day they got in that last week tournament was held at UCG cricket ground, and they wanted to continue that performance in this tournament as well. Right, I'm over the wicket again. Now, what a fantastic walk! This is Mansoor for you. This is Mansoor for you. Just if you wanted to see that the way that is making that stump, it's not so easy, because batsman almost committed for the reverse sweep. When the batsman committing for the reverse sweep, always covering the line of the ball. It's not so easy for the wicket keeper to judge the line of the ball. Have a look at that. What I'm telling here, it is an outstanding wicket keeping there from Mansoor.
and that's why he still is considered as one of the greatest wicket keeper in underarm cricket as far as collecting ball around the legs of the batter has been outstanding. Behind the wicket, one more wicket is back into pavilion. It's 41 for the loss of 6 wicket in the over number 7 is in progress. KFC Trophy 2024 and Konaje Friends cricketers were organizing this cricket tournament, the wonderful cricket tournament in this huge cricket ground. And Kendra Maidan, of course, you can call as a central stadium here in Konaje. And Konaje, everybody knows, popularly known for educational hub. The Mangalore University situated here, and of course it is established in 1980, and almost 43 years of long history what Mangalore University has got near to the stadium. And here is a absolutely jam-packed stadium in this KFC Trophy 2024, and just witnessing this fantastic event. Again, first ball, nicely, delicately played there by the batter down to short third man region for a single by Mustafa. With that single score, but moves on to 42 for the loss of 6 wicket. 42 for the loss of 6 wicket. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. So here is again the bowler, right arm over the wicket, bounce distant driven, what a shot, what a magnificent strike, outstanding cricketing stroke. This is Ranjit for you, what I told, and I am not wrong. If you pick my word before he is coming to the middle, I told that he is the kind of batsman, he is a leader of the team, he knows exactly what kind of treatment required in the slog overs. This is an unbeatable struck, isn't it? Huge ground and still he getting the distance. Can you believe this? What an astonishing cricketing stroke came from the bat of Ranjit. Absolutely surprised everyone. And this is really the batsman what we were talking about, the brave and gutsy batting from Ranjit. 48 for the loss of 6 wicket. Imran again, right arm over the wicket, wanted to go for the switch hit, but this time ball just missing his bat. Maybe that is looking for the second. Ranjit wanted to strike back, and this is a very good thinking from the batter's point of view, because Ranjit desperately wanted to back in a strike, and he wanted to get strike back, and of course for him Mustafa sacrificing his wicket, quite understandable that Ranjit wanted to back on strike. So one shot of 50, 49, definitely going to be a danger signal. One more timed out call by umpire. This is not a good sign for NM Cricketers Bangalore. They have to bring one more fielder inside the ring. That will going to provide Ranjit to get some gap. But last ball remaining, this is not talking about only one ball remaining for the innings of Sneha Malamar. They got already 49 on the board, and last delivery going to start from the commentary box hand. Imran. Bowling away from us, pass umpire Fayaz, right arm over the wicket, bounce. This is going to be a really not required. Ranjit wants a run, 1+1, 2 more to the total. 50 comes off here for Sneha Malamar, and this is turning out to be a good score in under floodlight. But I'm not saying that is enough, because NM Cricketers Mangalore, everybody knows what the capacity, what the capability they got in the batting department. But seeing the bowling department of Sneha Malamar, I want to say that a lot of hard work required for NM Cricketers batter to get that 51. Imran again, right arm over the wicket, bounce, going for the drive, misses it completely. Now Ranjit just thinking about why I came into the non-strikers then, because the Rajesh is the batter, he wanted to get that one in extra coverage and misses the line completely. Wicketkeeper completes the formalities of making stump out, and that's it. Sneha Malamar, they finished their 7 hours quota, and after that 7 hours, and captain must be very pleased with the runs what he is seeing in the scoreboard. Got a 51 valuable runs, and they got a 52 target for the team Sneha Malamar. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ತಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನು ತಂಡದವರಿಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವಾದ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ತಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Sneha Malamar versus NM Cricketers Bangalore. Before that, yes, everyone support our ground net seller, Kadle seller, Siddiq.
Konaje ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ KFC ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much. We are really grateful and thankful for all the donors who have contributed heartily for the success of this cricket tournament KFC Trophy 2024. And just coming back to this match after with the team Sneha Malamar, they finished their quota of 7 overs and they made 51-52 to win this match. And yes, Gopi, welcome for this prestigious KFC Trophy 2024. And NM Cricketers Mangalore, I think they need to work hard, and 52 runs which is they wanted to get, but seems to be a difficult task, but not impossible in cricket. In cricket, absolutely everybody knows that it's a unpredictable game, and cricket is game of glorious uncertainty. If you wanted to make an uncertainty, I think NM Cricketers Mangalore have to get a good start here, especially the first 2 overs going to be very crucial for them, that they wanted to get start positively, get 15 to 20 runs without losing any wicket, then certainly will go into for NM Cricketers Mangalore. But question raising here is, Gopi, against a strong bowling department of Sneha Malamar, lot of hard work is required. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला KFC ट्रॉफी 2024 की शानदार प्रगति होती हुई टॉप सीडेड टीमों का मुकाबला इस वक्त जारी है NM मैंगलोर और स्नेहा मालेमार के बीच। तो जैसा कि इस वक्त जहां तक सवाल है 51 रन स्नेहा मालेमार ने बनाए, 52 रनों का लक्ष्य। और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, बिल्कुल सही बात, यहाँ पर NM मैंगलोर को 52 रन बनाने हैं अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ स्नेहा मालेमार। तो जहां तक सवाल है NM के पास भी सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, दे गॉट अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है, अभी ऐसा कहना पड़ेगा मैच लगभग बराबरी पर रुक चुका है। पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट। और गेंद सीधे पहुंची आखिरकार एक बार फिर से गेंदबाज के हाथों में। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं रंजीत, जो कि ट्रम्प कार्ड गेंदबाज स्नेहा मालेमार की ओर से, तौफीक और अजीम आरंभिक बल्लेबाज, और विकेट कीपर प्रताप में बेहतरीन तरीके से यहाँ पर विकेट जरूर उखाड़े, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट टक्रीज पर लैंड हो चुका था और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। NM टीम के लिए इनाम घोषित किया गया है 3 छक्के, हैट्रिक छक्के के लिए 5000, हैट्रिक चौके के लिए 3000 और यहाँ पर घोषित किया गया है इकरा गोल्ड स्क्रैच इनकी ओर से हैट्रिक छक्के के लिए 5000 और हैट्रिक चौके के लिए 3000 NM क्रिकेटर्स के लिए घोषित किया गया है। टाइगर अशरफ इनके लिए, टाइगर अल्ताफ इनकी ओर से। और जहां तक सवाल है इस वक्त इकरा गोल्ड श्रीरज टाइगर अल्ताफ इनकी ओर से इस वक्त इनाम घोषित किया गया है। तो इस वक्त गेंदबाज वाइड लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड किस रन के साथ यहां पर रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है NM मैंगलोर के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच इंडीड। जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, तो इस बीच गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। शरीफ बंटवाल ವೈಟ್ का इशारा, शरीफ बंटवाल ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿನ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು शरीफ बंटवाल। तो यहाँ पर वाइट का इशारा और वाइट के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, निश्चित रूप से मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया कि दे हैव टू मेक अ रन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ स्नेहा
मलेमार और निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत एनएम मैंगलोर को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर यहाँ पर कर सकती है। तो गेंदबाज रंजीत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो इस वक्त तौफीक सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तो विकेट लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि एक बार फिर से वाइड का इशारा। वन मोर वाइड एडेड टू द टोटल एंड विद दैट वाइड रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली अ गुड स्टार्ट नीडेड फॉर एनएम मैंगलोर इफ दे हैव रीच्ड द टारगेट ऑफ 52 runs set by Sneha Malemar in 7 overs. As far as the required run rate is concerned, just over 7 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wicket. The present equation shows for them. And just talking about this prestigious cricket tournament, KFC Trophy 2024, this prestigious tournament is now progressing along nicely under floodlights. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रंजीत इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तो विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद उछाला जस्ट ओवर द मिड ऑफ फील्डर सेड एंड दिस टाइम इट्स कुड बी गॉन ऑल द वे, जस्ट वेट एंड सी। और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। It just is that one, just wide of the mid off fielder और लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंच नहीं पाए। Have a look at this in the replay, lofted stroke and it went just wide of the mid off fielder और शायद मौका वहां पर जरूर था फील्डर को गेंद तक पहुंचने का, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंच चुके थे। सरप्राइजिंगली गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। तौफीक के बल्ले से चौका लग चुका है। रंजीत निश्चित रूप से यहाँ पर अपनी सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तलाशते हुए जस्ट सर्चिंग फॉर हिज राइट लेंथ एंड अ लाइन बाय रंजीत और इस बीच अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। तौफीक का पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद रंजीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अंडर फ्लड लाइट्स निश्चित रूप से एक बेहतरीन नजर हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और दर्शकों से खचाखच मैदान इस वक्त भर चुका है, लगभग जंप पैक स्टेडियम। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 8 without loss in the over number first in progress। और जहां तक सवाल है, रंजीत अब तक इस ओवर में कुछ खास असर डाल नहीं पाए हैं। 8 रन अब तक प्रदान कर चुके, 2 वाइड 3 वाइड शायद वो फेंक चुके हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर अपनी सही लेंथ और लाइन को वो तराशते हुए विकेट कीपर इस वक्त प्रताप गेंदबाजी फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और इस बीच रंजीत भी इस वक्त उनका हाथ बटाते हुए लॉग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान जो फील्डर तैनात है उन्हें थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है। और जहां तक सवाल है, सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद है और रंजीत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर नहीं, गेंद को रोका गया है बेहतरीन तरीके से फील्डर द्वारा। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेव मेड बाय द लॉन्ग ऑफ फील्डर। जैसे ही गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार करे, देखते हैं यहाँ पर रिप्ले पर क्या हुआ था। गेंद को उछाला था स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड और गेंद को जैसे ही सीमा रेखा को गेंद पार करे, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए मैक्सिमम प्रयत्न के जरिए गेंद को इस वक्त रोका गया। और देखिए यहाँ पर दिस इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट। श्रवण फील्डर थे जिन्होंने इस गेंद को रोका बेहतरीन तरीके से और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और रंजीत ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए लगभग प्रताप के अंगूठे से थंब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, गेंद टकराने के बाद जब तक गेंद फील्ड हो, शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। सो इट्स 11 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो बाइक का इशारा और जहां तक सवाल है गेंदबाज रंजीत का, तो एक लंबा ओवर उनका यहाँ पर प्रगति पर। तो इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज तौफीक और रंजीत 3 से 4 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट टू गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, जस्ट वेट फॉर द अंपायर सिग्नल। अंपायर इस वक्त स्कोर है 1 रन, इट्स ऑफ द बैट। तो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। तो इस बीच
स्कोर 12 रन और पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर चेजिंग द विकेट टारगेट ऑफ 52 in 7 overs set by Sneha Malabar. NM Mangalore made a pretty good start. They managed to score 12 runs on the board. Yet to lose one wicket after completion of first over. So let's straight away coming back to the equation. 52 minus 12, that means 40 runs exactly required in remaining 6 overs with the required run rate of exactly 6.66 runs per over. And they got still all 10 wickets kept retired. सर्वदस विकेट सुरक्षित. एक बार फिर से इनाम के बारे में मैं घोषित कर दूं. 3 छक्के 5,000 रुपए, 3 चौके 3,000 रुपए, इकरा गोल्ड और टाइगर अल्ताफ के जरिए इस इनाम की घोषणा की गई है. और देखते हैं इस वक्त कौन सा बल्लेबाज इस इनाम का फायदा उठा पाते हैं. तो गेंदबाज इस वक्त तैयार गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए. और कमेंटेटर नहीं, हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. और इस वक्त नया ओवर उनकी पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ. किरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. और पहले ओवर में 12 रन बनाने के बाद सहज रूप से इस वक्त दबाव गेंदबाज के ऊपर. और 36 गेंदें बाकी हैं जबकि 40 रन और चाहिए. निस्संदेह कुछ ऐसे डॉट गेंदों की जरूरत है इस वक्त जो उसने हमारे मार्केट मैच में वापस ला सके. फिलहाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. किरण ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद को उछालना चाहा. फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्लोअर लाइन. द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड and went into the hands of wicketkeeper and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 12 without loss. 35 balls left, 40 runs exactly required. और मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है. किरण बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ बाएं हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहे. एक बार फिर से बेहतर गेंद विकेटकीपर प्रताप चूके लेकिन और इस बार दोबारा चूके और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन यहां पर प्राप्त कर लिया. बाई का इशारा. हालांकि पहले प्रयत्न में गेंद उनके हाथों से छूटी थी जरूर. दूसरे प्रयत्न में गेंद को तेजी के साथ उन्होंने फील्ड करना चाहा लेकिन दूसरे प्रयत्न में भी गेंद को फील्ड नहीं कर पाए. और 1 रन का इजाफा 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. धन्यवाद. और यहाँ पर मुकाबला इस वक्त जारी है. एनएम मैंगलोर और स्नेहा मालेमार के बीच. दर्शक एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम दर्शकों से खचाखच मैदान इस वक्त भर चुका है. और निश्चित रूप से भरनी भी चाहिए क्योंकि टॉप सीडेड टीमों का मुकाबला, मंगलूर के टॉप सीडेड टीमों का मुकाबला यहाँ पर जारी है. और जहां तक सवाल है इस वक्त किरण का, तो किरण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला. बकुला थर्डमैन सीमा रेखा से गेंद इस वक्त अंदर या बाहर देखना पड़ेगा. अंदर गेंद को फील्ड किया गया है बेहतरीन तरीके से. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन. तो इस बीच बल्लेबाज रन से बटोर चुके हैं. 2 या 3 इस वक्त देखना पड़ेगा. 3 यहां पर इशारा करते हुए. तो 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 16 रन पर. खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त खेला था बल्लेबाज अजीम ने और 3 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल. किरण बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. बेहतर शुरुआत लगभग दे चुके हैं ये दोनों सलामी बल्लेबाज तौफीक और अजीम. और इस बीच किरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार तौफीक के लिए गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लेकिन गेंद पहुंची डीप इन विकेट पर. नॉट मोर देन अ सिंगल. इनफैक्ट ओह दिस कुड बी इन ट्रबल इफ ही गॉन थ्रू फॉर अ रन. इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड बिकॉज़ ऑफ दैट ओवरथ्रो. और यहां पर विकेट उखाड़े गए हैं और अंपायर ने इस वक्त इशारा किया है तीसरे अंपायर की ओर. नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर. और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं. तो शायद गेंद इस वक्त वहां पर टकराई थी अंपायर को और जैसे ही गेंद यहां पर वहां से डिफ्लेक्ट हुई बल्लेबाज ने दूसरा रन तोड़ना चाहा और 2 रन पूर्ण कर चुके हैं लेकिन यहां पर विकेट उखाड़े जा चुके हैं. और देखना यह है कि इस वक्त तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं. तो खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है. एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट केओसी ट्रॉफी 2024 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई. और निस्संदेह यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा एक त्योहार भरा माहौल, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर इस मैदान पर इस वक्त छा चुका है. नो डाउट इज द कॉल. और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं. तो स्कोर इस वक्त है
कुल मिलाकर 18 रनों पर 18 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। तौफीक और अजीम पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए और किरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए तौफीक और इस वक्त किरण अगली गेंद बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त कुछ हद तक मिस जजमेंट और आखिरकार गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 18 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। बहुत ही सुंदर सा विशाल सा कोनाजे का ये केंद्र मैदान और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन और प्रसिद्ध क्रिकेट श्रृंखला इस वक्त चलती हुई एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला कहा जा सकता है कि केएफसी ट्रॉफी 2024 की शानदार प्रगति होती हुई अंडर फ्लड लाइट्स और किरण अपनी ओवर की अगली गेंद ये गेंद इस बार तौफीक के लिए बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग विकेट कीपर द्वारा, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट यानी पिछला पैर क्रीज पर सुरक्षित और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 18 विदाउट लॉस और कुल मिलाकर दूसरा ओवर यहां पर समाप्त हो चुका। तो पहले इस ओवर में मेरे ख्याल से 6 रन बने, 6 runs scored in this over and after 2 overs still NM Mangalore are now looking in a good situation. They managed to score 18 runs in the first 2 power play overs and now still they have to score 34 more runs for victory in remaining 5 overs. That means in remaining 30 deliveries with a required run rate of exactly 6.80 runs per over and still they got all 10 wickets kept intact. तो कुछ बातचीत इस वक्त करने के बाद स्नेहा मालेमार के खिलाड़ी देखते हैं इस वक्त कौन से गेंदबाज को इस वक्त मैदान पर उतारते हैं और बातचीत इस वक्त जारी है और इस वक्त खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है और निस्संदेह किंग स्पोर्ट्स के टेक्नीशियन और कैमरामैन एक बेहतरीन काम यहाँ पर अदा करते हुए बेहतरीन कार्य यहाँ पर अदा करते हुए और फलस्वरूप एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर हमें इस वक्त मिल रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हजारों दर्शक, कई हजारों दर्शक इस श्रृंखला का, इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का, प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट जिसे कहते हैं, मुआयना करते हुए यूट्यूब पर। तो ये बात दर्शाता है कि मंगलूर में अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता रखता है। तो इस बीच रंजीत गेंदबाजी शुरू करते हुए ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬಳಿ ನಿಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. रंजीत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट पहली गेंद लेकर तैयार। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लेग कटर डिलीवरी दिस टाइम फ्रॉम द बॉलर और बल्लेबाज गेंद को खेलने के प्रयास में चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। नेक टू नेक फाइट इस वक्त जारी है और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा, अभी भी ये कहना मुश्किल है कि इस मैच का विजेता कौन होगा। इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट द सिचुएशन। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो 18 रन पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और एक बार फिर से खेल आगे बढ़ता हुआ। रंजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और अजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। तो काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। 2 ओवर के खेल के पश्चात तो फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त रंजीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है खूबसूरती के साथ और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन तरीके से रोक ली गई है। फैंटास्टिक सेव मेड बाय द लॉन्ग ऑफ फील्डर। Certainly that was in a 6, लेकिन अंतिम क्षण में जैसे ही अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए अपने अंतिम प्रयत्न में गेंद को उन्होंने ढकेला सीमा रेखा के अंदर और जो फील्डर थे इस वक्त श्रवण जिन्होंने इस गेंद को रोका था, देखिए किस तरीके से गेंद को रोका गया था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले एंड दिस टाइम एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जैसे ही गेंद को रोकने के बाद उनका पैर सीमा रेखा के ऊपर गिरा, लेकिन इससे पहले गेंद को वो ढकेल चुके थे और उनका पैर हवा में था, द फुट वाज इन द एयर। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का तो रन मिले इस गेंद पर सिर्फ 2 और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का तो 20 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। फिर से एक बार गेंदबाज एक रन गेंदबाजी
एक रन इस वक्त मिल चुका है, 21 रन, 21 विदाउट लॉस, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो रंजीत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और तौफीक इस वक्त सामना करते हुए और पहले विकेट की तलाश में इस वक्त गेंदबाज, ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को बोड़ना चाहा, गेंद को इस वक्त गेंद पोजीशन फाइन लेग पर निशाना दागा था इस वक्त, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज एक रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं, और दैट वाज एन अननेसेसरी, और अंतिम क्षण में गेंद ओवर थ्रो के रूप में जा चुकी थी और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं, और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका, कुल मिलाकर 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 22 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस, फाइन प्रोग्रेस हियर फॉर एनएम बैंगलोर, स्लोली एंड स्टडीली दिस पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए रंजीत, और जहां तक रंजीत का सवाल है, अब तक कुछ खास असर वो डाल नहीं पाए एनएम के बल्लेबाजों के ऊपर, निस्संदेह अपने पहले विकेट की तलाश में और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ये गेंद इस बार बेहतर, फैंटास्टिक, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, जस्ट मूविंग a little bit at the last moment, just beating the batsman's bat, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 22 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। रंजीत एक बार फिर से तैयार, अपने सही गेंद की तलाश में इस वक्त धीरे धीरे वो लौटते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को बेहतर, फैंटास्टिक, 2 डॉट बॉल्स इन अ रो, एंड दिस इज अ गुड ओवर केम टू एन एंड फ्रॉम रंजीत, 3 overs gone, and after 3 overs the score is now 22 without loss, or let's straight away coming back to the equation, 52 minus 22, that means exactly 30 runs required in remaining 24 deliveries, that means in 4 overs with a required run rate of exactly 7.5 runs per over। और जहां तक सवाल है इस वक्त, पहले ओवर में रंजीत ने 12 रन दिए थे, तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि एनएम बैंगलोर के बल्लेबाज छा जाएंगे, उसके बाद बेहतर कमबैक किरण ने किया जिन्होंने सिर्फ 6 रन दिए, और उसके बाद वापस रंजीत गेंदबाजी पर उतरे, पहला ओवर में 12 रन देने के बावजूद कप्तान ने उन पर विश्वास रखा, उनको गेंदबाजी सौंपी और वो विश्वास को वहां पर बरकरार रख चुके हैं, तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन प्रदान करते हुए, अब 30 रन चाहिए, 24 गेंदें बाकी, और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। तो दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, और निस्संदेह मैंगलोर की 2 टॉप सीडेड टीमों के बीच इस वक्त मुकाबला जारी है, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए किरण इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए, और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज तौफीक के लिए, तो इस वक्त तौफीक का सामना करने के लिए तैयार, 24 गेंदें 30 रन, मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है, विकेटों की सख्त जरूरत इस वक्त स्नेह मलेमार रख के गेंदबाजों को इस मैच में वापसी करने के लिए, और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, परफेक्ट लेग कटर गेंद थी किरण की, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, प्रश्नार्थक तरीके से क्वेश्चनेबली अंपायर की ओर जरूर देखा कि शायद वाइड अंपायर देंगे, लेकिन अंपायर वहीं पर खड़े रहे, और यहां पर अंपायर ने इशारा किया है तीसरे अंपायर की ओर की क्या ये वाइड है या नहीं, ये परिशीलन करने के लिए, और देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर यानी तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन करने के बाद। So that was a fair delivery told by main umpire, and now just we have to wait and see what the decision came from the third umpire। तो इस वक्त दोनों टीमों के बीच एक कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है, और निश्चित रूप से जहाँ तक सवाल है तौफीक और अजीम का, तो एक बेहतर शुरुआत अपनी टीम के लिए वो यहाँ पर दे चुके हैं, और जहाँ तक सवाल है स्नेहा मालेमार का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए यहाँ पर एक विकेट, कम से कम एक विकेट, खासकर इस जोड़ी को इस वक्त उन्हें तोड़ना होगा अगर उन्हें यहाँ पर इस मैच में अपनी वापसी करनी है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ। और तीसरे अंपायर सतीश जो कि इस वक्त उसका परिशीलन करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, कुल मिलाकर 3.1 ओवर का खेल इस वक्त पूर्ण हो चुका है, और
एंड दैट वाज अ फायर डिलीवरी, बिल्कुल सही गेंद घोषित था और अंपायर का निर्धार भी सही था बिल्कुल। और स्कोर इस वक्त 22 रनों पर रुक चुका है बिना किसी नुकसान के। डॉट गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है और किरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। निश्चित रूप से किरण इस वक्त अपनी पहले विकेट की तलाश में इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई एक बार फिर से, लेकिन इस बार वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती थी और वाइड इस वक्त घोषित और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ते हुए, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था और 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुका है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 25 up for Mangalore and still 27 more runs now they have to score for victory। अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला मिड विकेट पर 1 रन के लिए, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 26 रन बन चुके हैं, 26 रन और बनाने हैं। हैट्रिक छक्के के लिए 5000, हैट्रिक चौके के लिए 3000 एकला गोल्ड इन्होंने घोषित किया एनएम टीम के कोई भी बल्लेबाज के लिए। जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंद का, तो इस ओवर में 2 गेंदें अभी भी बाकी, और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो किरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई इस वक्त सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोका गया बड़ी मुश्किल के साथ, और इससे पहले कि गेंद को रोक कर थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 2 रन इस वक्त आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर। 28 विदाउट लॉस विद जस्ट अ बॉल टू गो इन दिस ओवर, और किरण इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा। कुछ हद तक बाधा डीप बैक पर स्क्वायर लेग पर 2 balls left, beg your pardon, it's a 2 balls left। जहां तक सवाल है इस वक्त 2 गेंदों का, तो 2 गेंदें इस वक्त किस तरह से फेंकते हैं गेंदबाज ये देखना पड़ेगा, और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार रहता है। हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, बेहतर गेंद थी और डॉट गेंद। अब अंतिम गेंद बाकी इस ओवर में, और स्कोर है इस वक्त 28 रन बिना किसी नुकसान के। 28 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। द लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लंगोन पर मौका इस वक्त फील्डर के लिए, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। आजीम की पारी समाप्त। लेग कटर गेंद पर करारा प्रहार जरूर किया था, लेकिन गेंद में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो लंगोन सीमा रेखा को पार कर सके। देखिए किस तरीके से यहां पर ये सब हुआ था, रिप्ले में इस वक्त दिखाया जा रहा है। बेहतर गेंद थी गेंदबाज की, बल्लेबाज के पास समय था कि गेंद को उछाले, और उछाला भी उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए, स्टेप आउट करते हुए, लेकिन लंगोन पर इस वक्त प्राप्त करते हुए फील्डर को। तो एट लास्ट स्नेहा मालेमार, द बॉलर ऑफ स्नेहा मालेमार गॉट द ब्रेक थ्रू। 28 runs opening partnership has been broken. Now it's 28 for the loss of 1 wicket after completion of 4 overs. अब 18 गेंदें बाकी, और रन से चाहिए इस वक्त 24। 24 to get from remaining 18 balls. Still the match is now equally balanced. So 24 required, 18 balls remaining, 3 ओवर का खेल बाकी। तो आइए सतीश आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं। यहाँ पर 18 गेंदें 24 रन, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन। और जहां तक सवाल है अंतिम का, स्नेहा मालेमार के गेंदबाजों ने यहाँ पर विकेट प्राप्त किया, तो शायद ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन यंग एनएम के पास जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, उस बल्लेबाजी के लाइनअप पर दबाव डालना है, तो कुछ विशेष रणनीति, डिफरेंट टैक्टिक्स इस वक्त अपनानी होगी स्नेहा मालेमार की गेंदबाजों को। जहां पर इस वक्त बल्लेबाज का आगमन हो चुका है रिवर्स स्पेशलिस्ट अजहर का, तो इस वक्त यहां पर ऐसा एक ही रास्ता इस वक्त बता स्नेहा मालेमार को कि वो चंद कसे वो ओवर्स फेंके और चंद विकेट उखाड़ ले, वरना निश्चित रूप से यहां पर एनएम क्रिकेटर्स का तख्ता भारी हो सकता। फिलहाल अब तक के हालात देखकर ये कहना पड़ेगा इट्स कुड बी एनीबॉडीज गेम, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Thank you very much, Kopi, and absolutely right. You are just talking about the
team is evenly balanced. It's going to be anybody's game. It's a 50-50, and rightly said, the previous over last delivery, they got a wicket of Azim. That will going to give slight comeback here for the team Sneha Malamar, but not totally. And wait to see how well Tawfiq as well as Azhar, just you already mentioned about reverse sweep specialist, came into middle, and that is going to be a testing time for the bowlers of team Sneha Malamar. The bowler Asif brought into attack from the commentary box end and bowling away from Azhar. Right arm over the wicket, wanted to go for the reverse sweep. Wicket keeper misses. Absolutely, it's going to be a big miss. The Pratap in the delegation couldn't manage to gather that one. Each and everyone I already mentioned, it's going to be very crucial, and you can't do this mistake when you're playing against NM Cricketers Mangalore, isn't it? Absolutely fantastic match is in progress between these teams, because both the teams desperately wanted to be in the next round of this prestigious KFC Trophy 2024. Now 30 on the board, that means another 22 more runs required for the victory. And this time he lofted, what a handsome looking drive. That will go into clearing ground. Magnificent, absolutely outstanding cricket stroke came from the bat. It's unbelievable stuck. Have a look at that on a replay. Hasid this time balls that one, incoming delivery. It's little bit shuffled across the line of delivery. Tawfiq hoisting it over down to deep mid wicket for a huge 6. And now because of that 6, team NM Cricketers Mangalore, they're strongly back in the game. What a fantastic struck came from the bat of Tawfiq. Absolutely, he is a dangerous batsman. Again, sensible, absolutely sensible. After that 6, exactly, no need to panic at all. Just a rotation of strike is very important in a situation like this, and he's just doing the right job here. 37 for the loss of 1 wicket. 6.1k live watching this cricket tournament. This is a really the perfect example of a popularity of underarm cricket. And one more single, nicely plays it down to square leg region for a easy single, and with that single Skobar moves on to 38 for the loss of 1 wicket. What a fantastic comeback here by NM Cricketers Mangalore. One big cricketing stroke changing the complexion of this game. Right over the guide, one more. This is a better than the previous one. This is a huge one. Ball just sailing into the crowds. Tawfiq is on fire. He's just choosing the bowler. It's been an outstanding cricketing stroke coming from the blade. This is really going to be a punishment is given by the batter, and Ashwin Raj has been punished here. It's not Asif, please make a pardon. It's Ashwin Raj is a bowler who bowled that delivery, and batsman has been absolutely punishing that 2 deliveries of Ashwin Raj. Now just 8 runs required from 12 balls, and now I think NM Cricketers Mangalore, now everything is up to this man Kiran. How well he managed to restrict this over in this particular over, and Tawfiq really changing the complexion of this game, hitting that 2 sixes. Absolutely, that was a monumental. The second one has been a huge 6 came from the bat of Tawfiq, and he's just changing the complexion of this game. The man in a terrific form for NM Cricketers Mangalore did a great job in the BMR Trophy. Now he is in this particular match. He's been outstanding. 12 on the 12 balls, and this time appeal for leg before wicket. Umpire is not interested, but here is the batsman coming over the second run. Everything is going in favor of NM Cricketers Mangalore. Leg by call by umpire. Now just 6 more runs required for the victory in 11 balls. This has been outstanding and gutsy and brave batting performance from NM Cricketers Mangalore, especially the Tawfiq. Right, over the wicket again, went for the reverse sweep. Azhar knows that he's one definitely need to play as per the condition required. No need to panic at all. Not really looking for the big shot, but he's just looking for the rotation of strike. And Skobar now moves on to 40. 5 on the board, again outside the line of off stump, and the dotted delivery, but this one single dotted delivery is not good enough for Sneha Malamar. They needed regularly, at the same time needed some wicket if they wanted to back in the game. Kiran, right arm over the wicket, this time he's going for the big shot. One more dotted delivery. Ball is very close to the stump, I think so, but no damage done. Now 46 on the board, that means 47 on the board.
46 on the board. Again the bowler Kiran from the far end. Right arm over the wicket. Bounce, one more dotted delivery, wicket keeper fumbles in the sense. One more run added to total. No, it's gone in the non-cycles, and that's the end of fantastic knock of Taufik. It's really not a good idea for the Taufik is back in the pavilion in the form of run out. Have a look at it. This is directed, absolutely directed, and so that I think no question of Taufik to rescue from that throw, which is came from the hands of wicket keeper. So 46 for the loss of 2 wicket. So little bit correction. Scoreboard is 47 on the board. That means 5 more runs required for the victory. So Kiran trying his level best. This is going to be very interesting now. 8 balls remaining. 5 runs required for the victory. 7 balls. Again from the far end. Kiran, right arm over the wicket balls. This time going for the switch it. The protection is there for the switch it, but they wanted to come back for the second. In comes the throw from the deep. Chance of run out, and looks like Azhar just made it. He just made it. No question of third umpire. No, they're asking for the third umpire at last. Fayaz, after seeing the reaction of the fielders, why not have some get some technical help here to get that decision, because he doesn't want to take any risk here. Each and every run going to be crucial here. And oh my goodness, it's the first attempt, the wicketkeeper missing the stump. That's why Azhar is complete that run. And batsman is safe, is not out, and 2 runs which is scored. (49) for the loss of 2 wicket. After getting a total score of 51 runs under this condition, having such a fantastic bowling department, Sneha Malemar are now just thinking about where and when the things went wrong. But certainly that 2 sixes really changing the complexion of this game. Otherwise, it is definitely going to be a different ball game. And that's why the Taufik is a danger man as far the opposition Sneha Malemar is concerned. Meanwhile, I request to both the captain for the next match, please report here for the tossing ceremony. Torpedoes Khana ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ. The 48-49 for the loss of 2 wicket. 3 more runs required for the victory. Here is the last over. Went for the reverse sweep. It's going to be a chance for white +1. 2 more to the total. Pratap already conceded 2 runs in this first delivery. That means scores are leveled. The 51. Just 1 run required for the victory. This time, appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Leg by Sutton is going to be. And that's it. The NM Cricketers Bangalore defeated Sneha Malemar. And it's definitely going to be a great chasing here for NM Cricketers Bangalore under this difficult condition against a strong bowling department. And they through to the second round of this prestigious cricket tournament, KFC Trophy 2024. Congratulations, NM Cricketers Bangalore, for your outstanding performance in this match. And certainly it's going to be a little bit heartbreaking moment here for supporters of Sneha Malemar, one of the most disciplined team as far as the cricket is concerned in South Kendra district. Sneha Malemar, they finished their journey in the first round itself, and yes, the all efforts are gone in vain. But crowd here, absolutely they enjoy the game of cricket here against NM Cricketers Bangalore versus Sneha Malemar. ಈ ಮೈದಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು.
ಟರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ KFC ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಅಸ್ವಾದ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಚ್ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಗ್ ಸೇಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ಸ್, ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಬುರ್ಕಾ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೋ 800, ಯಮಹಾ R15 ಹಾಗೂ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಜ್ವಾದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ರಫೀಕ್ ತಲಾಕಿ ಅವರು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ the second match of the Mangalore Fool. The two very good teams will go into have a contest here. Team Gori Young Boys will go into take a challenge of team Torpedoes Khana. The man of the match of the previous match, which is goes to Taufik of NM Cricketers Mangalore for his outstanding batting performance. ದಯಮಾಡಿ ತೌಫಿಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಕಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆದಂತ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಆ ಕಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೀವು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು. Gori Young Boys captain won the toss, elected to field first against Torpedoes Khana. One more good match will go into commence, and now it's the time. ದಯಮಾಡಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ತೌಫಿಕ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ತೌಫಿಕ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So match will going to start, one more big match, and two teams absolutely there. One of the top teams in South Kenda district, team Gori Young Boys,
and team Torpedoes Khana. And Torpedoes Khana coming back to that team in the beginning of the season. They won very prestigious YSV trophy, and after that they didn't got that much of success, but they're definitely going to bounce back. They wanted to bounce back, and wait and see how well they're going to bounce back in this KFC Trophy 2024. But at the same time, Gori Young Boys definitely they got a fantastic season. They won 2-3 very good titles in this season 23-24. They got they're very good in a track, and wait and see how well the team Torpedoes Khana will going to break the winning track of Gori Young Boys. It's going to be one more good match here, and for that match for the first 4 hours, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language indeed. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾವು. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. The captain of Torpedoes Khana, please to be reported here. The captain Torpedoes Khana ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತಮ್ಮ ಆಡುವ ದಯವಿಟ್ಟು Dhanyawad Satish. So the match starts. One more good match is now coming up. Gori Young Boys will take over Torpedoes Khana, and that match is now going to start right now. So news is here from the center that the captain of Gori Young Boys, after won the toss, he elected to field first, and because of that, the openers of Torpedoes Khana are the crease, and we are just waiting for the first ball of the match. For this match, hat-trick 6, there will be a 5,000 rupees cash prize. For hat-trick boundary, hat-trick 4, there will be a 3,000 rupees cash prize, which is declared by Ikra Gold, Mr. Siraj, and तो इस बीच गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तो मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज लोफल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार
और ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ तक गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग पर और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है यहाँ पर टोरपेडो काना का। तो जहां तक सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, गोरी यंग बॉयज कि कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि लिया है अंडर फ्लड लाइट और इस वक्त एक गेंद टोरपेडो काना की पारी में फेंकी जा चुकी है। अशरफ खाता खोल चुके हैं, तनवीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो इस वक्त नौफल फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। तनवीर इस वक्त सामना करते हुए और अगली गेंद इस वक्त नौफल की ये गेंद इस बार तनवीर के लिए ड्राइव कर दिया गेंद को, गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, नौफल की गेंद इस बार गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है और जहां तक सवाल है इस वक्त शायद स्टंप्सों को टकराई थी लेकिन सीधे नहीं। तो इस वक्त बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं और जहां तक सवाल है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, शायद विकेट कीपर के पैर पर टकराने के बाद गेंद स्टंप्सों पर टकराए थे और जहां तक रनों का सवाल है तो 2 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और टोरपेडो काना का जहां तक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त उन्हें एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है और खासकर तनवीर और अशरफ के ऊपर सारा दारोमदार इस वक्त एक बेहतर शुरुआत देने की, जो कि सलामी बल्लेबाज। और जहां तक गोरी यंग बॉयज का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए घातक गेंदबाजी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। अगली गेंद, ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ कवर की दिशा में गेंद जाती हुई आफ्टर 1 बॉल कलेक्टेड बाय द फील्डर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಶರೀಫ್ ಇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ। ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು। तो 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। ये गेंद इस वक्त गेंद को स्वीप किया टॉप एज, लेकिन फील्डर स्क्वायर लेके थोड़े से पीछे गेंद का पीछा करते हुए 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और तेजी के साथ दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ। तो इस वक्त गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और इसी के साथ फर्स्ट ओवर हैज बीन केम टू एंड 6 रन बन चुके हैं। 6 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय टोरपेडो काना and after being losing the toss and put it to bat by Gori Young Boys in this Bangalore Pool second match and this is an absolutely steady start for them. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಮತ್ತು ಯನಪೋಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಿರ್ಲಗಟ್ಟೆ, ಕೆಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 3, 2024 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನ ಕಲ್ಲಾಪು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 3 ತನಕ ಈ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವು ಜರುಗಲಿರುವುದು। ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸಕ್ತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಕನ್ನಡಕ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು। ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಸೊ now second over starts. Fayaz is now going to start the fresh proceedings or ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಬಳಿ ನಿಂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फयाज और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार कमेंटेटर बॉक्स की ओर से और सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज
तनवीर और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिना तो ऊपर विकेट ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता ऑफ कटर गेंद थी गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए पैरों पर टकराए रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है और इस बीच फयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंद को खूबसूरती के साथ मिड ऑफ पर लेकिन कांट बीट द मिड ऑफ फील्डर हैज गॉट ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस और फयाज 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार जबकि सामना करते हुए इस वक्त अशरफ जो कि 5 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस बीच नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है इस 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के दर्शक अभी भी मैदान पर लगभग भरे हुए मैच का आनंद इस वक्त लेते हुए खामोशी के साथ और इस बीच गेंदबाज फयाज के ओवर की अगली गेंद दाहिने तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए फैंटास्टिकली स्ट्रक came from the bat of Ashraf ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड और निश्चित रूप से इस गेंद को उन्होंने उछाला था मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया लंगोन सीमा रेखा से बाहर गेंद दर्शकों के बीच इस वक्त जा गिरी है इन बिटवीन द स्पेक्टेटर्स और जहां तक सवाल है छक्के का तो छक्का इस वक्त उनके खाते में जुड़ चुका है इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर इट्स 13 विदाउट लॉस फैंटास्टिक स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ अशरफ और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट फयाज की गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट आफ्टर फर्स्ट बाउंस ऑन का खतरा और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज तनवीर काफी आगे निकल आए थे गेंद पहुंची थी आफ्टर फर्स्ट पॉइंट कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में और आसान सा रन आउट नॉन स्ट्राइकर पर होता हुआ पहला विकेट गिर चुका है टॉर्पेडोज का लगा और 13 रन इस वक्त स्कोर है ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕೆ ಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट कोनाजे फ्रेंड्स क्रिकेटर्स ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है केएफसी ट्रॉफी 2024-2024 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत आज अंडर फ्लडलाइट्स पहले दिन के मैचेस इस वक्त खेले जाते हुए रात के 11:15 यहाँ पर बच चुके हैं लेकिन दर्शकों से मैदान लगभग इस वक्त भर चुका है एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम और एक बेहतरीन मैच इस वक्त खेला जाता हुआ मैंगलोर के दो टॉप सीडेड टीमों के बीच में अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप पर आते हुए और जहां तक सवाल है बल्लेबाज का तो शाकिर इस वक्त बल्लेबाज थे जिन्होंने गेंद को इस वक्त शाकिर नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है गेंद को खेलना चाहता इस वक्त अशरफ ने और आखिरकार रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला 2 ओवर की समाप्ति 13 रन बच चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर्स कंप्लीटेड एंड 13 रन स्कोर पहले ओवर में 6 रन बने दूसरे ओवर में 7 रन बने 13 रन 2 ओवर के बाद और कुल मिलाकर उनकी पारी में 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी तो मैंगलोर पूल का जहां तक सवाल है 6 प्रतिष्ठित टीमें मैंगलोर पूल में हिस्सा ले रही है पहला मैच है जो कि अभी भी समाप्त हो चुका है एनएम मैंगलोर और स्नेहा मालेमार के बीच जिसमें एनएम मैंगलोर ने विजय दर्ज कर लिया है दूसरा मैच इस वक्त यहां पर गुजरता हुआ गोरी यंग बॉयज और टॉर्पेडोज काना के बीच में इस मैच के बाद एक और बेहतर मैच यहां पर खेला जाएगा मंगलूर के 2 टॉप सीडेड टीमों के बीच में केसीसीआर कद्री और यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच में और जहां तक सवाल है इस मैच का तो इस वक्त मुकाबला जारी है टॉर्पेडोज काना और गोरी यंग बॉयज के खिलाड़ियों के बीच तो गेंदबाज साहिल गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात तो फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं पावर प्ले समाप्त हो चुका है फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात फ्लडलाइट्स की जगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है और अंडर फ्लडलाइट्स इस वक्त इस प्रतिष्ठित
इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत KFC ट्रॉफी 2024-2024 के अंतर्गत यहाँ पर ये मैच इस वक्त प्रगति पर दाहिने हाथ ओवर द विकेट स्वीप किया। इस वक्त शाकिर ने खूबसूरती के साथ लेग स्पिन गेंद थे और गेंद को जब तक डीप स्क्वायर लेग पर फीड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। निस्संदेह यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना को जरूरत है एक साझेदारी की, जबकि गोरी यंग बॉयज के गेंदबाजों को जरूरत है चंद कसे हुए ओवर्स और विकेटों की यहाँ पर। और दोनों टीमों की ओर से इस वक्त कोशिश जारी है इस मैच में अपना जलवा जो कि दिखाने के लिए। और इस बीच साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। अशरफ गेंद ने गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा प्लेसमेंट बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग प्लेसमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। और यहां पर अशरफ का विकेट गिर चुका है, तो अशरफ अपने कदम को क्रीज पर जमा ही रहे थे कि उनका विकेट इस वक्त गिर चुका है। एक छक्का उन्होंने लगाया और यहां पर देखिए लेग कटर गेंद को किस तरह से उन्होंने उछाला था लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। अशरफ ने बनाए कुल मिलाकर 11 रन 1 छक्के की मदद से 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया और आखिरकार लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा लपक लिया गया। 14 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है। 14 for 2। तो नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है आरिस, जो कि नंबर 18 की जर्सी पहने हुए इस वक्त क्रीज पर तैनात और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए काफी दूर दूर तक पहला वक्त रक्षण में यहां पर दिखा देता वह लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, जबकि डीप कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद ठीक है स्क्वायर ऑफ द विकेट सीमा रेखा के पास। और इस बीच साहिल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज एरिस के लिए, और एरिस फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त तैयार साहिल की गेंदों का सामना करने के लिए। और इस बीच अगली गेंद साहिल के एरिस के लिए, ये गेंद स्वीप करना चाहा, लेग स्पिन गेंद थी और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकली। विकेट कीपर अपने दूसरे प्रयत्न में अपने दाईं ओर जाने के बाद गेंद को फील्ड कर लिया और इस बीच रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा। ये गेंद इस बार बेहतर फैंटास्टिक पिक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बाइंड द स्टंप्स, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर प्रदीप ने अब इशारा किया है तीसरे अंपायर की ओर। तो देखना यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे, जब बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर था या फिर द बैकफुट वाज इन द एयर। So we have to just wait for the third umpire decision. Not out is the call and the batsman survived in this delivery. और यहाँ पर विकेट उनका बच चुका है और स्कोर है इस वक्त 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। It's 14 for the loss of 2 विकेट। और गेंदबाज साहिल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और निस्संदेह बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग इस वक्त विकेट कीपर ने की थी, लेकिन इस बार अंतिम क्षण में गेंद बैकफुट इस वक्त क्रीज पर था बल्लेबाज का और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए साहिल दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। तो एक साझेदारी की इस वक्त सख्त जरूरत है टॉर्पेडोज खाना को, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से गेंद इस वक्त बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट के जरिए खेला था खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर गली फील्डर की दाईं ओर से गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ और 4 रन इस वक्त प्राप्त करते हुए इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर यहाँ पर 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आरिस के बल्ले से लगता हुआ। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो आरिस
एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार साहिल की गेंदों का, और साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट साहिल की गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को मोड़ दिया, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, नॉट मोड़ देना सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 for the loss of 2 wickets, 3 overs had been bowled and still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर दरख्वास्त करता हूं कि केसीसीआर कदरी और यंग फ्रेंड्स उरुआ के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर यानी साइन दर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर मुकाबला इस वक्त जारी है गोरी यंग बॉयज और टॉर्पेडोस काना के बीच में, और गोरी यंग बॉयज के कप्तान ने जो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, लगभग इस का समर्थन पहले 3 ओवर में गेंदबाज जो 3 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए गोरी यंग बॉयज की ओर से, नौफल, फयाज और साहिल, उसका समर्थन वो कर चुके हैं, और इस सफलता के सिलसिले को इस वक्त गोरी यंग बॉयज के गेंदबाजों को बरकरार रखना है आने वाले ओवर्स में। और जहां तक सवाल है टॉर्पेडोस काना का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर साझेदारी जो उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर कर सके। शाकिर और एरिस क्रीज पर मौजूद, दोनों में अपार अनुभव है, और देखना यह कि ये दोनों अपने इस अपार अनुभव का किस तरह अनावरण करते हैं यहाँ पर एक बेहतर साझेदारी के जरिए। और गेंदबाज अंसार गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद, और जहां तक सवाल है इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग तैनात, डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त अंसार तैयार। एक बेहतर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं गोरी यंग बॉयज की ओर से, पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए एरिस के लिए 3 से 4 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती है। बेहतर गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके, और गेंद विकेट कीपर के हाथों से चूकी, और जब तक गेंद को दोबारा फील्ड किया जाता, यहाँ पर गेंदबाज द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 20 for the loss of 2 wicket at the start of the 4th over, और अंसार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए Shakir के लिए 100 stroke, and that is a Shakir stride in the gap in fact, and he's got a couple run for that stroke। ऐसे स्ट्रोक से ज्यादातर शाकिर ही खेल सकते अपने एक हाथ से सिंगल हैंडेडली। गेंद को रिवर्स शॉट इस वक्त उन्होंने खेला था खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और 2 रन इस बीच बल्लेबाज बटोरने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज अंसार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप किया टॉप एट, लेकिन फील्डर कोई वहां पर नहीं, गेंद जाती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 ही रन के साथ बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। इट्स 23 for the loss of 2 wickets। एक बेहतर साझेदारी करने की पूरी कोशिश करते हुए शाकिर और आरिस इस वक्त रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहे, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली एट द लास्ट मोमेंट, बट गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 24 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress। अंसार एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस वक्त दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद थर्ड मैन की दिशा में पहुंची, और अपनी पीछे की ओर दौड़ लगाकर तब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे। 1 रन का इजाफा हो चुका है। बेहतर ओवर अंसार का समाप्त हो, शायद 1 गेंद बाकी है इस ओवर में, और अंसार इस वक्त धीरे धीरे अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आरिस इस वक्त सामना करते हुए अंसार की गेंदों का, ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर, और जब तक लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा 1 रन का इजाफा हो चुका है, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर। 26 for 2, 4 overs completed and quite well going was bowled in this first 4 overs, 3 overs left in overall calculation in Torpedoes Kana's innings, और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। 26 for 2 after 4 overs, और इससे पहले की 5वां ओवर प्रारंभ। माइक्रोफोन
माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का अकोदिकाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi, and Torpedoes Khan are searching for the right track. So far, they got 26 runs in 4 overs by losing 2 wickets. 2 batters out there in the middle, Harris as well as Shakir. After that, the wicket of Tanvir, which is went very cheaply after he scoring 3 runs out of 3 balls. Then Ashraf came in and he played a very good innings. The quick fired 11 runs from 9 balls, and after that these 2 batters they tried to consolidate, and so far they're doing the right job in this 4 overs. So now 3 overs remaining, and it's going to be very crucial for both the teams. And from the far end, Naufal will go into continue. Right arm over the wicket, ball just coming into the batter after Lecter in the negation from Naufal, and the batter Harris this time not quite able to get that one right from the middle of the bat, but good enough for him to get the single down to square leg position with that single scope, and moves on to 27 for the loss of 2 wicket. This time quite interesting kind of cricketing stroke there from Shakir, that just let the ball coming to his bat. Of course, his first intention is to play that one into that backward point region by playing the switch hit, but seeing the line which is going away from outside the line of leg stump, and single-handedly played that one down to short fine leg region. Outside run of off stump, punishable from the umpire. It's going to be a bonus run for the team Torpedoes Khan. 1+1, 2 more run added total. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. 30 for the loss of 2 wicket. Now Fall will go into ball again. Wanted to go for the switch. It took again. Shakir is not really getting that much of room to play the shot, as the ball is just going outside the line of leg stump. Good thinking by Naufal, seeing that Shakir is going for the reverse shape regularly, and he's just changing the line quite cleverly. And 31 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Naufal again bowling with a short run off from the far end. Right arm over the wicket. This time delicately played that one down to deep backward point region. Protection is there for that cricketing stroke, so that you need to settle for the single. The wicket single score, but moves on to 32 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. Slowly and steadily these 2 batters just try to get the runs, try to get each and every deliveries to convert that one as a scoring one, and they got a success. Naufal again, right arm over the wicket, looking for the sweep shot, but not quite able to get past that short fine leg fielder. Riaz the fieldsman there, the short fine leg fielder. My goodness. Umpire called it wide. Very interesting to see. Arif called it wide, and now umpire will go in to check what really happened. Once it looks like Harris, little correction, Shakir wanted to go for the sweep shot, and then where to see? Yes. It's a no wide. Umpire just Arif taken off that decision. It's a no wide. Last ball. So last delivery now fall from the far end. Right arm over the wicket delivers.
Oh, lovely delivery, beautifully ball. Quicker one, the first one there from Naufal, and Harris wanted to drive the ball, misses the line completely. Wicketkeeper did behind the stump, did the rest back to bowler. 5 overs completed. It's 33 for the loss of 2 wicket. Tarpadoska now. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬರದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. So last 2 overs remaining in the innings of Tarpadoska. 33 on the board, and just coming back to these two teams, and they are really trying hard. And Tarpadoska and Goryang boys. I already mentioned Goryang boys, and recently they won that title at Todar. The cricket tournament is played at Todar. They're becoming the champion. And as coming back to the floodlight matches, Tarpadoska is known to be the king of floodlights, because their performance is always going to be superb whenever there is a floodlight matches. They're always becomes the favorites, and they got their own supporters, and one of the most popular team, just like NM Cricketers Bangalore, Tarpadoska, as well as Goryang boys. All team has got their own followers, and they're getting some good supporters behind them everywhere they're going in the part of South Kendra district, even our neighboring state, Kerala. So Fayaz will go into ball that very important 6th over, and right arm over the wicket to Shakir. Shakir again just wanted to disturb the concentration of the bowler by moving here and there, and he was just succeeded. And because of Shakir is almost shuffled across the line of the delivery, almost he's standing in the 5th or 6th stamp, and Fayaz were confused where to ball, and he wanted to avoid that bat of Shakir. He balled far outside the line of off stamp, and wide call by umpires. Scored numbers on to 35 for the loss of 2 wicket. Looking for the same shot, reverse sweep in the direction, attempted chance of run out there. Wicket keeper now fall, just Karna missing the stumps. Leg by call by umpire. So one more single which is added to total. With that single, score numbers on to 36 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 6 is in progress. Fayaz, right arm over the wicket bounce. Coming down to take, using his feet, down to deep, wideish long on boundary. Very good piece of fielding there by the fielder. And before the throw which is coming from that fielder, absolutely ample time for both the batters complete their 2 valuable runs. I think it's a good piece of fielding there by the fielder in the deep, wideish long on. What could be a certain boundary? Absolutely good collection. The very good collection there from fielder in the wideish long on, and a slight a bit of interesting cricket is going on between Shakir and Fayaz. Fayaz wanted to deliver the ball, but seeing the Shakir is shuffling across, he's just stopping his run up. Again, lovely improvisation there from Shakir. Wanted to get an on. Finally, they're coming back for the second. In comes a throw, dangerous. But Karna fails to collect the throw from the fielder. At the same time, Shakir has been outstanding between the wicket. He is a sprinter as far as the running between the wicket is concerned. Have a look at it. Immediately he played that sweep shot. He just realizing there could be a couple of runs if he run well. And he completed 2 valuable runs. In fact, even Karna will go in to gather the ball. I think no question of run out, because Shakir already made his home. The scoreboard now moves on to 40 on the board. 40 for the loss of 2 wicket. Very good partnership is building up between Shakir and Harris. Both are playing a sensible knock here, sensible cricket here. They know that this is under the floodlight. It's not an easy condition to bat on, and each and every run they will going to get here on outs, which is definitely going to be a very good runs for them team. And it's a 6th over is in progress, and Fayaz will go into continue. This time coming down the track, using his feet, lovely piece of fielding. The Goryang boys been outstanding in the outfield. After that, Prajwal stopping certain boundary in the previous deliveries. Now is the time for the jersey number 9, has absolutely got a fantastic work in the deep long off region. What could be a certain boundary? He stopped a couple of runs for his team. It's 42 for the loss of 2 wicket. Fayaz to Shakir, lofted handsomely, and he will going to get the distance. What a fantastic struck! Absolutely glorious. It's absolutely glorious. Have a look at that one in a replay. It's not so easy in underarm cricket. Using his feet, coming down the track, lofted that one right from the middle of the bat, and ball is just hitting the advertisement board. Absolutely glorious. This is a really enterprising cricketing stroke came from the bat of Shakir.
And scoreboard jumps into 48 for the loss of 2 wicket. This time Shakir is trying for the single-handed sweep shot. They're coming back for the second. It's going to be outstanding. It's going to be outstanding. It never looks like it's a two. The batters are running between the wicket. It looks like the two deers are running between the wicket. Outstanding running between the wicket. 2 more runs added total. It's 50 for the loss of 2 wicket. 50 comes off here for Torpedoes Kana. Here is announcement for Shakir. If he hit another 6 here in this last over, he will going to get 500 rupees, which is announced by SBR Grand Scheme Konaje. And the announcement only for Shakir. I think he is a fan of Shakir, and certainly wanted his favorite batsman have to 6 one more, and he will going to get 500 rupees. Some proprietor of SBR Scheme Konaje. So lot of fans, lot of supporters. Everyone has got their own favorite players, and that's why you can see the number of crowds here enjoying the game of cricket. Not only they got their own their favorite the players, but they got some favorite teams, and that's why we are witnessing such a fantastic jam-packed stadium. Absolutely electrifying atmosphere in this prestigious KFC Trophy 2024 in this central stadium here in Konaje. The 50 already came here for Torpedoes Kana. Suddenly after this, every run going to be a bonus for them. And Fayaz will go into continue, and he will go into ball the last over of the innings of Torpedoes Kana. The batter in front of him is Shakir. Little correction. Harris, this time I wanted to go for the single. This time it's going to be a chance. Umpire Pradeep Kottari will go into refer for the third umpire. Just so I want to see it in the replay. Fayaz ball is a little bit outside the line of off time, and the batsman Harris wanted to go for the reverse sweep. That time, wicket switch is fallen, but umpire had to see, because if it is, yes, batsman is reached, it is safe. If it is not safe, I think umpire have to see that 2 wickets is in a position, and base series also is in position. And as for the rules and regulation of cricket is concerned, I think that is enough to get the wicket. But question raising here is that whether the Shakir is made his home or not, and umpire Fayaz will going to see whether the batsman is safe or not. Shakir, his body language looks like he is safe, but his body language is not good enough here. But it's time to see that technicians of team King Sports, how well they're going to provide the angles, and not out which is called from the third umpire, and that's why Shakir is very, very confident that he is safe and no damage done. So Fayaz will going to continue from the far end. Shakir is on strike. He's batting on 22. Well made 22 in just 12 deliveries. After a long time seeing him, such a fantastic knock he playing. What a fantastic switch it this time. Couldn't manage to get that one, get past that one down to backward point region. The backward point region fielder just a little bit going back, fields the ball, and ample time for Shakir to complete the single. Just for talking about the Shakir, of course, in this particular season, absolutely is not really having a good time from the bat, but in this particular match he's back into form. Again, no ball call by umpire. My goodness, Karna, what is doing there? He's flying the stumps. This shows that frustration. Umpire referring for the third umpire. It's not a sign of frustration, I want to say, because as per the rules and regulation of run-out is concerned, if it is a base is not in the place, they need to uproot the stumps from the ground level. They need to uproot the stumps from the ground level. That's what Karna is doing this, and umpire will going to see again. Lot of hard work is given for Fayaz as a third umpire is asking for the run-out. It's just a question about the crossing, I think so.
Yes, and as for the rules and regulation, the batsman who is very close to that stumps which is made uprooted, that batsman might be out. That's what umpire have to see. As for the rules and regulation, the batsman which is very close to that stump run out which is taken place, and that batsman might be out. Harris is the batsman, need to be, yes, out. And Harris, the batter, is definitely going to be out here. As for the rules and regulation, white cap whereby Harris, that is the batsman, is going to be out. No ball which is already called by umpire. So it's a for the run out which is there taken place, that run out which is taken place, so that the batter Harris definitely going to be out here. The new batter coming to the middle, Sinan. So 4 balls remaining from the far end. Fayaz. Balls beautifully bowled. I think it's got, no, looks like just an excitement rather than the confidence here. Ball is very close to the stumps. The bails are off, but not from the ball. But I think Karna has got a little bit, has got a hand out to the stumps. That's why the bails are off, not from the ball. And the scoreboard remains on 53 for the loss of 3 wicket. 53 for the loss of 3 wicket. And Shakir will go in to take a strike. Fayaz from the far end. Right arm over the gate, coming down the track, using his feet, driven down to mid-wicket region, they're coming back for the second, and they will go to complete that quite easily in the end. Excellent running bit in the wicket. Today we are witnessing some outstanding running bit in the wicket. Shakir, after that, the dismissal of Harris, Sinan joining him, and both the batters are running very well between the wicket. Scoreboard 56 for the loss of 3 wicket. And again the Fayaz from the far end. Right arm over the wicket to the right-hander batsman Shakir is batting on 25, well made 25. Again wanted to play that reverse sweep, but this time they will going to get only single, and with that single scoreboard numbers on to 57 for the loss of 3 wicket in the over number. Last is in progress and last delivery will going to start. So last time in this over, Fayaz to Sinan. Right arm over the wicket, this time improvisation, not quite able to get past that fielder, and ball went straight to the hands of the fielder down at short bucket point region. That's it, and Torpedoes Khana, the captain, must be pleased with this performance of the batters of Torpedoes Khana, especially the Shakir. After a long time, he is back in his natural form. And this very important match against Goryang Boys scored 26 valuable runs in just 16 deliveries, and it's been outstanding performance from him. And the good innings which is of Shakir takes a team total of Torpedoes Khana into comfortable 58, and is at a target of 59 to win the match for Goryang Boys. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು.
So thank you very much, and one more good match will go into commence. Of course, already Gori Young Boys, Torpedoes they completed their 7 hours quota. They put a massive total of 58 runs and they set a target of 59 to win the match for Gori Young Boys. And we will see how Gori Young Boys will go to get this total. And before the innings will go into start of Gori Young Boys, I would like to invite once again my close friend Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. And Gopi, once again, just like the previous match, Sneha Malamar put on 51. That becomes short. We are predicted that NM Cricket at Bangalore will going to struggle to get that run, but Taufik really changing the complexion of the match by hitting some big shot, because Taufik is a man in form for NM Cricket Bangalore. And similarly, coming to this match, Gori Young Boys suddenly under pressure, because another 59 runs they need to get from 7 overs. Just so I wanted to say that Gori Young Boys, if they wanted to win the match, just like what Taufik is played for NM Cricketers Bangalore, here is one batsman for Gori Young Boys. He's a man in form. It's none other than Prajwal. He's got a fantastic season from the bat, and certainly, Gori Young Boys just looking towards him to get one more very good innings, because he's a man in form and he's contributed a lot from his bat in the last 3-4 tournaments from the bat. And we will see how well Prajwal will going to get this beginning. How will going to get the start here, and first 2 overs certainly is going to be very crucial. Previous match already announced Taufik of NM Cricketers Bangalore. This is the second match in Bangalore full. Yet to become man of the match, because match is not yet over. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त पिछले मैच में तौफीक की बेहतर बल्लेबाजी की बदौलत इस वक्त यहाँ पर उन्होंने एनएम मैंगलोर ने विजय दर्ज किया था, और यहाँ पर एग्जैक्टली द सेम थिंग्स हैपन. शाकिर batted very well, scored 20 runs in 14 deliveries, and now it's going to be a very testing time for the batsmen of Gori Young Boys, that how they will chase the huge competitive target of 59 in 7 overs. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त 59 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का, तो निस्संदेह गोरी यंग बॉयज को इस वक्त चाहिए एक बेहतरीन आरंभिक शुरुआत, और देखते हैं उनके सलामी बल्लेबाज गोरी यंग बॉयज के इस वक्त उन्हें एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर दे पाते हैं या नहीं. लेकिन अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप उन्हें इस वक्त बल्लेबाजी करनी है, और बल्लेबाजी करनी है तो एक विशेष रणनीति डिफरेंट टैक्टिक के साथ गेंदबाजी करनी है और बल्लेबाजी करनी है. जहाँ तक बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, प्रज्वल इनफॉर्म बैट्समैन है इस ऋतु में गोरी यंग बॉयज की ओर से, और उनका बल्ला, उनका बैट इस वक्त चलना जरूरी है इस मैच में, अगर गोरी यंग बॉयज को 59 रनों के स्पर्धात्मक लक्ष्य तक पहुंचना है. तो देखते हैं सतीश क्या होता है यहाँ पर. जहां तक का सवाल है दोनों आरंभिक बल्लेबाज का, तो इस वक्त प्रज्वल और रियाज, और जहां तक रियाज का भी प्रदर्शन इस ऋतु में, इस सीजन में काफी बेहतर रहा है, और ये दोनों बल्लेबाज अगर एक बेहतर शुरुआत गोरी यंग बॉयज को देते हैं तो गोरी यंग बॉयज अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो सकता है. और यहाँ पर प्रज्वल को 500 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है क्रिकेट के सबसे बड़े फैन नंदन कुलशेखर द्वारा. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ. ಹಾಗೂ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So back to this game, 59
the target and the rings now going to start. रियाज और इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रियाज के लिए डिफ्लेक्ट कर दिया। इस वक्त फाइन गेंद निकलती हुई अपने पैर के जरिए गेंद को रोका गया इम्तियाज द्वारा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो निस्संदेह यहाँ पर जहां तक सवाल है गोरी अंगबाज के मंजिल की ओर बढ़ने का, तो इस वक्त रियाज और प्रज्वल की बेहतरीन शुरुआत की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है और गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं शाकिर और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर और इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा रात के 11:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी मैदान दर्शकों से खचाखच यहाँ पर भर चुका है। एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, रन से नहीं मिलेगा। शाकिर तेजी के साथ काफी जोरदार अपील उन्होंने की इस वक्त, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं और आखिरकार अपने हताश मनोभावना के साथ अपने सिर पर अपने हाथ उन्होंने धर लिए हैं और यहाँ पर शायद गेंद लाइन के कुछ बाहर टिप्पा खाई होगी, तो इस वजह से अंपायर ने इसे नॉट आउट घोषित किया और यहाँ पर बल्लेबाज बाल बच चुके हैं प्रज्वल। तो प्रज्वल इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार और रियाज माफ कीजिए सामना करने के लिए तैयार। बॉल्ड जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट हिज मिडल स्टंप। तो इस वक्त ब्लाइंड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे, ऐसा कहना पड़ेगा। He's got a big gap between his batted leg and the ball passed in that gap and stuck to his middle of stump. But that is the wicket number 1 and Riaz departs and Gori Agboas are now 2 for 1. तो जहां तक सवाल है रियाज का विकेट का पतन कुछ हद तक ड्रॉबैक यहां पर साबित हो सकता है, क्योंकि रियाज की उपस्थिति बेहद जरूरी थी। एक अरसे से रियाज गोरी अंगबाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं और यहां पर उनका विकेट गिरना निस्संदेह कुछ हद के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है गोरी अंगबाज के लिए और उनका स्थान ग्रहण करने के लिए नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए बल्लेबाज नौफल और एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद का बल्लेबाज का, तो नौफल इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शाकिर की गेंदों का और शाकिर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी और शॉर्ट फ्रंट लेग फील्डर अश्विन को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है। शॉर्ट थर्ड मैन पर बिल्कुल सीधे इस वक्त इम्तियाज खड़े हुए 20 गज के दायरे के अंदर शाकिर की गेंद स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, इम्तियाज रोकने में सफल। गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर इस वक्त हो चुकी है और यहां पर अंपायर का इशारा इस वक्त आता हुआ 4 रनों का। Delicately steered it away, just wide of Imtiaz at short third man, and he's got that one fine, and because of that he's got a boundary for that stroke। और इस चौके के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर। हालांकि रियाज का विकेट जरूर गिर चुका है, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नौफल और प्रज्वल जो क्रीज पर मौजूद है, अगर एक बेहतर साझेदारी, एक तेज साझेदारी यहाँ पर निभाते हैं तो गोरी अंगबाज के लिए यहाँ पर गोरी अंगबाज मंजिल की ओर, अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो सकता है। तो प्रज्वल इस वक्त नौफल सामना करते हुए लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त बोलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। शॉर्ट फ्रंट लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा और इस बीच वाइड का इशारा और लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 1+1 एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर और शाकिर फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ट्राई करना चाहा, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, रन से एक बार फिर से नहीं मिलेंगे। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर और प्रज्वल और नौफल क्रीज पर अपने कदम जमाने की पूरी कोशिश इस वक्त करते हुए और शाकिर अगली गेंद, ये गेंद बेहतरीन गेंद थी इस वक्त, फैंटास्टिक डिलीवरी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 8 रन बिना किसी नुकसान के, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर गोरी अंगबाज मिक्स स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त कर चुका है। It's 8 for the loss of 1 wicket after completion of first over scored by Gori Agboas. And let's straight away coming back to the equation. 59 minus 8, that means 51 runs. Now they have to score for victory in remaining 6 overs with the required run rate of exactly 8.50 runs per over. 8.5 exactly the required run rate for them. 36 गेंदे 51 रन चाहिए और इस बीच कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी पर उतरते हुए शरण, एक और प्रमुख गेंदबाज टोर्पेडोस काना की ओर से और
इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार नौफल। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ निस्संदेह यहाँ पर गोरी यंग बॉयज को चाहिए एक लंबी साझेदारी अगर उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो पुरुष खाना इस वक्त उनके पास सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है। अगर उनके गेंदबाज अपने योग्यता के अनुसार अगर गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो बल्लेबाजों पर प्राबल्य स्थापित कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले ओवर्स में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और गेंदबाज इस वक्त शरण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट फील्डिंग का मुआयना करने के बाद पहली गेंद लेकर नौफल के लिए तैयार। और नौफल इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को उछाला नौफल ने और करनी भी चाहिए ऐसी कोशिश इस वक्त उन्हें क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त 8.5 का है। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड फर्मली एंड हिट दैट वन इनटू द लॉन्ग ऑन फेंस फॉर बाउंड्री। फैंटास्टिक स्ट्राइक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और अपनी पहली गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद गेंदबाज शरण के ऊपर कुछ हद तक दबाव इस वक्त तो महसूस करते हुए और इस वक्त तैयार फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक चलती हुई और शरण अपने छोटे रनअप के जरिए अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौफल इस वक्त सामना करते हुए और शरण दाहिने हाथ ओवर द विकेट नौफल के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ और एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। इससे पहले कि फॉलो थ्रू में शरण अपनी बाईं ओर जाकर जब तक गेंद को फील करे और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट in the over number second in progress 46 more runs now they have to score for victory in remaining 34 deliveries। और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शरण ने इस वक्त प्रज्वल के लिए गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर फील्डर अकरम गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। प्रज्वल की पारी समाप्त। इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहता गेंद को उछाला जरूर लेकिन प्लेसमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग और इस बार गेंद सीधे पहुंची लॉन्ग ऑफ फील्डर अकरम शायद वहां पर खड़े हुए थे उनके हाथों में और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। गेंद देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। स्क्वायर ऑफ द विकेट कुछ ज्यादा नहीं लेकिन गेंद इस वक्त खाली जगह पर नहीं गई फील्डर वहां पर मौजूद थे और अपने आगे की ओर आते हुए गेंद को उन्होंने बाखूबी लपका और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका है। प्रज्वल का बिग विकेट इस वक्त गिर चुका है क्योंकि प्रज्वल इनफॉर्म बल्लेबाज हैं इस ऋतु के और उनका विकेट का गिरना गोरी यंग बॉयज के लिए काफी बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक यहां पर साबित हो सकता है। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट दे आर स्ट्रगलिंग नाउ गोरी यंग बॉयज इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ हर्षा पड्डयूर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज शरण तो इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज हर्षा पड्डयूर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शरण की गेंदों को और शरण दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतरीन गेंद एंड ही जस्ट गॉट द लीड ऑफ द बैट्समैन इन हिज वेरी फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट बॉल डिसमिसल गोल्डन टक डिसमिसल फॉर हर्षा पड्डयूर। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी गेंद को उछालना चाहा था चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और आखिरकार इस वक्त गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई। देखिए किस तरीके से हुआ था। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द लीड ऑफ द बैट्समैन और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट दे आर नाउ स्ट्रगलिंग। तो
इस वक्त स्कोर 13 रनों पर रुक चुका, 3 विकेट के नुकसान पर। शरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, निस्संदेह रियली टेस्टिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ गोरियांग बॉयज एंड एट दिस सिचुएशन द बॉलर्स ऑफ टॉर्पेडोज काना आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। और निस्संदेह इस वक्त बंधनों को तोड़ना है तो गोरियांग बॉयज को इस वक्त एक विस्फोटक बल्लेबाजी करनी होगी। और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की बल्लेबाजी अपनाते हैं गोरियांग बॉयज इस वक्त गेंदबाजों के खिलाफ। टॉर्पेडोज काना के नए बल्लेबाज करना, एक और प्रमुख बल्लेबाज, काफी अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शरण न करना के लिए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार करना के लिए गेंद को मोड़ दिया। इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची मिड विकेट पर, लेकिन जब तक वहां पर गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम, निस्संदेह दर्शक इस मैदान पर भर चुके और इस मैदान की शोभा को और बढ़ाते हुए और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट KFC ट्रॉफी 2024-2024 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए इस केंद्र मैदान कोनाजे में। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को स्वीप किया खूबसूरती के साथ। गेंद जाती है इस वक्त मिड विकेट फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और आखिरकार बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। टॉप एज पर गेंद टकराई थी, स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहा था, गेंद हवा में थी। डीप मिड विकेट के फील्डर ने काफी जीतोड़ कोशिश की, देखिए किस तरीके से कोशिश की थी, 100% एफर्ट, लेकिन अंतिम कार गेंद तक समय पहुंच नहीं पाए और गेंद उनके आगे टिप्पा खाती हुई और इसी के साथ बल्लेबाज यहां पर बचते हुए 2 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की मुकम्मल समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 16 on the board, 3 wickets lost, 59 the target. And now let's straight away coming back to the equation. 59 minus 16, that means 43 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs. That means in remaining 30 deliveries with a required run rate of exactly 8.60 runs per over. 16 the score, 43 needed, 30 balls remaining, 8.60 the required run rate. Still they got 7 wickets kept intact. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार करना। निस्संदेह चंद चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत इस वक्त गोरियांग बॉयज के बल्लेबाजों को यहां पर कम बैक करने के लिए। शाकिर अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार, पहले ओवर में 8 रन उन्होंने प्रदान किए थे और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और उसको रुक चुका है 16 रनों पर 1 विकेट के 3 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और शकीर अगली गेंद, ये गेंद टॉप है लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लगा, डीप फाइन लेके बीच गेंद पहुंचते हुए 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 17 for the loss of 3 wickets. Still have a long way to go. In fact, 42 more runs now they have to score for victory in remaining 28 deliveries. और इस बीच शाकिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नौफल के लिए गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, शॉट पर फील्डर चूके करना, रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन इस बीच तेजी के साथ इस वक्त पूर्ण करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 18 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Still the runs coming in singles now for the batsmen of Korea boys. और चौके और छक्के लगाने की कोशिश जरूर इस वक्त कर रहे हैं बल्लेबाज गोरियांग बॉयज के, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। अगली गेंद बेहतर गेंद थी, अंदर की ओर आती है, परफेक्ट ऑफ कटर, एक्सपोज स्टंप्स एक्सपोज करते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहता, खेल नहीं पाए, गेंद उनके पैरों पर टकराई और इस बीच 1 रन का इजाफा लेग बाई के रूप में। और इस लेग बाई के रन के साथ स्कोर इस मैच में गोरियांग बॉयज को ला सकते हैं। कोशिश इस वक्त जारी है गोरियांग बॉयज के बल्लेबाजों द्वारा, मौका जरूर है इस वक्त उन्हें बाउंस बैक करने का। इस ओवर में अंतिम बार शाकिर, ये गेंद टॉप एज लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप फाइन लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका है। 5 runs came from this over and a pretty good one from Shakir. 3 overs gone, 21 on the board, 3 wickets lost,
38 to get in remaining 24 balls and the required run rate is now gone up to exactly 9.5 runs per over. 38 रन 24 गेंदे 9.5 रन प्रति ओवर के औसत से बनाना इस वक्त गोरी यंग बॉयज को 7 विकेट सुरक्षित. देखते हैं बचे हुए 4 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है. तो इससे पहले कि चौथा ओवर आरंभ हो, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ओवर, आगे का को देखभाल सुनाने के लिए अब अंग्रेजी में माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त सतीश को. तो सतीश, द फर्स्ट 3 overs belongs to the bowlers of Torpedoes Khana, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है. 38 to get in remaining 24 balls और बाउंस बैक करने के लिए इस वक्त चौके और छक्के यहाँ पर लगाने होंगे. कुछ चौके और छक्के यहाँ पर गोरी यंग बॉयज को कम बैक करने के लिए, लेकिन करारी स्ट्रोक्स खेलने के लिए इस वक्त अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप उन्हें जीतोड़ मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी. और बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है माइक्रोफोन पर. आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू. Well, thank you very much, Gopi. Absolutely, you are right that the first 3 overs belongs to Torpedoes Khana, and they got 3 wickets, and they conceded only 21 runs. And you rightly said that Gori Young Boys still they got opportunity, and for that I think they need to bat sensibly. And you were just talking about the strategy, of course, along with some big shot, but some sensible batting is required, just like what Shakir and Harris played for Torpedoes Khana. Improvisation there from Karna down to backward point region for an easy single. With that single, score number was down to 22 for the loss of 3 wicket. 59 is going to be a target. Long way to go for Gori Young Boys. Need to get partnership, just the kind of partnership which is played by Shakir and Aris for Torpedoes Khana. The similar kind of partnership which is required for team Gori Young Boys if they wanted to win the match. Of course, after losing the informed batsman Prajwal very cheaply, and all the responsibility now for these two batters. A very experienced campaigner of Gori Young Boys, Naufal as well as Karna. Karna, and so far he's played a little bit, so far he played very watchful cricket for his watchful batting for his team. You know exactly, Naufal is there in the other end, and he can take some initiative. And here is the bowler Harris, right arm round the wicket. Down Naufal driven beautifully down to deep extra coverage, but protection is given for that cricketing stroke. And Akram, the one most experienced campaigner for the side of Torpedoes Khana, he will going to collect the ball down at extra cover, and he got a single for that. So SBR Group announcing the 500 rupees for 6 any batsman out of these 2, and they will going to get 500 rupees. And fantastically bowled, outstanding delivery there from the bowler, and that was just pitching outside the line of leg stump, just passing between bat and pad. And Karna wanted to play his favorite inside-out cricketing stroke, but he couldn't manage to make a contact. Harris again, right arm over the wicket, lovely delivery, good thinking there from the bowler's point of view. Again, seeing that batsman moving away from the stump to play that inside-out cricketing stroke, and Harris doing the right job, and he's bowling just away from the bat of the batter. After that fantastic knock from him from the bat, and now he is contributing from the ball. And it's definitely going to be a very good performance from Harris so far from his bowling. But now for just having a word with his partner Karna, and maybe he's suggesting that not to waste the deliveries, because it's not like that you need to deal with the big shots like boundaries and sixes. Some batting like what Shakir and Harris has played, the placing the ball here and there, and getting a single and 2, converting a single into 2, 2 into 3s, because it's a huge ground, isn't it? You can get some placement, you can get some couple of runs, 3 runs quite easily. So that's what maybe the Naufal is suggesting Karna to not waste the deliveries, just convert each and every ball to the runs. Then this time Naufal, correction, Karna got a single. There is slight a bit of fumble from the fielder. They will going to grab these opportunities. Mubir, the fielder, there will going to get some fireworks from the teammates because of that fumble, and the couple of runs which is conceded. It's 25 for the loss of 3 wicket. It's quite understandable. It's not so easy, isn't it? You are performing against a fantastic crowd. Absolutely, it's a jam-packed stadium here in Konaje, and enjoying the game of cricket here. And the bowler Harris continues, right arm round the wicket balls. This time Karna tries it, not quite getting hold of that and properly. He's a little bit struggling, Karna, to get the timing behind the stroke, and he managed to complete the single. A tidy over which is comes in hand here from Harris.
Absolutely the kind of over which is required for Team Torpedoes Khana, and Harris once again leading from the front, getting that very good over. Now 4 overs completed, chasing a total score of 59 to win this match. Still Goryang boys struggling to get that required run rate. That's 26 for the loss of 3 wickets, and they need to get another 33 more runs to win this match in remaining 3 overs. So required run rate exactly 11 runs per over. 11 runs per over is the required run rate. This might be the little bit big ask, but not impossible in cricket. Cricket is game of glorious uncertainty. 1 or 2 big shot will going to change the complexion of the match, just like what witnessed in the Sneh Malamar versus Team NM Cricketers Mangalore. One things are going very well for Sneh Malamara. Taufik just hitting 2 sixes and changing the complexion of this game. So such kind of comeback which is required badly for Goryang boys if they wanted to win this match. Wait and see, having Naufal, having Karna, how well they are going to come back. And Karna knowing to be one of the match finisher. There's so many times when team is struggling and whenever the team is required some big shot, of course he's got an example of putting some good innings for his team. And wait and see, Karna will going to face first delivery of the over number 5. Delicately plays it down to a deep fine leg region for a single. Harris the fielder down at the deep fine leg will going to collect the ball, return the ball, and Naufal once again back into strike now. Naufal so far cool and calm. Not really tried for any big shot. He got 2 boundaries in the beginning, but after that he just playing a waiting game here, just waiting some bad deliveries. Right arm over the wicket. This time Naufal going for the expansive drive, not quite getting that one what he really wanted. Of course hit the ball very firmly, but fails to get placement right. Ball went straight to the hands of short mid wicket, and there is no chance at all for any run. Each and every dot ball will going to create the problem. Again the bowler right arm over the wicket. Naufal played that reverse hit. Again not really getting that from the middle of the bat. Appeal for run out. Umpire says not out. 1 more single been added total. For the next match, I request KCCR Kadri as well as young friend Surva, the captain, please be reported for the tossing ceremony. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ KCCR Kadri ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Surva ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. So one more big match will go into commence after this match between 2 very good prestigious teams from South Kendra district, KCCR Kadri versus Young Friends Surva. So 31 runs required for the victory and remaining 15 deliveries. And Karna as well as Naufal, 2 batters are really trying hard to get that big shot, but they're not really getting a success so far. And wait and see, the bowler from the far end will going to continue. Imtiaz balls this time, ball him, clean him up. Absolutely fantastic delivery there from experienced Imtiaz. This time ball pitched in a line. Karna wanted to go against the line, across the line he wanted to swing, missed it completely. You miss high hit, bowler Imtiaz is dead, and 1 more huge wicket is back into pavilion. Have a look at that one in replay. And absolutely just getting that gap between bat and pad, and that's why he is back into pavilion. The 1 more wicket is back into pavilion of Goryang boys are really struggling against the disciplined bowling performance by the bowlers of Torpedoes Khana. Yes, Torpedoes Khana, of course they got some very good players in the side, but unfortunately in the last 3-4 tournaments they are not really able to perform as for the reputation what they got. But this tournament certainly looks like everything is going right, and they need to capitalize because the consistency in a performance is so important to get the success. This empty one again down to deep long on region, not more than a single there. There's an orthodox deep long on is there, so that the batter have to settle for the single, and with the single scope and moves on to 29 for the loss of 4 wicket. And Vaishak is a new batter, just came into middle. The good striker of the ball, and wait and see how he and Naufal will go and get that huge runs which is in front of them, and another 30 more runs required for the victory in remaining 13 deliveries. Naufal again, appeal for leg before wicket. Umpire says it's not out, and Harif the umpire as not having any evidence of giving that LBW, and just a single in the form of
No signal came from umpire. It's from the bat, and the scoreboard is it's leg by. Sorry for that. Leg by signal by umpire, and scoreboard numbers on to 30. On the board for the loss of 4 wicket, and last 2 overs remaining. 29 more runs required for the victory. Asking run this is climbing up to 14.5 runs per over. This is not a good sign, because you need to decrease your required run rate each and every over. But here is for Gori Young Boys, they're increasing that required run rate because of the bowlers of Torpedoes Khana not giving any opportunity for the batters of Gori Young Boys to settle for any kind of a big shot. Without having a 6, it's very difficult for them to win this match. Sharan brought into attack, got a very good successful first over. He produced a vital breakthrough for his team, bowled some great overs, and he will go into continue. Got a 2 valuable wickets by conceding just 8 runs. Yes, the Varun is our scorer, doing a fantastic job in our scoreboard, in our commentary box as a scorer, and as a statistician for this cricket tournament. Again, right arm over the wicket, last over. Driven up a state, down to deep long off, but not more than a single. Harris, the fielder there in the deep long off region, will go into cut it off after 1 bounce he collected, and with that single score, but moves on to 31 for the loss of 4 wicket. Very interesting to see that Sharan is not impressed with the effort of the fielder at deep long off. He's just thinking about that might be opportunities created for the catch. This time again the ball is going outside the line of leg stump and going to be a wide, with that wide scope and Namuzan to now. Sharan just questioning that decision of umpire. No, taking back. Very interesting. Sharan wanted to ask for the review, but immediately from the wicketkeeper behind the stump not to ask for the review. That is certain wide. 32 for the loss of 4 wicket. Sharan, right arm over the wicket, bows outside the line of off stump. Going to be looks like it's going to be one more delivery, which is well within the reach of the batter, and 1 run scored, and with that score moves on to 33 for the loss of 4 wicket. Things are going worse and worse here for Gori Young Boys, unless and until if they fail to get any big shots here, then very difficult for them to back in the game. Naufal is on strike, batting in the middle for a long time. What a fantastic work done by the wicketkeeper Ashraf. Absolutely, he's got a magnet in his hand, isn't it? Sometimes looks like that, the way that having a stumping. Have a look at that one. How quickly he made it stumping, that one. Just in a fraction of a second, just in a blink of eyes, he completed that job. Just coming down to rack, have a look at the wicketkeeper. Absolutely great work. And the huge wicket is back in the pavilion. Naufal, I think, is going to be last hope of getting some big shots for Gori Young Boys. Is back in the pavilion. Just have a look at the replay. Of course, in replay you are seeing that slow motion ball which is coming very slowly, but not like that in live. Ball coming in such a pace. It's not so easy for the wicketkeeper to gather the ball, especially under floodlight. They need to have some kind of good technique of gathering the ball. And Ashraf did a great job behind the stump. Now, deliveries which is remaining 8. 9 balls remaining, and they need to get 26 runs on the board. The new batter in is Abhilash, very talented, technically very sound batsman. But here is more than the technique here. I think the Gori Young Boys needed 1 or 2 big shots in a quick times. Otherwise, it's going to be very difficult for them to win this match. But a very disciplined bowling performance so far from Torpedoes Khana. Sharan has been outstanding in the beginning. Shakir bowled a very good first over, even though he bowled some wides, but he managed to get a huge wicket. And then Sharan bowled a very good second over, that is a power play over. Shakir again bowled the third over very well. And Harris also bowled a fantastic 1 over. Just a 5 runs came from that over. That's why Gori Young Boys struggling to get the runs against the disciplined bowling performance of the bowler. Again, that ball is going to be inside edge of the bat. 1 more single has been added to total. Special thanks to Prakash Kumpala
who has donated the second trophy for this prestigious cricket tournament, KFC Trophy 2024. We are grateful and thankful for our donors. Again, driven that one, not quite getting hold of that one properly, but good enough for him to get the single there. But these singles will not going to help the team Gori Young Boys, but certainly it's going to be a difficult, tough opportunity for Gori Young Boys to win this match, because 24 runs required now from 7 balls. Sharan bowling up for a long over. Round the wicket. Balls missed it. Wicket-keeper fumbled, but no damage done. No runs scored. One more good over which is comes in, and last over remaining. 24 runs required for the victory for Gori Young Boys. That's why I told in the previous match, when Sneha Manamar put 52 target for the team NM Cricketers Mangalore, certainly that is a winning total. But the things which went wrong when they brought Ashwin Raj from the commentary box and Taufik hitting that 2 massive sixes, changing the complexion of the game. So here we can see that big difference here. 59 which is scored by 58 which is scored by Tapados Khana, and that will become a huge total for Gori Young Boys, even though they got some very good batters, informed batters, but couldn't manage to get that huge total. But match is not yet over. 24 runs which is required for the victory from last over, and last opportunity for Gori Young Boys to get that 24 runs. So still it's 500 rupees which is in the pocket of the owner of SBR Grand Scheme Konaje. He's just waiting for that. Who will going to take that 500 rupees? And yes, last opportunity as well for the batters of team Gori Young Boys. So next match, one more big match is coming up, and 2 captains are waiting here, and captain of Young Friends Urva and destructive left-hand batsman Arshad Paddayuru. Arshad versus Ravi Paddayuru, the next competition. The 2 captains out here in front of a commentary box for the tossing ceremony. It's a battle between Ravi versus Arshad, the lefty versus righty. So single run, 23 which is required from 5 balls, and the experienced campaigner Abhilash is on strike. Last opportunity for Gori Young Boys, and big wide, Spectra wide, and they will going for the run there, and couple of runs in that wide, 2 runs to be added to total. And scoreboard now moves on to 38 for the loss of 5 wicket. 21 more required from 5 balls. Bowler Mubir just feeling the pressure. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. This time bowled him, cleaned him up. So one more wicket is back into pavilion here. All we can see that Gori Young Boys really struggled against disciplined bowling performance. Mubir just held his nerve after that 2 wide deliveries. He managed to get 1 good delivery right on the middle stump. Batsman tried to hit the ball across the line of the delivery. Pays the penalty for that, and scoreboard remains on 38 for the loss of 6 wickets. And a disappointment performance as far as the Gori Young Boys. They came into this tournament as one of the favorite team, and but the way that Shakir and Harris build the innings in the middle of the stage, it's been outstanding. Running between the wicket has been one of the highlight of that partnership between these two. They run very, very well between the wicket. Again, they wanted to play that one across the line of the delivery. They managed to get the single that they wanted to get for coming back for the second. Shakir knows that nothing much bother about that single and 2, which will not going to help the team Gori Young Boys to win this match. Now, scoreboard is 38. 21 more runs required for the victory.
The sense of that one. Wow, white call by umpire. Again, 1+1 to be added to total. Mubir really struggling. I don't know why he is feeling that much of pressure. I still remember he bowled that last over in the match at Nazar Champions Trophy at Krishnapura Paradise Cricket Ground when it is a 9 required from 2 balls and is a little bit felt little bit under pressure. Conceded 2 boundaries. After that, I think the level of confidence not good enough. This time again plays it down to extra cover region for a single. The winner single scope and moves on to 42 for the loss of 6 wicket. Now last delivery remaining, just the formalities in this game. 17 runs required for the victory. That's it. Looks like it's a comprehensive victory for the Torpedoes Khana. They defeated little bit correction, 1 ball remaining in this over. Slight bit of confusion. They need to wait for 1 ball for the celebration for the victory for Torpedoes Khana. And last ball remaining. 17 runs required for the victory. Mubir will go into ball from the far end. Oh, what a shot! It's too late. My goodness, it's too late. Maybe he needed to promote it up in the order, and it's too late. Seeing that kind of beginning stroke coming from the blade of Samraz, I think absolutely is reducing the distance of that runs with a fantastic cricketing stroke. And I think young friends who after winning the toss selected to the field first, and now here is some cash prize which is announced for Shakir for his wonderful innings. He scored a 25 valuable runs unbeaten, and for that innings Salim Dubai is announced 3,000 rupees, that is for Shakir for his well-made 26 runs. And because he's got that run after a long time, the man a little bit out of the form, but he's came back to his natural form in this particular match, and he will going to get 3,000 rupees from Salim Dubai. Shakir of team of Torpedoes Khana, who just as a man of the match for his fantastic all-round performance, scored valuable 25 runs and he bowled fantastic 2 overs. Shakir Torpedoes Khana ತಂಡದ ಶಾಕೀರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ 3,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಸಲೀಂ ದುಬೈ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶಾಕೀರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So now it's a time to change in commentary box for one more big match. KCCR Kadri versus Young Friends Suruva. After winning the toss, captain of Young Friends Suruva, they elected to field first so that KCCR Kadri will go into the bat first here. And for that
First of all, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Indeed, thank you. ಅಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ. ನೂತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೂತನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 31/3 ಹಾಗೂ 1/4 ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 30/3/2024 ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. 8 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹22,222 ನಗದು ಹಾಗೂ ನೂತನ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಗದು ₹12,222 ಹಾಗೂ ನೂತನ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ 31/3/2024 ಹಾಗೂ 1/4/2024, 31 ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ 1 ಏಪ್ರಿಲ್ ರಂದು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 16 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಗದು 45,555 ಹಾಗೂ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಗದು 25,555 ಹಾಗೂ ನೂತನ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ, ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ 45 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್. ಸೊ this is the Nutan Champions Trophy, which will be held at 33 2024, 31 2024 and 14 2024. Masters category will held at 33 2024 and prestigious teams tournament, top seeded teams tournament will be held on 31 2024 and 14 2024. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ will contact the organizers of Nutan Champions Trophy 2024. So this is the announcement of a prestigious cricket tournament, Nutan Champions Trophy 2024. And now once again straight away coming back to this prestigious cricket tournament, KFC Trophy 2024 is going to start. The top seeded teams match is now going to start between KCCR Kadri versus Young Friends Surwa. So news is here from the center that the captain of Young Friends Surwa, after won the toss, he elected to field first, and because of that the openers of KCCR Kadri at the crease are Hrithik and Ravi Padayur. In fact, the bowler is Chetan, starts the fresh proceedings, and the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर चेतन इस वक्त तैयार और रवि पडयूर इस वक्त सामना करते हुए और काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं रवि पडयूर, और उनकी पारी का पहली गेंद का इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार चेतन। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रवि के लिए गेंद को ड्राइव करते हैं इस वक्त खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। केसीसीआर कतरी के लिए 1 रन बिना किसी नुकसान के। रात के 12:35 यहाँ पर बच चुके हैं, लेकिन दर्शकों से मैदान इस वक्त खचाखच इस वक्त भर चुका है। एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम में, तो ये बात ये दर्शाता है कि मंगलूर और आसपास के इलाकों में अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता रखता है। और इस वक्त कोनाजे का ये केंद्र मैदान पर एक बेहतरीन और प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई इस देर रात में भी अंडर फ्रंट लाइट्स में। और चेतन इस भी तैयार, ये गेंद ऋतिक के लिए ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में, ये देखते हुए कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है। और वाइट का इशारा अंपायर कर वाइट के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो अंपायर ने इस वक्त इशारा किया है तृतीय अंपायर की ओर कि परिशीलन करे कि यह वाइड है या फिर नहीं। So it's a right delivery and no run added to the total in the face of extras. और सही गेंद इस वक्त घोषित और डॉट गेंद इस वक्त उनके खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर इस वक्त सिर्फ 1 रन पर रुक चुका है केसीसीआर कतरी का। और जहां तक सवाल है इस वक्त
अपने निर्धार को वापस लेते हुए इस वक्त अंपायर और चेतन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और दाहिने हाथ अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतिक के लिए अगली गेंद चेतन की। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए इस बार एक बार फिर से वाइड घोषित की। पिछली गेंद सही गेंद थी, इस बार फयाज ने इसे वाइड घोषित किया क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रहे थे और 1 रन का इजाफा उनके खाते में हो चुका और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और चेतन फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेला, इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। KFC ट्रॉफी 2024-2024 की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए इस केंद्र मैदान कोनाजे पर, और कई हजार दर्शक यहाँ पर इस मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन करना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ चेतन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और इस बीच स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज ऋतिक जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार चेतन की गेंद का। और जो मिड विकेट पर फील्डर खड़े हुए थे संतोष, उन्हें इस वक्त कुछ हद तक सीधे इस वक्त तैनात किया गया है, स्ट्राइटर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, और मिड ऑन पर। और इस बीच चेतन की ओर की अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, चेतन इस बार संतोष को बीट करती हुई गेंद निकल गई लंगोन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मौका वहां पर जरूर था संतोष को गेंद को रोकने का, थोड़ा और झुकते हैं तो शायद गेंद को रोक सकते थे, लेकिन अंतिम क्षण में ज्यादा वो झुके नहीं और गेंद उनको वंचित करते हुए सीधे निकल गई। इस वक्त देखिए किस तरीके से गेंद को ड्राइव किया था और अंतिम क्षण में गेंद पर पहुंचने की जीतोड़ कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, आउट ऑफ हिज रीच, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन प्रयत्न जरूर किया था यहाँ पर संतोष ने इस गेंद को फील्ड करने का, लेकिन नाकामयाब। और चेतन की ओर की अगली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर फिर से इस बार 2 रन मिलेगा जरूर। इससे पहले कि डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को फील्ड करके विकेट कीपर के हाथों में फील्डर थ्रो करे 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका। और इन 2 रनों के साथ द फर्स्ट ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड इन KCCR Kadre innings after first over after being losing the toss and put it to bat by young friends Urwa in the top seeded match number 3 in this prestigious cricket tournament KFC Trophy 2024. Good start for KCCR Kadre. They managed to score 10 runs on the board after completion of first over, yet to lose any wicket. और जहां तक बचे हुए ओवर्स का सवाल है तो 6 ओवर इस वक्त अब उनकी पारी में बाकी, 7 overs per side to be played, 1 over gone in KCCR innings, still 6 overs left. और हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नंबर 18 की जर्सी पहने हुए गेंदबाज ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಭಾರ ಹಾಕಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದು ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದು ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. So back to this game, the bowler Disti Hassan starts a fresh proceedings और गेंदबाजी इस वक्त करेंगे ऋतिक के लिए। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर दृष्टि हसन इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 11 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। दृष्टि हसन अपनी पहली गेंद वाइड फेंक चुके और अपनी दूसरी गेंद, अपनी पहली सही गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार। और सामना इस वक्त करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज रवि सालिया नपडयोर, जो कि एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। इस बीच अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर की ओर कुछ बढ़ते हुए बातचीत कुछ करने के लिए खेले, जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है।
ಅಲ್ ಹುನೈನ್ ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ ಹುನೈನ್ and Diamond KC Road please to be reported here to make a sign in the official chart for the next match. तो बातचीत इस वक्त जारी है. खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए इस वक्त रुक चुका है और अंपायर इस वक्त कुछ इशारा करते हुए पेविलियन की ओर. और जहां तक सवाल है इस वक्त कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल अब उनकी पारी में बाकी. टॉप सीडेड टीमों के बीच आज का अंतिम मैच है यहां पर खेला जाता हुआ. यंग फ्रेंड्स उर्वा और केसीसीआर कद्री के बीच इससे पहले खेले गए 2 मैचेस में एनएम मैंगलोर और टॉर्पेडोस काना ने विजय दर्ज किया है. तो आज का तीसरा मैच इस वक्त प्रगति पर केसीसीआर कद्री और यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच. तो इस वक्त वाइड जरूर घोषित किया गया है, लेकिन इस वक्त अंपायर अपील कर रहे हैं नो बॉल के लिए. तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है. सो इट्स अ वाइड, नॉट नो बॉल, इट्स वाइड. गेंद लाइन के अंदर टिप्पा खाने के बाद निकली थी इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. और इस बीच वाइड गेंद घोषित और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के. दूसरा ओवर इस वक्त प्राप्त शुरू हो चुका है. दृष्टि हसन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. रवि सालियान पड्डयूर इस वक्त सामना करते हुए. दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दृष्टि हसन गेंदबाजी करते हुए. 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. मिड ऑन स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड बैन, पॉइंट, कवर पॉइंट और मिड ऑन. और इस बीच ओवर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा. चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए रवि सालियान और गेंद सीधे पहुंची. इस वक्त विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. और एक बेहतर गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत इस वक्त दृष्टि हसन कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज रवि सालियान पड्डयूर के लिए. और ये गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा लेकिन यहां पर बेहतर तरीके से शॉर्ट टच बैन पर रोका गया. इस बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और यहां पर बच चुके हैं बल्लेबाज. नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज ऋतिक दौड़ आए थे. अब जब तक रवि पड्डयूर पीछे की ओर उनकी ओर देखिए किस तरीके से हुआ था. गेंद पर वो राजेश ने बेहतर तरीके से रोका था शॉर्ट टच बैन पर. और रवि जब उन्होंने नजरें घुमाई तो ऋतिक उनकी ओर पहुंच चुके थे, उनके एंड पर पहुंच चुके थे. दौड़ना शुरू किया उन्होंने और आखिरकार थ्रो इससे पहले कि नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचे वो अपना विकेट यहां पर बचा चुके हैं. तो 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 12 रनों पर. और पिछले गेंद पर रवि बच चुके हैं. और जहां तक का सवाल है अगली गेंद का तो दृष्टि हसन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ऋतिक का ये गेंद इस बार दृष्टि हसन के हल्के से गेंद को पुश किया, जगह बनाते हुए गेंद को खेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर. और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के. क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश करते हुए इस वक्त अपनी टीम केसीसीआर कतरी को. और दृष्टि हसन रवि के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार टॉप एज पर गेंद टकरा चुकी है. गेंद इस वक्त हवे में लेकिन फील्डर यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे. और जब तक गेंद स्क्वायर लेग पर फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का. ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन with a slog sweep shot at the last moment, not corrected that one properly. टॉप एज पर गेंद टकराई और भाग्यशाली रहे कि गेंद इस वक्त फील्डर के आगे टिप्पा खाते हुए डीप स्क्वायर लेग पर 2 रन इस बीच बल्लेबाज रवि प्राप्त कर चुके हैं. और गेंदबाज दृष्टि हसन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ पर द विकेट. ये गेंद
इस बार रवि के लिए गेंद को उछाला लेकिन फील्डर काफी पीछे तैनात, नॉट मोर देन अ सिंगल। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 16 without loss in the over number, second in progress. Good progressing here for them. Still a ball left in this over. और दृष्टि हसन इस बार गेंदबाजी करेंगे ऋतिक के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऋतिक सामना करने के लिए तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं और मैदान पर कुछ पत्थर पर टकराने के बाद गेंद अपने रफ्तार को, अपने गति को खोकर जब तक चंद टिपों बाद फील्ड आउट पॉइंट फील्ड द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 2 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 17 on the board, yet to lose a wicket and a good start for KCCR Kadri, given by these 2 openers, Hrithik and Ravi, playing very confidently now. Still, in overall calculation, it's going to be 5 overs remaining in the innings. 5 over का खेल इस वक्त बाकी। और एक बार फिर से मैं दावत देता हूं इस वक्त अल हुनैन और डायमंड केसी रोड के सर्व सदस्यों से कि कृपया वो स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और जहां तक सवाल है मैच का, तो अगला मैच इन दोनों टीमों के बीच में यहां पर खेला जाएगा। तो तीसरा ओवर शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स की ओर से और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और सुस्तान गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑफ फील्डर थोड़े से पीछे इस वक्त जाते हुए और इस बीच मिड ऑफ फील्डर कहना पड़ेगा थोड़े से पीछे जाते हुए। और 2 ओवर के खेल के पश्चात तो फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और विकेट कीपर अरशद इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और उसके बाद इस वक्त गेंदबाज सुस्तान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज सपना करने के लिए तैयार और पहली गेंद स्वीप किया इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, गेंद पहुंची इस वक्त डीप स्क्वायर की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। डिलिकेटली प्लेड जिस अंग्रेजी में कहते हैं, खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया था खूबसूरती के साथ, इंटेलिजेंटली चतुरता के साथ इस वक्त बल्लेबाज ने और 2 रन इस बीच प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 19 रनों पर। ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 20 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद का पीछा करना चाहता, चूंकि बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रख चुका है 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर सुस्तान स्वीप किया इस वक्त, इस बार गेंद पहुंची फाइनल की दिशा में, गेंद का पीछा करता है फील्डर, दूसरे फील्डर जब तक गेंद को बैकअप कर रहे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों के ऊपर। It's 21 without loss in the over number 3 progress. Still 3 balls left in overall calculation in their innings और सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। हर गेंद के साथ फील्डिंग में तब्दीली करते हुए इस वक्त यंग फ्रेंड्स के कप्तान। और जहां तक सवाल है इस वक्त दोनों बल्लेबाजों का, तो ऋतिक और रवि इस वक्त जानते हैं एक बेहतर शुरुआत उन्हें अपने टीम को इस वक्त देनी है और उस बात के अनुसार, उस योजना के अनुसार इस वक्त एक बेहतर आरंभिक साझेदारी वो निभाते हुए। और सुस्तान फिर से एक बार तैयार, रनअप में कुछ हद तक फिसल गए थे इस वक्त और वापस अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस वक्त गेंदबाज ने गेंद को ऑन साइड पर खेला खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान जो फील्डर खड़े हुए थे बाईं ओर, उन्होंने डाइविंग जरूर लगाई गेंद को रोकने के, लेकिन ठीक तरह से गेंद को रोक नहीं पाए और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब
कुल मिलाकर 23 रनों पर 23 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सुस्तान फिर से एक बार तैयार, ये गेंद ड्राइव किया हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से सुस्तान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए, पैरों पर गेंद टकराई, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 without loss, third over has been came to an end. Still good going on here for KCCR Kadri, and still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings. 4 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। रात के 1 इस वक्त बज चुके हैं, और इस वक्त अभी भी मैदान पर लगभग दर्शक भर चुके हैं, और इस मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए 2 मैंगलोर के टॉप सीडेड टीमों के बीच इस वक्त मुकाबला जारी है, और फ्लडलाइट्स के खंबे की बत्तियां इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुके हैं। निश्चित रूप से घने अंधेरे को चीरती हुई ये बत्तियों की रोशनी इस वक्त मैदान पर गिरती हुई, और इस मैदान को और भी प्रकाश में यहाँ पर बनाते हुए, और इस फ्लडलाइट्स कि बत्ती के रोशनी के तले यहाँ पर एक बेहतरीन श्रृंखला KFC ट्रॉफी 2024-2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए, और इस बीच गेंदबाजी पर उतरते हुए दस्टी हसन जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतर फेंका था, सिर्फ 7 रन उन्होंने प्रदान किए थे, और अपनी दूसरी ओवर लेकर इस वक्त तैयार रवि पटैयोर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। स्क्वायर लेग फील्डर की इस वक्त पीछे भेज दिया गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दस्टी हसन गेंदबाजी करते हुए रवि पटैयोर के लिए अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद तैयार। ये गेंद इनसाइड एज, और इस बार जस्ट ट्रैक डाउन टू द स्टंप्स। ड्राइव करना चाहता, लगभग फुल लेंथ गेंद थी, अंतिम अक्षर में गेंद बल्ले के अति निकट टिप्पा खाते हुए, और आखिरकार ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट ट्रैक डाउन टू द स्टंप्स, और शायद यहां पर मेरे ख्याल से स्टंप्सों पर गेंद टकराई या नहीं ये देखने वाली बात है, लेकिन इस वक्त रवि सालियान के पैरों पर कुछ हद तक दर्द महसूस यहां पर करते हुए, तो इस वक्त उनका विकेट गिर चुका है, और इसी के साथ विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। मैं रिप्ले यहां पर देखना चाहूंगा असल में यहां पर क्या हुआ था। तो इस वक्त गेंद थी दृष्टि हसन की, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद पहुंची इस वक्त और टकराई थी ऑफ स्टंप पर, बिल्स डिस्टर्ब हुए थे, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है बोल्ट आउट के रूप में। रवि पटैयोर एक बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए, और 24 रनों पर पहला विकेट खो चुका है यहां पर KCCR कदरी। इट्स 24 for 1। So after the departure of Ravi Padayor, the number 3 batsman Harshit is now comes out to the middle for KCCR Kadri, और 24 रनों के आरंभिक साझेदारी के बाद ये साझेदारी यहाँ पर टूट चुके। 24 रन ओपनिंग स्टैंड हैज बीन ब्रोकन इन द फेस ऑफ रवि पटैयोर, और गेंदबाज दृष्टि हसन इस वक्त हर्षित के लिए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त टॉप एज, और इसी के साथ पहली गेंद पर यह विकेट यहाँ पर गिर चुका है हर्षित का। गेंद को ऑन साइड पर स्वीप करना चाहता लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराया, ऐसा कहना पड़ेगा द बॉलर गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट, और टॉप एज पर गेंद टकराने के बाद बिल्कुल सीधे गए, गेंद को स्वीप करना चाहते थे 2 स्क्वायर, और देखिए यहां पर किस तरीके से गेंद को खेला था, और मिड विकेट पर शॉर्ट मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में यहां पर विकेट गिर चुका है हर्षित का। 24 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। कंसेक्यूटिव विकेट लॉस फॉर KCCR Kadri। At one stage they were 24 without loss right before 2 delivery, and now right after 2 delivery they are 24 for 2। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, संदीप इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, अनुभवी बल्लेबाज KCCR कदरी की ओर से एक और अनुभवी बल्लेबाज, और देखना यह है कि वो दृष्टि हसन का हैट्रिक यहां पर रोक पाते हैं नहीं। हैट्रिक गेंद इस वक्त लेकर दृष्टि हसन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विकेट कीपर अरशद जो कि फील्डिंग में कुछ जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार। हैट्रिक बॉल कम्स फ्रॉम दृष्टि हसन टू संदीप, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए
बल्लेबाज के लिए ये गेंद ट्राई किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर, पॉइंट फील्डर गेंद को फील्ड नहीं कर पाया, बैकअप किया गया डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप कवर पॉइंट के दरमियान, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। फैंटास्टिक ओवर कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर दस्ती हसन, और इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा, और गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद हवे में शॉट, थर्ड मैन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस अंतिम मुखियाड में, टॉप एज पर गेंद टकराई और गेंद को कुछ ज्यादा उन्होंने घुमाया था इस वक्त, इस वजह से गेंद टॉप एज पर टकराई, काफी ऊंची उछली, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, टॉप एज पर गेंद टकराए और आखिरकार गेंद को यशस्वी लपक लिया गया इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर। One more wicket fallen, wicket number 3 down, and now they are looking in trouble for the first time in this match. Now it's 25 for the loss of 3 wicket, and Hrithik now departs. तो इस वक्त नंबर 5 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए ವಿಜಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ ಹುನೈನ್ ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಕೇಸಿ ರೋಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ. तो गेंदबाज दस्ती हसन इस बीच ये गेंद स्टीयर किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट जिस अंग्रेजी में कहते हैं. 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स विद जस्ट अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. 3 विकेट इस ओवर में दस्ती हसन प्राप्त कर चुके हैं. सिर्फ 2 रन पहले 5 गेंदों में वो प्रदान न कर चुके हैं और निश्चित रूप से एक बेहतरीन स्पेल उनका यहाँ पर प्रगति पर. इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज संदीप के लिए ये गेंद. इस बार संदीप ने गेंद को खेला जरूर लेकिन नॉट क्वाइट मिड, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद पर तेजी के साथ इस वक्त गेंदबाज दस्ती हसन लब के अपनी बाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड किया और इस फील्डिंग के साथ रनों की संभावनीयता को पूरी तरह समाप्त किया. 4 ओवर की समाप्ति 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर. पहली बार ऐसा कहना पड़ेगा द बैट्समैन ऑफ KCCR Kadri now just searching for the right track. Exactly 6.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. और देखते हैं 3 ओवर का खेल बाकी है. इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. 18 balls left in still in overall calculation in the innings और यहाँ पर 7 विकेट सुरक्षित. देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में उनके पारी में क्या होता है. तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को. तो सतीश, बेहतर था शुरुआत, ऋतिक और रवि ने बेहतर शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद पिछले ओवर में 3 विकेट गिरे दृष्टि हसन के. तो इन 3 विकेटों की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, दे आर जस्ट लिटिल बिट ऑफ बैक ऑन द गेम और इस वक्त एक साझेदारी चाहिए बचे हुए 3 ओवर में उन्हें अगर एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है. अराउंड 50 प्लस इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव टोटल एट दिस सिचुएशन फॉर KCCR Kadri. So thank you very much, Gopi, and you rightly said that the 3 overs are definitely going to be very crucial for the team KCCR Kadri to get some runs on the board. The first ball outside the line of off-time batsman wanted to go for the sweep shot and missed it completely. Santosh, one more most experienced campaigner for the side of young friends Urva, especially coming to the under floodlight, is definitely going to be one of the useful bowler. This time top edge ball which is landed safely and looks like when the ball is in the air, opportunity is created for the catch for that cow point fielder, but ball just landed safely and no damage done. Vijit as well as Sandeep, they need to anchor the innings, need to play sensibly if they wanted to get 45 plus runs on the board. And Santosh will go into ball right arm over the wicket. This time off cutter, but definitely going to be hittable delivery. Sandeep just missing this opportunity because he never knows whether the ball is off cutter or in cutter. Just thinking about that ball going to be like a, that's why he couldn't manage to take the advantage of that delivery. Right above the wicket, beautiful off cutter there from Santosh. I already mentioned, he's master of doing that one, especially coming to that under floodlight. He's one of the most difficult bowler to tackle for any good batters. Absolutely 2 very good deliveries. One it's a little bit going down the leg side, but after that he bowled one fantastic delivery which is coming into the batter.
Now Sandeep will going to face Santosha. Again he's going for the big shot. Again he missed it completely. You can't do this mistake. And KC Kadri, I've already mentioned they didn't got enough runs on the board. And they're just missing that deliveries of Santosha. Santosh so far so good in this over. Final time in this over. Right arm over the wicket. Driven that one down to mid wicket region. Protection there in the deep. And Rajesh Shobar just tried to take that one in his single hand. But couldn't manage to collect the ball properly. But here is the batters completed 2 valuable runs. Fantastic over from Santosh which is comes to an end. Just 3 runs coming from that over. After completion of over numbers 5, team KCCR they're still searching for the right track. They're 29 for the loss of 3 wicket. You are watching this prestigious cricket tournament in the name of KFC Trophy 2024. Day 1 of this cricket tournament. Of course, you can't call this a day 1 because it's exactly the late night 1 o'clock. We're already started day number 2 here. And it still have to play another 3 matches after this in the local pool. And it's definitely going to be a day for entertainment for the cricket lovers to come and watch in this most beautiful cricket ground here in Konaje of this KFC Trophy 2024, which is proudly organized by Konaje friends cricketers in this most beautiful cricket ground. Chetan brought into attack. Chetan just strengthening the bowling department of young friends. Some players of KFC Kodikal are playing some other teams because the KFC cricketers Kodikal not participating in this cricket tournament, so that Shakir Harris who represented for team Torpedoes Kara, now Chetan who is representing for young friends Surva. Right arm over the wicket bounce. This time lovely delivering that quicker and faster one. Raghu just tried to get that one on the onside region, which is in fact he wanted to get the onside region. By call by umpire Satish Mudabidri, and there is just a single there. With that single score moves on to 30 for the loss of 3 wicket. Umpire Satish Mudabidri as well as umpire Fayaz. The auto umpires are doing the job here for this prestigious cricket tournament KFC Trophy 2024. Chetan from the far end. Right above wicket bounce. This time, that will going to be a bonus. And disaster. Absolutely a disaster because that ball is going far above side the line of off stump. There is a fielder in the backstep, but he's in a fine leg, and which is no chance at all for wicket keeper as well as a short fine leg fielder to stop that. Have a look at that one. Quicker. Oh my goodness! Ball deflected from the hands of Arshad. It's not a mistake of the bowler, but it's definitely the mistake of the wicket keeper. That ball is just deflected from the hands, so that ball is gone a little bit away from the short fine leg fielder. So 5 runs to be added to total for that white plus boundary. It's 35 for the loss of the wicket. This time lofted, chance here for the fielder to take the catch. And long on fielder, I think Altaf Basavanagudi down at deep long on, making no mistake at all. Sandeep departs. One more experienced campaigner is back into pavilion. Chetan bowled that delivery which is on the middle stump. Batsman Sandeep just going for the big shot. No other option at all. He knows that this is the last and the final over, which after this 1 over which is remaining, they need to get one big shot here, but he is not really able to get the distance right. One more wicket is back into pavilion. It's 35 for the loss of 4 wicket. .35 for the loss of 4 wicket. Chetan will go into continue from the far end. Right arm over the wicket. This time quite interestingly played there by Ashok, one more experienced campaigner for the side. Just shuffled across the line of the ball and flicks that off his legs down to short fine leg region for a single. With that single score, but moves on to 36 for the loss of 4 wicket in the over number 6 is in progress. Chetan again bowling from the far end. Right arm over the wicket, bounce this time, appeal for leg before wicket. Umpire says rightly that ball just going to miss the leg stump because of the turn of the ball. Extra deviation, leg by call by umpire Satish Bonabidri, and with that extra score moves on to 37 for the loss of 4 wicket in the over number 6 is in progress. In this particular over, team KCCR Kadri has got one the bonus of runs in the form of extra.
Otherwise, it's not so easy for the batter to deal with the ball deliveries of Chetan. He bowled a very tidy line. Again, Chetan from the far end. Right arm over the wicket, bounced. This time, appeal for leg before wicket. Umpire raising his finger is flum in front of wicket. Just I want to see that the wickets which is bowled out has slight a bit of confusion. Is bowled out. It's not a leg before wicket. Chetan bowled beauty, absolutely beauty, because very difficult to see because almost the batsman covered his stumps and very difficult to see from a commentary box what really happened. The wicketkeeper Arshad also right behind the stumps. Ball which is coming into the batters and hits the stump, and wicket number 5 which is back into Pebble. It's 37 for the loss of 5 wicket. KC Kadri, struggle time continues here, but then they can play some sensible cricket here because 6 balls remaining. They got 37. If you wanted to get some fighting total, then they need to get some runs in the remaining 6 balls. At least 8 to 10 runs takes them into little bit fighting total. They can fight with the total because this tournament is played under floodlight. It's not so easy to bat on. Again, reverse sweep comes into play. Raghu is a new batter, came into middle, straight away is off the mark with a single by playing that reverse sweep. Not properly played, but not good, but good enough for him to retain the second to get the single there. And it's going to be a over number 6, which is comes in, and it's 38 for the loss of 5 wicket. Team KCCR Kadri now need to deal with the final over of their innings. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಡೈಮಂಡ್ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. Arshad, the captain of the side, brought into attack and a very successful captain, and he's got success in that tournament which is played at Nazar Trophy 2024. The last 2 weeks back at Paradise Cricket Ground, they become the runner-up, and he will go into bowl that last over. Driven, not for run because it is a bowler's back drive. Ball just coming into the batter, and Raghu tried to drive that one, but not quite able to get the placement right on his follow-through. Arshad fields the ball back to his body mark. Left arm from the wicket, he bounced this. Driven nicely down to long off region, but not more than a single. They coming back for the second. Very good running between the wicket because Vijay Tisawan is quickly completed that first run and asking his partner to come back for the second and made it quite easily in the end. Good running between the wicket, and scored numbers on to 40 for the loss of 5 wicket in the over number last is in progress. Young friend Surva, after winning the toss, selected to ball fast. Arshad Baas, this time slow delivery, but read that one very well by Raghu. Plays it down to long on. Looking for the second fumble from the fielder, and they're grabbing the opportunity of that fumble. Both the batters are quickly completed at 2 valuable runs. Each end run is going to be a very, very valuable in this condition. 42 for the loss of 5 wicket. 3 more balls remaining. It's definitely going to be very crucial. Now umpire saying that young friend Surva, there exceeds the time limits. They need to bring one fielder inside the ring in that remaining 3 deliveries. Arshad, left arm, around the wicket bounce. This time beautiful delivery, absolutely flighted one. Now wicketkeeper Santosh is so confident that he got the wicket of Raghu, but umpire is not having any clue whatsoever as far as stumping or it is going to be a caught bend. I don't know what they appeal for behind the stump. Have a look at that one, a replay. Missed it completely. Stump which is made, and quickly Sukumar Santosh asking for the umpire. Umpire says this absolutely is a save. No damage done. Raghu will go to face next delivery of Arshad. Left arm around the wicket to Raghu, coming down to track using his feet. This time Santosh missed it completely. This time as opportunity is created for the run out, but time he is fails to collect the ball, and he's got a big smile in his face that he missed that opportunity. Now last delivery will go into start from the committee box, and Raghu will go into take the strike. He need to get at least one big shot in this last over so that they can get some comfortable total here, fighting total here.
Driven up his straight down to cover point region. At least they will go and come back for the second before the throw coming from the deep, and they managed to complete that 2 valuable runs as well. That's it. Team KCCR Kadri, they completed their 7 overs quota. They got 44 runs and they set a target of exactly 45 to win this match for team Young Friends Urua, and certainly the captain of Young Friends Urua really pleased with the performance of their bowler. They bowled very well, tidy bowling performance, but you can't say anything in cricket. You can't say that it's going to be a good enough total and to chase down, but I think KCCR Kadri definitely they will going to fight back when they're going to bowl, when they're going to defend this total, because KCCR Kadri need to have some hard work because they didn't got that much of success in this season. But they definitely wanted to get back quickly in this season, and they did that. They will go into fight in this particular match against Young Friends for the victory. And wait to see which team is going to get the victory here. Certainly it's going to be a great battle between these two teams. Yes, meanwhile, here is an announcement in the name of Big Sale. Azwad Costumes will go into open very soon. And coming 7th March 2024, and that was an exclusive collection of kids, men's, women's burqa fancy as well as footwears, and those who are purchased amount of rupees 5,000 will going to get some very attractive gift vouchers. There are very attractive prizes which is announced for the customer who purchased more than 5,000 rupees. The Maruti Suzuki Alto 800 rupees, Yamaha R15, and 1 month there will be a gold coin will be given for the lucky winners. So it's going to be a golden opportunity for yes, customers to grab the opportunity. In the name of Big Sale, and also the costumes will going to start on 7th March 2024 and at Kallapu, and that will going to start at Kallapu, the golden opportunity for everyone. So yes, that's it. And now coming back to that match, that building which is definitely situated in UK Dream Center building, Kallapu, Mangalore Road, Aswad the Costumes, and please visit exclusive showrooms. We're going to start at 7th March of 2024. Now we are coming back to this match. Time for Gopi to take over the microphone, and it's going to be last match of the Mangalore pool, and afterwards another 2-3 matches will be played on that local pools. And Gopi, 45 which is required, and from 42 deliveries. Looks like it's going to be an easy target, but you can't say anything in cricket, especially coming to the under floodlight. But Young Friends are certainly the team which is in good form. In the last week, we are witnessing their performance in the Nazar Trophy 2024. They're becoming the runner-up, and Friends Kana, then that match tournament, they're becoming a champion. But here, I think a lot of hard work is required from the bowlers of team KCCR Kadri. They will definitely not going to give this match very cheaply, and wait and see how well these two teams will going to perform here, and which team will going to the team which is going to handle the pressure in this big match. That team will definitely going to become the winners here. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त यंग फ्रेंड्स हुआ का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा इस ऋतु में, और केसीसीआर कदरी का भी बेहतर रहा है प्रदर्शन. तो यहाँ पर यंग फ्रेंड्स हुआ का जो बलाढ्य बल्लेबाजी का लाइनअप है उस पर अगर दबाव डालना है, उन्हें अगर 45 रनों के स्कोर के अंदर अगर रोक कर रखना है, तो इस वक्त उन्हें एक घातक गेंदबाजी करनी होगी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर. तो जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हैं. और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो अरशद और अशफाक दोनों आरंभिक बल्लेबाज. अरशद जो कि किलर ऑफ द बॉल अनवर्थ नाम से जाने जाते हैं, जो मेरे काबिल दोस्त सतीश अक्सर कहा करते हैं, किलर ऑफ द बॉल, गेंद का खूनी जिसे कहा जा सकता है. और जहां तक सवाल है यहाँ पर अरशद, देखना यह है कि इस मैच में गेंद पर किस तरह अपना प्रहार करते हैं. तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, जहां तक सवाल है गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज ಡೈಮಂಡ್ ಕೇಸಿ ನೋಡ್ತಾ ನಾಯಕ
ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ. So none for none and the target is 45 for young friends Urva and their innings now going to start और अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. लेफ्टी बैट्समैन अरशद इज नाउ गोइंग टू फेस द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करने के बाद पहली गेंद लेकर धनुष इस वक्त तैयार. बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी की जरूरत किसी से कदर के गेंदबाजों को. ये गेंद पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को इस वक्त छोड़ दिया अरशद ने और वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के जबकि पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो इस वक्त धनुष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अरशद के लिए. पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी और अगली गेंद लेकर धनुष इस वक्त तैयार. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक बार फिर से जस्ट मिसिंग टू फ्रॉम साथ ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और गेंदबाज इस बीच धनुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 2 लगातार वाइड इस ओवर में गेंदबाज फेंक चुके हैं और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अरशद के एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर. 3 वाइड्स इन अ रो एंड स्ट्रेट अवे द बाउलर इज नाउ अंडर प्रेशर. तो अरशद जैसे बल्लेबाज को पावर प्ले में गेंदबाजी करना अक्सर एक चुनौती होती है किसी भी गेंदबाज को. और यहां पर पहली 3 गेंदों को वाइड फेंकने के बाद इस वक्त दबाव उनके ऊपर गेंदबाज के ऊपर साफ नजर आता हुआ. और देखना यह है कि इन 2 पावर प्ले ओवर में अरशद जैसे आक्रामक बल्लेबाज को इस वक्त गेंदबाज किस तरह रोक पाते हैं अपने बेहतर गेंदबाजी के जरिए. तो इस वक्त धनुष अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अरशद के लिए. You can just gone for love. That's the line. That's the line he has to bowl in this situation. That's better from the bowler. Much straighter line. Get some extra bounce. और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त बल्लेबाज के पैरों पर टकराए. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रख चुका 3 रनों पर. और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना राउंड द विकेट अरशद के लिए ऑफ स्टंप से बाहर एक बार फिर से और वाइड का इशारा. वही किस्सा यहाँ पर दोहराते हुए और चौथा वाइड इस ओवर में वो फेंक चुके हैं धनुष. और इस बीच स्कोर बढ़कर पहुंच चुका इस 1 रन के साथ 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और फिर से एक बार टीम के अन्य खिलाड़ी उनकी ओर आए, उनके पास आए, कुछ समझाया कि किस सतर्क लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज को गेंदबाजी करनी चाहिए धनुष को. और धनुष इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. एक लंबा ओवर उनका यहाँ पर प्रगति पर अरशद सामना करते हुए इस वक्त ओवर की अगली गेंद का. ये गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर ऑफ नॉट सक्सीडेड. फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर मिसिंग जस्ट ऑफ स्टंप. और इस गेंद पर बल्लेबाज अरशद ने करारा प्रहार जरूर लगाना चाहा लेकिन गेंद को ठीक तरह से वो उछाल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. धनुष की गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन. ओह मिस जजमेंट. दिस इज एन एब्सोल्युटली मिस जजमेंट. शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर जो खड़े हुए थे जैसे ही अरशद ने रिवर्स शॉट खेलने के लिए अपना बल्ला घुमाया वो तुरंत अपनी बाईं ओर चले गए लेकिन गेंद गई इतनी फाइन उनकी दाईं ओर से कि उनको कुछ वापस अपने स्वस्थान पर आने का मौका नहीं मिला. देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था. देखिए इस बार हाथ अड़ाया लेकिन हाथ से गेंद उनके पहुंच से बाहर 4 रनों के लिए. और इस मिस जजमेंट की बदौलत चौका यहाँ पर जुड़ चुका और इस मिस जजमेंट के चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. वाइड 1 more wide. The same things now happening in the bowling department of Dhanush now. 9 runs already scored in this over. Just 3 right deliveries bowled by him. और गेंदबाज एक बार फिर से धनुष तैयार. एक लंबा ओवर उनका प्रगति पर दाहिना राउंड द विकेट अरशद के लिए. ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता शॉर्ट पॉइंट पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. अब कुल मिलाकर 10 रनों पर. It's 10 without loss in the over number first in progress. और गेंदबाज बाबा
अब मेरे दिमाग में ये बात आई है कि वहां पर सीटियां क्यों बज रही हैं, क्योंकि बाबा इस वक्त क्रीज पर आ चुके हैं और देखते हैं बाबा के समर्थक इस मैदान पर मौजूद है, उन्हें किस तरह बाबा खुश कर पाते हैं। इस बार गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। बाबा ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और धनुष एक लंबा ओवर इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार अरशद के लिए। ये गेंद ऑप्शन से बाहर कट किया इस वक्त शॉर्ट टर्न की दिशा में, एक रन का इजाफा ओवर तो लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर और इसी के साथ एक लंबे ओवर की समाप्ति इस वक्त धनुष की। 12 रन इस ओवर में बने, 12 रन स्कोर्ड फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर young friends who were chasing the victory target of 45. In fact, they have to score for victory in the stipulated 7 overs. They made a pretty good start. In fact, 12 runs they managed to score after completion of first over. So 45 minus 12, that means 33 more runs now they have to score for victory in the remaining 6 overs with the required run rate of exactly 5.5 runs per over. और इक्वेशन समीकरण कुछ हद तक, काफी हद तक कहना पड़ेगा इस वक्त आसान हो चुका है यंग फ्रेंड्स के लिए और जहां तक कमबैक करना है केसीसीआर कदरी के गेंदबाजों को, तो इस ओवर जो शुरू होने जा रहा है ये ओवर से हर ओवर में उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देना होगा यहाँ पर यंग फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को खामोश रखने के लिए। तो बातचीत इस वक्त जारी अंपायर और खिलाड़ियों के बीच में और इस वक्त अंपायर यहाँ पर इशारा करते हुए ओवर कंप्लीटेड। तो पहले ओवर की समाप्ति 12 रन बन चुके हैं। तो 5 गेंदें अरशद ने सामना किए पहले ओवर में, सिर्फ एक गेंद बाबा ने सामना किया है और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त 12 रन और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से। ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮುರಿದು ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿಯಿರಿ. So back to the game, it's 12 without loss after completion of first over and 33 more runs now they have to score for victory in the remaining 6 overs, exactly 5.5 runs per over. और गेंदबाज दीक्षित इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ यंग फ्रेंड्स की पारी में और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्कोर की दिशा में, गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त फ्रंट फुट पर गए, घुटनों के बल गेंद को कनेक्ट किया इस वक्त बल्ले पर और घुटनों के बल बैठते हुए गेंद को कनेक्ट किया बल्ले पर। देखिए हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, ही स्वेप्ट वेल एंड फाइंड्स द गैप एज वेल जस्ट वाइड ऑफ द स्क्वायर लेग फील्डर एंड एट लास्ट he's got a boundary for that. Fantastic struck और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त अरशद के बल्ले से रखता हुआ और एक बार फिर से गेंदबाज दीक्षित इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए निस्संदेह कमबैक करना है तो इस वक्त केसीसीआर कदरी के गेंदबाजों को एक घातक गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि यंग फ्रेंड्स उनके पारी के पहले 7 गेंदों में 16 रन अब तक बटोर चुका है और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर उछाला लंबों से बाहर 4 रनों के लिए। कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर अरशद, नाउ ही इज लुकिंग ऑन फायर। इस बार ऑफ द टोज गेंद को उछाला था और इस स्ट्रोक को खेलने में अरशद माहिर है। यहां पर देखिए किस तरीके से स्ट्रोक था, एब्सोल्युटली मार्वलेस, एफर्टलेस हेलीकॉप्टर शॉट एंड ही फाइंड्स द गैप फॉर्मली। आमतौर पर भारत
क्रिकेट के भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ऐसे स्ट्रोक खेला करते थे। हेलीकॉप्टर शॉट पूरी तरह एक बार पूरी तरह हवा में बल्ले को घुमाने के बाद स्ट्रोक्स खेलते थे और यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजने में सफल अरशद 4 रनों के लिए 20 रन बिना किसी नुकसान के, 20 विदाउट लॉस। फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग ईयर नाउ फॉर यंग फ्रेंड्स हुआ और दीक्षित फिर से एक बार ये गेंद अरशद के लिए स्वीप कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंची बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर थोड़े से पीछे था, नॉट मोर देना सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर, 21 विदाउट लॉस। Fantastic cricket tournament KFC Trophy 2024 is now progressing here, which is proudly organized by Konaje friends cricketers। निश्चित रूप से ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए इस देर रात में भी और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार है। दीक्षित दाहिना तो ऊपर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, राशिद बाबा सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद राशिद बाबा के लिए लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद तक पहुंचना चाहता, चूंकि 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। राशिद बाबा का जहां तक सवाल है, काफी विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं अंडरआर्म क्रिकेट के और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार उछालना चाहा चुके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो रशीद बाबा इस वक्त डॉट गेंद खेल चुके हैं और बेहतर गेंद इस वक्त दीक्षित यहाँ पर फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज दीक्षित तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद बैक लेग पर गेंद जरूर टकराई लेकिन गेंद कुछ हद तक लाइन के बाहर टिप्पा खाते हुए रफयाज के द्वारा इस वक्त लगभग सही निर्णय इस वक्त दिया गया। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर, 23 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और सब कुछ इस वक्त यंग फ्रेंड्स शुरुआत के पक्ष में चलता हुआ और दोनों आरंभिक बल्लेबाज एक बेहतरीन आरंभिक शुरुआत इस वक्त देते हुए अपनी टीम को। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, अरशद के लिए स्वीप करना चाहा, ठीक तरह से कर नहीं पाए, गेंद पहुंचे ऑफ साइड पर, शॉर्ट पॉइंट पर विकेट कीपर जब तक गेंद को फील्ड करे लेग बाय के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर। तो पहले ओवर में 12 रन बने, दूसरे ओवर में भी 12 रन बने, कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद 24 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। अब ऐसा कहना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स उर्वा आर नाउ लुकिंग इन अ कंबाइनिंग सिचुएशन, जस्ट 21 टू गेट 5 overs remaining and straight away the required run rate is now coming down to exactly 4.20 runs per over। निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा अब कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में केसीसीआर कदे को वापस ला सकती है, लेकिन मौका जरूर है उन्हें कमबैक करने का। देखते हैं जो चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश है उन्हें, उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त गेंदबाज जो कि गेंदबाजी पर उतरते हुए जो कि एक नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए गेंदबाज और वो उस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए। तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई और अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और अरशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार संदीप की गेंदों का। और संदीप दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए ऊपर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार अरशद के लिए जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिम, नॉट सक्सीडेड। गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, बेहतर गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सारे गेंदबाजी की थी इस वक्त गेंदबाज संदीप ने और इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेल नहीं पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद, एक बार फिर से फैंटास्टिक डिलीवरी, 2 डॉट गेंदे लगातार इस वक्त फेंक चुके हैं अरशद के लिए और बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज संदीप अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद इस वक्त सामना करते हुए संदीप की गेंदों का और संदीप इस वक्त ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ। जैसे ही अरशद बाबा की आक्रामक स्ट्रोक खेलना मुश्किल हो रहा है, पहले 2 गेंदों में जिस तरीके की स्ट्रोक उन्होंने अपनानी चाहिए थी वो अपना नहीं रहे, तीसरी गेंद पर हल्के से गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त स्वीप करते हुए 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। बाबा स्ट्राइक पर आ चुके हैं और रशीद बाबा देखना यह है कि अगली गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी वो अपनाते हैं और संदीप
फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रशीद बाबा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद संदीप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रशीद बाबा के लिए। ये गेंद इस बार रशीद बाबा के लिए, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इन फैक्ट हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर, 26 without loss in the over number 3 in progress. Still couple of balls left in this over. और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए संदीप ये गेंद अरशद के लिए उछालने का प्रयास में चूके मिसअंडरस्टैंडिंग cost him. This time Rashid Baba is backing to pavilion. अरशद 2-3 कदम दौड़ कर आए, रशीद बाबा भी दौड़ कर आए लेकिन अरशद रुक गए। रशीद बाबा काफी आगे निकल चुके थे और कोई मौका उन्हें वापस लौटने का नहीं और इसी के साथ रनआउट के रूप में ये बाबा का विकेट यहां पर गिर चुका है। 26 for 1 और देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था। लुक एट दिस दरी पे अरशद दौड़े और बाबा दौड़ कर आए, अरशद वापस गए लेकिन यहां पर रशीद बाबा के लिए कोई मौका नहीं क्रीज पर वापस लौटने का और पहला विकेट गिर चुका है। 26 runs opening stand has been broken in the face of Rashid Baba and the young friends Urwa are now lose their first wicket. It's 26 for 1. Ajmal, one more good striker of the ball, is now comes out to the middle और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और संदीप गेंदबाजी इस वक्त करेंगे अरशद के लिए और संदीप का बेहतर ओवर अब तक समाप्त हो चुका है जिसमें सिर्फ 2 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशद के लिए। तो अरशद बजाल इस वक्त सामना करते हुए संदीप की ओवर की अंतिम गेंद का रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंदबाजी, बेहतर ओवर, जस्ट 2 runs conceded by Sandeep in this over and 1 wicket also fallen in the face of run out. 3 overs gone, 26 on the board for losing 1 wicket and except they lost the wicket of Baba, they are looking in a good situation for young friends who are 19 to get, 4 overs remaining. Required run rate exactly 4.75 runs per over. देखते हैं 4 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है यंग फ्रेंड्स की पारी में। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को आगे का को देखा सुनाने के लिए। तो सतीश, कुछ भी नहीं बदला पहले 3 ओवर में और उम्मीद किया जा सकता है बचे हुए 4 ओवर में, लेकिन उम्मीद को यकीन में बदलने में इस वक्त उन्हें चाहिए एक चमत्कारी गेंदबाजी केसीसीआर कदरी को इस मैच में कम बैक करने के लिए। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। Thank you very much, Gopi. And the first 3 overs which is belongs to young friends who are no doubt at all because they got 26 runs and they lost only 1 wicket. And the required run rate is definitely going to be not a big ask, 4.75 runs per over. And you rightly said if KCC Kadri wanted to back in the game, they needed some miracle bowling. They needed to get some wickets and need to get some economical deliveries. And wait and see how well they will going to get back into this game. Jitesh brought into attack. This time the batter Ajmal tried to get that get that one from his bat, but couldn't manage to get the contact with the bat, and leg by call by umpire. With that, Texas score but Namozan to 28 for the loss of 1 wicket in the over number 27, correction, 27 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Arshad, captain of the side, so far he's been outstanding, scored 16 valuable runs in just 14 deliveries with help of 3 delightful boundaries, and they will go into face the next delivery from Jitesh. Jitesh is a very, very talented leg spin bowler, bowling right arm around the wicket past umpire Fayaz. This time nicely swept that one right in the gap down to down, find the grid, and they're looking for the second. Fielder will go and return the ball, but not good enough from the fielder Raghu, I think so. Didn't got that much of a good enough throw, and both the batters completed 2 valuable runs. Delicately played by Arshad, just getting that one very fine by closing the face of his bat and getting the placement right down to the fine leg region for a couple of runs. With that couple of runs, Kobar Namuzan to 29 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Jitesh searching for the wicket.
Right arm round the wicket to the left-hand batter Ashad. Ashad again saying he wanted to repeat this stroke. This time ball is a little bit squarer, and just behind the square that ball went towards hands of Raghu there, and ample time for the both the batters to complete the single. No need to panic at all. Both the batters are realizing that just a rotation of strike is good enough for them to get the target of 45 to win this match. That means 15 more runs required for the victory. This time he's gone absolutely plumb in front of wicket. I'm really surprised why Hajmal is not offered the stroke for that particular delivery. He's just misjudging. I will have a look at that one replay. What really happened here of the bowling of Jitesh. Well, he's offered the stroke, but he shuffled across the line of the delivery. Tried to get that one into the square leg region by shuffling across the line of the delivery. When you shuffle across the line, then always the possibility of getting leg before wicket if you're going to miss the ball from your bat, and he's just right in front of middle stump, and for umpire it's going to be an easy decision to raise his finger, and will it going to be opportunity for the team KCR Kadri to back in the game. Total score is 30 on the board, 15 more runs required for the victory, and they got another 3 overs after this. 20 balls remaining to get 15 runs. Still KCR Kadri has got opportunity to back in the game because they got a wicket here. Whenever the new batsman coming to the middle, right time for the fielding team to tighten up the screws. And the new batter, one more very popular cricketer as far as underarm cricket is concerned, Rajesh Ubar came into bat, and 2 left-hand batters out there in the middle. And wait to see how well these 2 left-hand batters of young friend Surva will going to get that 15 runs. Jitesh has got a very important breakthrough, but one single wicket is not good enough for KCR Kadri. They need to get wickets in the frequent intervals and need to get some economical deliveries, dotted deliveries. Jitesh again, right arm from the wicket, driven that one, but not quite finding the gap. And ball which is fielded very well by Jitesh. So far Jitesh bowled a very good line and around the midland off stump, not giving any opportunity for the batter to get any kind of runs here. Perfect delivery to ball to the fresh leg. And Rajesh Ubar is a very busy customer and a very good runner between the wicket. Will go into face Jitesh. This time he played that reverse quite well down to deep back of point region before the fielder from cow point region to run across to field that one. Ample time for Rajesh Ubar to complete that 2 valuable runs. So tidy over, but I don't think it's going to be that much of trouble for young friend Surva in that over. They got a wicket, they lost the wicket, but they got runs in that over as well. 32 for the loss of 2 wickets after completion of 4 overs. 3 overs remaining in the innings of young friend Surva, and they need to get another 13 runs to win this match. 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮುಂದುಳಿದ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 18 balls remaining. They need to get another 13 more runs required for the victory, and 2 batters out there in the middle. And Sandeep will going to be the next bowler. He bowled the first over. Very tidy first over, considered just 2 runs, and that's why captain just definitely wanted him to continue from the far end. The leg spinner, one more leg spinner is in action. Arshad will going to take a strike. This time inside out cricketing stroke, plays it down to deep cow point region. Raghu the fielder, then the deep cow point region. Not a Raghu there. The cow point fielder quickly moving to his right hand, getting the ball and returning the ball to that into the hands of wicket keeper. Ample time for the batter to complete the single. With the single score moves on to 33 on the board. Halu Hunain as well as Team Diamond KC Road. Please be reported here immediately for the toss. So one more single is taken there, 34 for the loss of 2 wickets.
Arshad back on strike. Sandeep will be the bowler from the far end. This time, lovely shot, beautiful, glorious extra cover drive. Oh, misfielded that by the field, misjudgment in fact. Because of that ball is just changing their route, in fact, because of the ball just spun in front of the fielder at extra cover. He couldn't manage to judge that one very well, but managed to get that one quickly, and a couple of runs which is taken. Score moves on to 36 for the loss of 2 wickets. 9 more runs required for the victory. This time I think he's gone. Arshad walking. This is what the beauty of this man is, not really looking towards umpire. He knows that he got a leading edge of the bat, and Sandeep on his follow through complete the catch. Have a look at that one in replay. He wanted to go for the expansive drive, leading edge, and on his follow through he completed that catch. Appeal is going on, but already Arshad is walking towards the pavilion. .36 for the loss of 3 wickets. Even though time is exactly 1:45 in the late night, but still with a very good number of crowds enjoying the game of cricket here. The tomorrow will going to be the final day of this cricket tournament and decider day of this cricket tournament, and wait to see which team will going to become the champion of this prestigious KFC. Plays it down to mid-wicket region. They're looking for second then. But Rajesh, slight a bit of jogging in the middle, not looking for second run. Exactly, no need to panic at all. Just a rotation of strike is good enough for young friend Surva to win the match. But you can't underestimate cricket. One good over is good enough for any team to back in the game. 37 for the loss of 3 wickets. Last time in this over, Sandeep. Bowls Rajesh, this time appeal for a wicket. Chance of runner, direct it. And now I think the batsman is in danger. Before umpire will go to give that for the third umpire, batsman already walking towards the pavilion. Decision which is pending because Suresh Mudabidre referred to the third umpire, and it's a direct hit. I think is gone. No need to look for the third umpire. He's gone. He's well short of his crease. Direct it is always going to be difficult for the batsman to survive from the run out. Now KCCR Kadri slowly, they're tightening the screws here with some wicket taking balls, with some very good fielding. And now right time for them, KCCR Kadri, to get one more good over here so that they can put some pressure onto the batsman. Over number 5 which is comes to an end. 5 overs completed, chasing a total score of 45 to win this match. It's 37 for the loss of 4 wickets. Now 2 overs remaining and 8 runs required for the victory. 8 required from 2 overs. Just like I mentioned, you cannot underestimate cricket. Of course, for KC Sarkar, there is slight a bit of difficult job to restrict the runs, but a difficult road often leads to beautiful destination. And wait and see how well KCR Kadri will going to get the destination of restricting their opposition for not to get the target of which is 45. But sensible batting which is required for young friends. No need to panic at all. Still they got enough deliveries, and they go need to get 8 runs from 12 balls. The asking run rate of exactly 4 runs per hour. Raghu can do the magic here. He is one of the key bowler for the side of KCR Kadri. Different bowler who can turn the ball around with the flight, and if you get the good line and length, the opportunity is still there for KCR Kadri to back in the game. Altaf Basavanagudi is on strike. Raghu is on attack, right arm over the wicket. Balls this time delicately played there by Altaf by letting the ball coming into his bat, just closing the face of his bat and plays it. Little bit correction. Chetan, slight a bit of confusion. Chetan is a new batter in. .37 for the loss of 4 wickets and 7 more runs required for the
38 on the board, and 7 more runs required for the victory in 11 balls. Raghu changing the angle, coming round the wicket to left-hand batter. Rajesh drives that one powerfully down to deep long off region, not more than a single there. Protection is given in the deep long off. Just a single. Both the batters are dealing with a single, rightly so. 2 balls, 2 runs scored by the both of batters in the middle. 6 required from 10 balls. Desperately required 1 dotted delivery. Desperately required 1 wicket taking delivery. One fielder is bringing into the ring from the defined leg region. This time appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Might be the ball is pitching outside the line of leg stump. Leg by called by umpire. One more addition in the form of leg by. ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಕಿರಣ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Raghu right arm around the wicket to Rajesh. 5 to get from 9. This time outside the line of off stump. It's going to be a dotted delivery. Now non-striker Chetan and just not impressed with the decision, and is quickly asking for us to give for the third umpire to see that whether it is going to be wide or not. I request the two teams captain Diamond as well as Halhunen Krishnapura, please be reported here immediately. So umpire will going to check whether it is going to be wide or not. The field umpire decision already. Umpire said this is a field umpire. His decision is right ball, and third umpire decision is also it's a right ball. It's a right ball called by umpire, third umpire as well, and it's a 5 which is required from 8 balls. Now match is very interesting. Raghu got consecutive correction. He got a dotted deliveries in the right time. Two balls remaining, 8 balls remaining, and 5 runs required for the victory. Raghu desperately wanted one more good delivery, 2 more good deliveries in this over. But young Francerva required just a sensible batting. And I think having these two experienced campaigner like Rajesh Shubhar as well as Chetan, they will not going to feel that much of pressure. But cricket is a absolutely difficult game. Again, wanted to go for the big shot. Wicketkeeper behind the stump. Sandeep misses the ball completely. Inside edge of the bat might be defeating the hands of wicketkeeper behind the stump. And they got a very valuable single. 4 required from 7 balls. 4 required from 7 balls for young Francerva to register their victory. Now putting some pressure. Diamond Casey Road won the toss, selected to field first for the next match. Appeal for leg before wicket again, umpire not interested. This time run out taken place. Rajesh Shubha back into pavilion. Even though Raghu will not going to get the wicket in the form of a leg before wicket, but suddenly wickets will going to fall in the form of run out. And have a look at Chetan. He is very far outside, down the ground, isn't it? He is standing well outside the crease and try to get that one on the onside region. Appeal for leg before wicket. They wanted to get the single. Now it's going to be more interesting. 4 required from 6 balls. Now Altaf Basavanagudi is walking towards the middle. It's a good comeback here by KC Sarkadri. Not really given up this match. This is what I'm really loves to see. Even though one stage it looks like young Francerva will going to win this match quite easily, but here is the danger. Here is that one more timed out call by umpire Satish Mudabidri. If the match will go into ended in a tie,
If the match will go into ended in a tie, then winner will go into decided by super over. So wait and see, will it go into be a super over here? As for the rules and regulation of this cricket, this timed out is concerned, I think KCR they definitely were going to put more fielders inside the ring because they're depending on 4 runs in the last over. So they wanted to put some pressure onto the batsman by putting some extra fielders in the inside the ring. It's going to be more interesting to see the field set here for Chetan. There is a fielder at short gully, one fielder at cover point, not an orthodox cover point, just outside the ring. The one fielder at very close to the batsman at the silly mid off the deep extra cover, between deep extra cover and long off. One fielder at short mid on, short mid wicket, short square leg. One fielder at long on. Here is the first ball, delicately played there by Chetan in the equation. You know exactly the kind of strategy you need to be implemented to get the single. Just closing the face of the bat, play that horizontal bat very well to get the single. 5 balls remaining, 3 runs required for the victory. Bowler desperately need to get 1 or 2 dotted deliveries. Jitesh is operated from the far end, putting in again another fielder inside the ring to put some pressure onto the batsman. It's a good idea from the captain of KCR Kadri to put some pressure onto the batsman. There's some reverse plays at one, misjudgment by the fielder. Ball running down to deep cover point region, and they got a valuable couple of runs. Altaf Basavanagudi got that 2 valuable runs by playing that reverse sweep. Scores are levelled. Now just a single run required for the victory. And remaining 4 deliveries. So pressure is off, stayed away in 2 deliveries. Chetan picked up a single, Basavanagudi picked up a 2. Now just 1 required for the victory for young friends to qualify for the next round of this prestigious KFC Trophy 2024. Driven, he finished the match in a style with a straight drive down to deep long on boundary for 4 runs. Young friends who are through to the next round, defeating KCR Kadri and by 5 wickets. And it's definitely going to be a great victory for young friends Surava. KCR Kadri definitely they bounced back very well with some good overs, but not good enough to get the victory against young friends Surava. Congratulations young friends Surava for their good performance, and now it's going to be 3 matches which is completed from the Mangalore pool. We'll have more cricketing action tomorrow in Mangalore pools, and before here the one more match will going to commence here, and we'll take a short break here, and after short break my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone in our national language. Indeed, thank you.
Right, we are straight away coming to the local pool. Mangalore team, Mangalore pool's matches has been completed. Today's Mangalore pool matches has been completed. And NM Mangalore, Torpedoes Kana and Young Friends have registered their victory. And they are through to the next round of this competition in a Mangalore pool. And now straight away we are coming to the local pool. And the match is now going to play between Al Hunain versus Diamond KC Road. Al Hunain Krishnapur will take over Diamond KC Road, and that match starts within just a short while. Dhanyavad Satish. So we're straight away coming to the local pool matches, and in the late night it's already 2:05, and the match is now going to start between Al Hunain Krishnapur versus Diamond KC Road. And news is from the center that the captain of Diamond KC Road, after one the toss, elected to field first, and we are just wait because of that the openers of Al Hunain Krishnapur are the crease. Sulail and Samad. The meantime the bowler is Bashir, who starts the fresh proceedings from that side end, and we are just waiting for the first ball of the match. Right, the first ball of the match is now coming up और गेंदबाज इस वक्त बशीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद 6 overs per side to be played 6 overs match और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार
दाहिने हाथ राउंड द विकेट, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के पहला रन इस वक्त जुड़ चुका है, और गेंदबाज बशीर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए सुलाइम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाह, नॉट कनेक्ट विद दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट ही स्कोर्ड अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। समद जो कि अपना तो इस वक्त इस बीच लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, और इस बार रनआउट का खतरा, लेकिन अंतिम क्षण में यहां पर बल्लेबाज शायद क्रीज पर पहुंच चुके हैं। तो इस बीच जोकी मरालन ने 1 रन बल्लेबाज इस बीच पूर्ण करते हुए, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 2 विदाउट लॉस। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, और सब कुछ सुरक्षित इस वक्त बल्लेबाज के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला KFC ट्रॉफी 2024-2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए, और 3 मैचेस आज रात को इस वक्त खेले जाने हैं, इस मैच को शामिल न करके। और इस बीच गेंदबाज बशीर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और गेंद पहुंची शॉर्ट फ्रंट लेग पर, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, और निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है अल हुनैन कृष्णापुर का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर शुरुआत, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर आती हुई, एक बार फिर से वाइड का इशारा, तो काफी वाइड इस वक्त फील्ड गेंदबाज जब फेंक चुके हैं, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए इस वक्त गेंदबाज बशीर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े, और 1+1 2 runs now added to the total। निस्संदेह काफी वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज बशीर, और काफी रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में इस वक्त वो प्रदान न कर चुके, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, और निश्चित रूप से अपनी सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तराशते हुए गेंदबाज, और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त, और बशीर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। 9 विदाउट लॉस, 8 without loss in fact। SBR friends will take over IND Warriors in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। इस बार गेंद को ड्राइव किया ऑफ द टोज खूबसूरती के साथ into the gap as well, and it he won't get that one, and it's gone over the fence for a boundary। Fantastically struck came from the bat of the right-handed batsman। खूबसूरती के साथ गेंद को ऑफ द टोज इस वक्त बोर्ड दिया था, और वन इज लॉन्ग ऑन फील्डर काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचने पे, और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 12 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ समत के बल्ले से, और गेंदबाज
इस ओवर में कुल मिलाकर 4 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं बशीर अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव किया मिड ऑन पर, सीधे गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर। 13 रन पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर निस्संदेह, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, अल हुनैन कृष्णापुर को अगर एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है तो एक बेहतर शुरुआत उनके सलामी बल्लेबाजों को यहाँ पर देनी होगी। और गेंदबाज बशीर अगली गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद इस वक्त विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लिया। पहले ओवर की समाप्ति, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड और पहले ओवर के मुकम्मल के बाद स्कोर है इस वक्त 13 रन बिना किसी नुकसान के। 13 रन स्कोर्ड आफ्टर फर्स्ट ओवर। अल हुनैन कृष्णापुर but a pretty good start after being losing the toss and put it to bat by Diamond KC Road in this late night match, and now they are 13 without loss with the 5 overs to go in their innings at this situation, and still they got 10 wickets kept intact. So second over starts from the commentator box and और लंबे कद के खिलाड़ी जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं, लेफ्टी बॉलर, लेफ्टी टॉल बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक। इन फैक्ट 44 नंबर की जर्सी वो पहने हुए हफीफ, जो कि लंबे कद के गेंदबाज इस वक्त मोर्चे पर लगाए गए हैं और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। समद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस बीच गेंदबाज अफीफ ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज समत के लिए पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बाउंस, ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन and there is no possibility of any run and the scoreboard stays at 13 without loss in the over number second in progress at the start of the second over in fact। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, हफीफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रन। काफी वाइड रन गेंदबाज प्रदान कर चुके हैं। डायमंड केसी रोड गए अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तलाशते हुए और निश्चित रूप से यहाँ पर इसका पूरा फायदा उठाते हुए इस वक्त डायमंड केसी रोड और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अफीफ अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन कवर पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे थोड़े से पीछे तैनात था और जब तक गेंद को वो फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 15 without loss in the over number second in progress और इस बीच अफीफ गेंदबाजी करेंगे इस वक्त सुलह के लिए, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग का मुआयना करने के बाद। और अफीफ बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त खूबसूरती के साथ गली क्षेत्र पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। 6 overs per side to be play। तो इस वक्त अफीफ अगली गेंद लेकर तैयार, ऑफ सबसे बाहर, वाइड का इशारा and 17 ದ ಸ್ಕೋರ್ ನಾವು SBR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ IND ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು SBR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ IND ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಡ್ರೈವ್ किया खूबसूरती के साथ स्ट्राइट ऑफ द ग्राउंड, गॉल टू फॉर किक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। स्ट्रोक्स के साथ ही बल्लेबाज तोड़ पड़े थे और आखिरकार उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई यहाँ पर 1 रन प्राप्त करने में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर निस्संदेह इस वक्त कमबैक करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए डायमंड केसी रोड के गेंदबाज और इस बीच अफीफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और समद
सामना करने के लिए इस वक्त तैयार है और सुलह माफ कीजिए सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर अंपायर विकेटों को सही करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है और इस बीच गेंदबाज तैयार बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ड्राइव किया इस वक्त नॉट क्वाइट मिड विकेट इनफैक्ट इट्स गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रन। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए आमतौर पर इस केंद्र मैदान कोनाजे का स्वभाव ऐसा है कि रात होने के बाद हवा का रुख काफी हद तक कम हो जाता है। स्ट्रोक्स खेलने में बल्लेबाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद है सेंसिबल बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल्स के जरिए और इस बीच अफीफ अपने ओवर की अगली गेंद रन अपने कुछ हद तक बाधा एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बाएं हाथ और विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा विकेट कीपर रख चुके लेकिन बल्लेबाज को रन इस बीच नहीं मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति 2 overs completed and after 2 overs still Al Hunain Krishnapur looking in a good situation. 19 runs they scored with a run rate of exactly 9.5 runs per over in their first 2 overs and now still in overall calculation it's going to 4 overs remaining in their innings. एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट KFC ट्रॉफी 2024-2024 की शानदार प्रगति होती हुई जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया कोनाजे फ्रेंड्स क्रिकेटर्स ने टीम KFC और निश्चित रूप से ये श्रृंखला इस देर रात में भी शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई और तीसरा ओवर हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त शुरू होता हुआ गेंदबाज द बाउलर ऑफ वेरिंग नंबर 18 जर्सी इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दैट साइड एंड मुशफिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ अल हुनैन कृष्णापुर की पारी में और गेंदबाज इस वक्त तैयार जबकि दोनों बल्लेबाज अपने स्थान पर लौटते हुए पहले विकेट के लिए सुलह और समद ने 18 रन 19 रन जरूर बटोरे हैं लेकिन 19 रनों में 8 रन अतिरिक्त के रूप में प्रदान कर चुके हैं। यहाँ पर डायमंड केसी रोड के गेंदबाज 11 रन बल्लेबाजों ने बटोरे, सुलह ने बटोरे 4 रन जबकि समद ने बटोरे हैं 7 रन। तो इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए बल्लेबाज सुलह जो कि नंबर 9 की जर्सी इस वक्त पहने हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले इस वक्त समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले की गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया जाता है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर। 20 without loss in the over number 3rd in progress at the start of the 3rd over in fact और गेंदबाज मुशफिक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सुलह माफ कीजिए समद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और इस बीच मुशफिक की अगली गेंद स्वीप किया इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन करते हुए मिसजजमेंट इस वक्त और इस बीच जहां तक सवाल है गेंद को जब तक बैकअप किया जाता डीप फाइन लेग पर फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, कुछ हद तक मिस फील्डर शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा रखेगा फलस्वरूप बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 22 नाउ विदाउट लॉस और मुश्किल फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा नंबर 9 उनके खाते में जुड़ता हुआ, अतिरिक्त नंबर 9 उनके खाते में जुड़ता हुआ 23 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ no wicket slowly and steadily this opening partnership is not building up for Al Hunain Nakastapur। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए डिफ्लेक्ट हो चुकी है फाइन लेकिन फाइन लेग पर गेंद को बैकअप किया गया है। एक बात रन उस विकेट बल्लेबाज को मिलेगा डीप फाइन लेग पर बेहतर तरीके से गेंद को रोका गया था फील्डर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है, चौथी गेंद लेकर इस वक्त मुशफिक का गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट
गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, शॉट स्क्वायर लेग पर गेंद को रोका गया बेहतर तरीके से 20 गज के दायरे के अंदर इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल, लेकिन एक रन न बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। रन हालांकि सिंगल्स के रूप में जरूर बन रहा है अल हुनैन कृष्णापुर के लिए, लेकिन खुशी की बात यह है कि रन बन रहे हैं उनके लिए लगभग हर गेंद पर। ये गेंद इस बार ऑनसाइड पर उछलना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा, has got an inside edge on the bat, single run added to the total and now it's 26 without loss with just a ball left in this over। और इस ओवर में अंतिम बार मुशफिक का इस वक्त बाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुले जो कि सामना करते हुए 26 रन जुट चुके हैं पहले विकेट के लिए, अविजित पहले विकेट के लिए कहना पड़ेगा। और इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर बेहतर तरीके से गेंद को रोका गया, विकेट कीपर द्वारा वाइड अगेन, just drifting down the leg side at the last moment, 27 without loss in the over number 3 in progress in their innings। और गेंदबाज अभी भी गेंद बाकी इस ओवर में और मुशफिक गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार सुलह के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। 28 द स्कोर, yet to lose in a wicket scored by the batsmen, the openers of Al Hunain Krishnapur at batted first against Diamond KC Road in this late night match and now 3 overs remaining, 3 overs gone, half the way mark, still half have to go। देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। 28 विदाउट लॉस आफ्टर 3 overs और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ, माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And Halvanen they got a very good score in spite of some help coming from the bowlers by conceding some extras. They got very good runs on the board. 28 they got so far in 3 overs, and wait and see how many runs they will going to get in remaining 3 overs. Shabir, the bowler, will go into start the fresh over, and batsman wanted to get that one down to third man position. They wanted to get that one by twisted bat, missed it completely, then wicket, and ball hitting his legs, so that leg by call by umpire. One more addition in the form of extra score, but moves on to 28 on the board without loss of any wicket. Team Al Hunain against team Diamond KC Road. Right arm over wicket bounce. This time driven that one, not quite getting that one from the middle of the bat, but good enough for him to get the single down to short mid wicket region, and with that single scoreboard now moves on to 30 on the board without loss of any wicket. Very good foundation laid by the opening batters of Al Hunain, Samad and Sulai. The opening batters are putting some very good partnership for team Al Hunain, and team KC Road have to back in the game with some good overs. In the remaining 3 overs they need to get some wicket as well as some economical deliveries. Right arm over wicket bounce, driven that one down to long off region by Sulai. They're looking for the second. In comes the throw, but not good enough throw from the fielder. Excellent running between the wicket, ball which is went towards extra cover region. The fielder charging to the ball, but not really able to return the ball quickly to the field bowler. Went for the reverse sweep and looking for a couple of runs and opportunity of run out. Umpire says not out, rightly so. Both the batters are running very quickly between the wicket. Excellent running between the wicket. Placing the ball right in the gap and converting that single into twos. And
Shabir is not happy with that the fielding effort of the fielder. Both the batters are settled down in the middle and running very quickly between the wicket. 34 on the board without loss of any wicket in the over number 4 is in progress. You are watching the prestigious KFC Trophy 2024 and this very beautiful, huge central stadium here in Konaje. Again, driven that one down to deep long off region. Once again, they're looking for the second and this time definitely going to be out. No question of second run, isn't it? This time the fielder is very quick to react to that fielding. And unfortunately, the batter will going to be out in the form of run out. The partnership is just broken. But I think after putting some good to massive total in the board, their opening partnership, which is comes to an end with the form of run out. Sulai back into pavilion after scoring 12 valuable runs in just 12 deliveries. 35 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Shabir to continue from the commentary box end. Samad. The batter will go into face the very next delivery. Is batting on 11. This time again improvising cricketing stroke down to third man region. Both the batters are first opening batters played that cricketing stroke very well, sweeping the ball, reverse sweeping the ball. One more over comes to an end after completion of over number 4. It's 36 for the loss of 1 wicket. Team Al-Hunain looking in a great position here. They're getting the runs at the rate of exactly 9 runs per over. Last 2 over remaining in their innings and of Alonin. For Diamond KC Road and the batter will go into face some of the opening batters still in the middle and will go into face the first delivery of the over number 5 from the far end. First umpire Fayaz improvising again, played that switch it very well down to deep gully region. In comes the throw from the deep, chance of run out. Both the opening batters now back in the pavilion in the form of run out. Again, a total misunderstanding between the wicket, costing a huge wicket. The subtle batsman Samad is back into pavilion. The good piece of fielding there by the fielder as well as a good return into the hands of wicketkeeper, and wicketkeeper just collecting the ball in front of the stumps, and batter Samad is not in the picture and is back into pavilion. So opening batters after getting some good score for the team, and have a look at the moon there, and King Sports cameraman just got a concentration over the moon. Absolutely, it is a beautiful view of moon in this late night, and absolutely it's a good quality coverage from King Sports because of it's late night. We are not having that a huge number of crowds, but still we can see that the good crowd, the left of right of our community box, enjoying the game of cricket here. Time is exactly 2:30. Kabir is a new batter in. 2 new batters in the middle now. Asif to continue from the far end. Round the wicket. Driven that one uppishly, and long off widish extra long off fielder will go in to collect the ball, return the ball. Ample time for the batter to complete the single,
And with the single score numbers on to 38 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Asif around the wicket to Azhar. Azhar drives it nicely down to long off region. Again they're completing the single, looking for 2 then, but it's definitely going to be asking for trouble if they wanted a couple of runs there. Just settle for the single. 39 for the loss of 2 wicket. For the loss of the 2 wicket in the over number 5 is in progress. Diamond considered after winning a toss elected to field first. Again driven upishly but quite safely, just out of the reach of that cow point fielder, and they won against. Again they completed a single. Both the batters are dealing with the singles in this over, just rotating the strike very well. It's a 40 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Asif to continue. Round the wicket. Balls flicks it off his legs. Chance of run out there. Slight a bit of fight through coming from the fielder so that batsman survives. One more single completed and over number 5 is in progress. Asif, 5 balls, 5 singles, 5 runs conceded. They're going to be a punishable from the umpire Fayaz because that ball is going outside the line of the leg stump. One more single. With that single score but moves on to 42 for the loss of 2 wicket. Now they exceeds the time limit so that umpire Fayaz is signaling that the fielding team have to bring one fielder inside the ring so that deep back point region coming inside the ring. Altogether, the 4 fielders on the offside region, 5 in the on. Driven nicely down to mid-wicket region. They're running hard. This time they will definitely going to get a couple of runs. Good throw. Wow, what a fantastic work. Absolutely unbelievable from the wicket-keeper. This is one of the rarest dismissal, I want to say. Just like in international cricket, several times Mahendra Singh Dhoni doing that job. Absolutely magnificent. Definitely tomorrow this will going to be a viral in social media. The King Sports definitely going to do this. And out, which is a call from the third umpire. What a great work there from the wicketkeeper. I just want to know the name of the wicketkeeper. It's out and the score is 43. Have a look at it when you replay. Jersey number 17, the wicketkeeper. Yes. Great work from the wicketkeeper of Diamond Kisi Road. Ashik, the wicketkeeper, and sure he will going to be one of the popular name now tomorrow in social media, in Instagram. Five overs completed, last over remaining in their innings. The jersey number 10 will go into ball the last over. Azhar is the batter, will go into face. Driven, beautiful, absolutely good placement, but long off fielder is there. And before the throw coming from the fielder, they completed 2 valuable runs. Once again, the same thing, the bowler this time wanted to get the stumps by flicking the ball into the stumps, but ball misses the stumps. Both the batters completed 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, score numbers on to 45 for the loss of 3 wicket in the over number last is in progress. 2 last 5 deliveries remaining. Right arm over the wicket balls. Improvised beautifully between the third man and the gully fielder. And before the fielder from third man to run back to field the ball quite hardly. And both the batters completed 2 valuable runs and score numbers on to 47 for the loss of 3 wicket in the over number 6 is in progress.
4 balls remaining in the innings, and very good score on the board for the team Alonen. Krishnapura. Oh, lovely shot, beautiful shot, but straight to the hands of fielder, looking for second. In comes the throw, and bowler misses the throw from the fielder. They completed 2 valuable runs, 49 for the loss of 3 wicket. Nice looking drive, copybook style of extra cover drive there from Azhar. Is getting some important runs for his team. Last 3 balls remaining in the innings. Shabir continues. Right above the wicket bounce. Diwan, lovely shot again. Beautiful placement. Down to deep cow point fielder. And excellent fielding there by the fielder. Just inside the line, boundary line. He managed to stop the boundary. But here is the batters completed 3 valuable runs. 50 comes up here for Alonen. With that 3 got at 50. 52 for the loss of 3 wicket. And very good batting display here from the batters of team Alonen. 2 balls remaining, 52 on the board. Absolutely good total under floodlight. This time lovely delivery indeed. It looks like happily for something, but nothing has happened. Ball just misses the stump. Got an inside edge of the bat. 53 for the loss of 3 wicket. It's going to be a last delivery of their innings. Azhar will going to take the strike. Driven, not quite getting that one in the middle of the bat, but just for a single. They're looking for second then, and now it's going to be a run out. That's it. They finished their innings with a 54 in 6 over, and they set a target of 54 to win this match. The record run rate is exactly 9 runs per over for the team Diamond KC Road, and absolutely fantastic tournament is in progress. Konaje Friends Cricketers presenting KFC Trophy 2024 and Underarm Cricket under day night under floodlight. And we'll take a short break here, and after a short break, the KC Diamond Road will go to chase this big total of 54 to win this match. And for that innings, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश. तो 55 the target for Diamond Casey Road. And the innings now going to start. Their openers Sabir and Aziz, the openers. Meantime, the ball is taken by Hafif. Who now starts the fresh proceedings. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. हफीफ आरंभिक बल्लेबाज, जबकि सज्जाद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सबीर और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर तैयार. 55 they have to score for victory in the stipulated 6 overs. और अंपायर ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत तो मैच की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को मुड़ना चाहता, गेंद पहुंचे इस वक्त शॉर्ट थर्ड बैन पर और नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज कुछ हद तक आगे निकल आए थे, लेकिन सही तरीके से वापस भेजा उन्हें स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने, तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है. डायमंड केसी रोड का 0 पर पहला ओवर शुरू हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सज्जद दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा घुटनों के बल बैठते हुए, लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 0 पर. तो इस बीच ये गेंद इस बीच शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. So 1 without loss. ಅಲ್ಲಿ IND ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ IND ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು संख्या दयविಟ್ಟು नोंदाइसಬೇಕಾಗಿ विनंती. इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला, लंगन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त उछाल दिया था और आखिरकार 4 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 5 रनों पर. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त अफीफ के बल्ले से लगता हुआ. देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था उन्होंने खूबसूरती के साथ लंगन सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए. तो इस बीच सज्जादा गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ऑफ बाहर क्रैक्स इट अवे एंड अ ब्रिलियंट स्टॉप. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्टॉप मेड बाय द कवर पॉइंट फील्डर. लगभग गेंद जमीन के सहारे गोली की रफ्तार में इस वक्त निकल रही थी कि अंतिम क्षण में गेंद को उन्होंने रोक लिया कवर पॉइंट 20 गज के दायरे के अंदर और निश्चित रूप से ये चौका को वो यहां पर बचाते हुए अपनी बेहतरीन फील्डिंग के जरिए अंतिम बार इस ओवर में फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर सज्जद कम्स. दाहिने हाथ राउंड द विकेट एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, शॉट थर्ड बैन पर गेंद पहुंची, अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन थ्रो इस वक्त फेंकने में सफल और थ्रो जब तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 7 without loss, first over completed, chasing the victory target of 55 in 6 overs set by Al Hunain Krishnapuram. Diamond Casey Road made a steady start. In fact, they managed to score 8 runs on the board after completion of first over. 47 more to get in remaining 5 overs with a required run rate of exactly 9.40 runs per over for Diamond Casey Road with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. कबीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ डायमंड केसी रोड की पारी में और हल्की सी धुंध मैदान पर गिरती हुई ड्यू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. कुछ हद तक ठंडी का एहसास यहाँ पर खिलाड़ी और दर्शक जो इस मैदान पर मौजूद है वो भी इस वक्त कुछ
इस ठंडी का एहसास यहाँ पर करते हुए जो ड्यू नमी इस वक्त मैदान पर धुंध जो कि गिर रही है और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला कवर पर काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर और इस बार गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल काफी तेज लंबा दौड़ लगाने के बाद इनसाइड आउट क्रिकेट खेला था खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप किया था इस वक्त कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले और 2 रन इस बीच बल्लेबाज बटोरने में सफल 3 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 11 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर और कबीर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट और सपना इस वक्त करते हुए सबीर तो कबीर सबीर के लिए अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई वाइट का इशारा अंपायर का और वाइट की रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस स्टिल दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो 55 द टारगेट इन 6 ओवर्स फॉर देम और कबीर इस बीच गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूंकि 1 रन मिलेगा और 22 का इशारा अंपायर का और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस निस्संदेह जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है इस वक्त चंद चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत इस मैच में कमबैक करने के लिए डायमंड केसी रोड के बल्लेबाजों को इस बार गेंद को उछालना चाह नॉट क्वाइट मिडले गेंद फॉलो थ्रू में गेंदबाज पहुंचे अपने दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए SBR ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ IND ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ कबीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा स्टंप्सों पर गेंद इस वक्त टकरा शायद विकेट कीपर ने गेंद को विकेटों को चटकाया था गेंद को कलेक्ट करने के बाद लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित सही निर्णय इसको लेकर अंपायर का रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला 3 गेंदें सिर्फ इस ओवर में फेंकी जा चुकी है और कबीर एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर 4 रनों के लिए no need to run for that and cross easily over the fence after 1 bounce for a boundary fantastic struck came from the bat of सबीर और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 18 विदाउट लॉस एंड स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर तो बातचीत इस वक्त चलते हुए खिलाड़ियों के बीच में और खेले जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है लास्ट बॉल लेफ्ट 1 ball left in this over 1 wide ball by the bowler in this over so still a ball left in this over 18 on the board without losing any wicket scored by Diamond KC Road और अगली गेंद ये गेंद बेहतर गेंद थी क्विक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स but the batsman got his back foot onto his crease at the last moment and because of that he survived 2 overs gone 18 on the board and now still 37 more to get in remaining 18 delivers the target the equation seems to be stiffer and stiffer now for Diamond KC Road In fact, it's a 24 balls remaining, 37 runs more now they have to score for victory. और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ समझदार गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार अफीफ जो कि लंबे कद के खिलाड़ी और
फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए तो ओवर के खेल के पश्चात तो फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर मैदान पर इस वक्त छा चुके हैं। केएफसी ट्रॉफी 2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है कोनाजे फ्रेंड्स क्रिकेटर्स ने टीम केएफसी के नाम पर, और इस देर रात में भी ये श्रृंखला ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए तो गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए समर्थक फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, फैंटास्टिक डिलीवरी, विकेट कीपर ने एक बार फिर से विकेट उखाड़े लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 18 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का तो समर्थ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और समर्थ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। समर्थ अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, इस बार बेहतरीन गेंद थी, फाइन निकल चुकी, बेहतरीन फील्डिंग, फैंटास्टिक फील्डिंग, लेकिन यहाँ पर देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं नहीं, और नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर एट द सिचुएशन। तो तीसरे अंपायर के लिए कुछ इस वक्त काम आन पड़ा है रनआउट का, तो देखते हैं यहाँ पर स्टंप्स पर जब निशाना टकराया था, डायरेक्ट हिट लगा था, तब बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं। No doubt is the call and the batsman survived. एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है, 20 for the loss of no wicket in the over number 3 in progress। और गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार समर्थ। तो इस वक्त जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो समर्थ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नॉन स्ट्रोकिंग के बल्लेबाज अपने जूते के फीते को बांधने के बाद शूलेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बांधने के बाद तैयार, और समर्थ दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए लेकिन स्ट्रोक को कनेक्ट करने में सफल, बल्ले का बाहरी किनारा नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 21 रनों पर, 21 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। समर्थ फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लेग स्टंप बाहर एंड इट्स गॉन फाइन, he won't get that one and it goes over the fence for a boundary, 5 wides into the account of the batting side Diamond KC Road। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी, देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त फेंका था, शॉर्ट फ्रंट लेग फील्डर की बाईं ओर से गेंद निकली और काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक वो पहुंच नहीं पाया, गेंद सीमा रेखा को पार कर चुके, डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, 5 वाइड्स एडेड टू द टोटल, और इन रन पंचक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 29 टू गेट in remaining 21 balls, 29 रन चाहिए, 21 गेंदें बाकी, और समर्थ इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बेहतर गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। प्लेसमेंट तो कुछ खास सही नहीं, तो इस वजह से सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर, 27 without loss. Slowly and steadily this opening partnership is now building up between Sabir and Hafif। और समर्थ फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त
शॉर्ट गली पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. इट्स 28 नाउ एंड नाउ स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. एक गेंद अभी भी बाकी. 13 balls left, 27 runs needed. In fact, 19 balls left and 27 runs needed. रिवर्स शॉट खेलना चाहा विकेट कीपर के हाथों में गेंद, लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाया. बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट. 3 overs gone, 29 on the board and no wicket lost. Good progressing here for Diamond KC Road and still 26 more to get in remaining 18 balls. और देखते बचे हुए 18 गेंदों में डायमंड केसी रोड के बल्लेबाज बचे हुए 26 रनों को बना पाते हैं या नहीं. इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ. माइक्रोफोन पर आगे का अखुलेखार सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा. SBR friends after one the toss they elected to bat first against IND Warriors, and because of that I request all the elected to field first. In fact, SBR friends after one the toss they elected to field first against IND Warriors, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. Thank you. So thank you very much, Gopi, and 26 more runs required for the victory in 3 overs for the team Diamond KC Road. And the battle is on for the victory between these two teams, and both the teams has got opportunity to win this match. And wait and see how well Diamond KC Road will go to get this 26 in 18 balls, and wait and see how well that team the against team will go. Al Unain will go into restrict the runs. So up two batters out there in the middle. So far opening batters laid the foundation, played a very good game of cricket for the team. Al Hunain, Shabir and Afif, the very good opening stand for the first wicket. But job which is not yet over. They need to get another 26 runs from 18 balls, and bowler Azhar will go into start his fresh over left arm round the wicket. A beautiful delivery, fantastic one. Just we are talking about a very good foundation laid by the opening batters, but in a very important stage of the innings, the batter Shabir is back into pavilion and cleaned him up with the beauty of the delivery from the bowler Azhar, and he got a vital breakthrough for the team Diamond KC Road. Diamond KC Road, of course, they lost the wicket and got a breakthrough for Al Hunain. Now 26 balls remaining, 17 runs required for the victory. Time is exactly 3 o'clock in the late night, and of course you can't say it's a late night. In a few hours we need to say good morning. And the good start from Azhar on the first ball itself. He got a very important wicket for his team, and Shabir is the batsman back into pavilion, and Ashik replacing the place of Shabir. Takes a fresh call from umpire Arif and Jokate, and here is a left arm around the wicket bounce. Beautiful delivery, equal well played by the new batter. Misfield there by the fielders. They will go and grab this opportunity to convert that single into 2. Then couple of runs which is conceded. With that couple of runs covered, moves on to 31 for the loss of 1 wicket. 24 more runs required for the victory in 16 balls. Azhar bowling left arm around the wicket to Ashik. Oh, full toss delivery, lofted that one, and he will go in to find the fielder. Down at wide is long, and couldn't manage to hit that one pretty well, isn't it? Even though that is a juicy full toss, but he's just choosing the one of the longest part of the ground. Wide is long on. Have a look at it. On shuffled, almost drags the ball. That's why he couldn't manage to get the timing behind the stroke. The full toss, but outside the line of off stump, too far. Batsman almost dragged the ball into that wide long on region, and fielder taken a very good running catch. 2 wickets fallen in this over.
And the bowler Ashik getting one more wicket, Azhar getting one more wicket here. 2 wickets in 3 balls. 24 more required for the victory in 15 balls. Diamond KC Road just lost the momentum what they got in the first 3 overs when they're going very well with the 29 runs without loss of any wicket. But this over, really a good comeback here by the bowlers of Halunen. Bowled some Halunen through Azhar. They back in the game. New batter. Ramesh. This time beautifully bowled and ball missing everything. Running down to deep third man but defined leg region. They're looking for the second. In comes the throw directly and is gone. By call by umpire, they're missing everything. I've already told that ball is just missing the wicketkeeper's hand. And a very good piece of fielding there by the fielder, isn't it? Absolutely good work. And directly taken place, so that umpire definitely is in the right position to give that wide. And no way for Ramesh to survive from that throw from the wicketkeeper. 31 for the loss of 2 wickets. Target is going to be 64. 24 more runs required for the victory in the remaining 15 balls. New batter walk towards the middle for 2 deliveries left in this over. 14 ball line, 23 more runs required for the victory. Oh, lovely delivery, beautifully bowled there by the bowler. Azhar really brought this team back in the game with some very good and tidy line. Again, perfect incoming delivery. Of course, he's bowling a leg cutter, but it becomes incoming delivery off cutter for the right-hand batsman. And so far, he bowled very well and putting some pressure onto the batsmen of Diamond KC Road. Last time in this over. Azhar, so far it's a great over. Reverse hip, catch it is a call. 1 more wicket is back into pavilion. 3 wickets in that over of Azhar. And what a fantastic bowling display here from Azhar. Just wanted to get that one down to third man division, but couldn't manage to keep it down. Ball went. And wanted to get that one down to third man division. Ball went straight to the hands of fielder, making no mistake at all. Now last 2 overs remaining, and they needed another 23 runs to win this match. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದವರು ಆ ಒಂದು ಕಸವನ್ನು ತಾವುಗಳದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ. Two overs remaining, 23 runs required for the victory. Right arm over the wicket, balls this time driven, bowler's back drive, and the bowler got a hand onto that, and after maybe ball is kissing his finger, went into deep long on region, powerfully driven back by the batter, and now 22 required from 11 balls.
22 required from 11 balls. Opening batter of his still is in the middle, and one more single added to total. And with that single score, moves on to 34 on the board. 21 more runs required for the victory in 10 balls. This time is gone, bowled him. The batter looking for the expansive drive. Got outside edge and a ball fell into the stumps. And a good innings of Hafiz is back into pavilion. Absolutely perfect delivery bowled by the bowler of team All in Krishnapura. The back in the game very strongly. Especially the other bowled a fantastic last over. And because of that, the target is looking very stiffer and tougher for team Diamond KC Road. Nine balls, 21 required for the victory. The next match will be played between IND Warriors versus SBR Friends. The captain of SBR Friends won the toss. They elected to field first. And then midfield there by the fielder, and one run taken. Good return by the fielder. Azhar this time doing a fantastic job here, but not good enough to. And out, which is called by umpire. No, by call by umpire. It's not. It's out as well. Run out. And by call by umpire. A good fielding time for the fielder. Have a look at that one. Effort there from the fielder. Even he's lost his balance, but he managed to return the ball. And absolutely not in the picture. The batsman well short of his crease. "20 runs required from 8 balls. Sajjad balls, driven straight to the answer fielder, one more wicket. The wickets are tumbling like house of cards. At one stage they're 29 no loss, and now they're 35 for the loss of 7 wickets. They're strongly back in the game. The team Al Hunain bowled some very good overs. 7 balls, 20 more runs required for the victory. Last delivery. Great over is in progress. One more. Sajjad balls. Nicely plays it down to deep square leg region. Fielder is there in the deep square leg. Slight a bit of fumble from the fielder, so they will go and grab the opportunity to come back for the second. 18 required from last over for team Diamond KC Road if they wanted to win the match. Need to get 18 runs in 6 balls. So timed out call by umpire. It's going to be a one ball, one fielder need to be inside the ring. 18 required from 6 balls. Already fielding team exceeds the time. They need to bring one fielder inside the ring now. 5 fielders inside the ring. And the bowler will go into ball the last over. Sinan bowls the last over.
driven, got outside the edge of the bat. A shot tournament fielder feeds the ball, and both the batters completed a single. 17 required from 5 balls for Diamond KC Road. Driven back to bowler, opportunity of run out. It's going to be one more wicket. One more wicket is back into pavilion. It's 38 for the loss of 8 wicket. 29 no loss, 38 for 8. Seventeen required from 4 balls, and the new batter came into middle after that run out. Diamond KC Road are now looking in trouble and needed some big shots straight away. 3 maximum required for the victory, because 17 which is required from 4 balls. Driven that one extra coverage, and they will going to complete the single there with their single scope and moves on to 39. 16 required from 3 balls. Left-hand batter is on strike. 16 required from 3 balls is the last opportunity for the team. Decider delivery. A lovely delivery indeed. Fantastic one. Appeal for the stump out. Umpire referring for the third umpire. Is gone. So 39 for the loss of 8 wicket, and the last
last wicket of team Diamond KC Road in the middle. 16 required from 2 balls. 29 no loss, 39-9. Adding just 10 runs, they lost 9 wickets. Dramatical collapse in the batting department of team Diamond KC Road. And what a good comeback here by the bowlers of All Sinan. All Hunain in fact. And here is the next ball. Going for the drive, misses the line completely. Last ball remaining to complete the formalities of this game. And I request the next match playing team, please get ready to enter the ground. Plays it very nicely down to fine division. Fielder chasing the ball and they will go in to collect that one just inside the boundary line. And they completed only single. It's not good enough. Congratulations for all Hunain for their comfortable victory against team Diamond KC Road. Congratulations. And we are coming to the next match. SBR Friends versus IND Warriors. SBR Friends, after winning the toss, elected to field first. I request SBR Friends, please enter the ground. At the same time, I request opening batsmen of IND Warriors, please enter the ground immediately for the next match. And organizers, absolutely, they're doing a good job here in this late night. They are giving some help to make the pitch clean. And thank you very much for the organizers, some volunteers. They are the one responsible for the success of this cricket tournament. ಅಲ್ಲಿ SBR ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ IND ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
So the match starts between SBR Friends versus IND Warriors. So SBR Friends have won the toss, they elected field first, and we are just waiting for the first ball of the match. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार ना, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए. And the first ball of the match is now coming up. Right arm over the wicket, here he bowls. Just making some field adjustments at the situation. And now once again, here he comes. So first ball comes, पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड के साथ गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर कर चुका है, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को स्कूप किया, मौका इस वक्त कवर पॉइंट पर इस कैच को लपक लिया गया है फील्डर द्वारा. Not quite to get that one from the middle of the bat at the last moment. Square of the wicket गेंद को स्कूप किया था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं, और इस बीच विकेट यहाँ पर गिर चुका है. फर्स्ट विकेट फॉलन, एंड नाउ IND Warriors lose their first wicket. It's 1 for 1. So new batsman, number 3 batsman is now comes out to the middle. सौरव एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार है, और मोइन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा, लेकिन अंतिम स्ट्रोक के क्षण में अपने स्ट्रोक्स को उन्होंने रोक लिया था. और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है, कुल मिलाकर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सौरव एक बार फिर से सामना करते हुए मोइन की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ड्राइव किया सौरव ने, इस वक्त गेंद पहुंची से मिड ऑन पर, नॉट क्वाइट मिडिंग इट, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट है इस वक्त किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स द्वारा. जनाब बदरुद्दीन इनके सारथ्य में, और निश्चित रूप से यहाँ पर इस सुबह के वक्त, जो कि दिन धीरे धीरे सुबह की ओर बढ़ता हुआ 3:30 इस वक्त बचते हुए, निस्संदेह यहाँ पर आज का दूसरा अंतिम मैच, सेकंड लास्ट मैच ऑफ टुडे मॉर्निंग इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को बड़ा खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट, इट माइट बीन कट ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, खूबसूरती के साथ गेंद को बोला था ऑफ द टोज. 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और मोइन फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त विजय सामना करने के लिए तैयार. अगली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट उड़ा दिया, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. तो निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, तो इस वक्त IND वॉरियर्स के लिए कम से कम 40 का आंकड़ा निर्धारित 6 ओवर में उन्हें
40 के आंकड़े तक पहुंचना होगा या फिर 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा। और जहां तक सवाल इस वक्त है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट पे गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, द बॉल केम along the ground and there is no possibility of any run. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಅಲ್ ಹುನೈನ್ ತಂಡದ ಅಜರ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ. Azhar of Al Hunain Kastapur adjudged man of the match. I request Mr. Ajay Azhar of Al Hunain to please go to the stage and receive the man of the match award from the one of our organizers. इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर खूबसूरती के साथ 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. फर्स्ट ओवर completed, 7 on the board. Mixed start for IND Warriors after being losing the toss and put it to bat by SBK friends in the early morning match. In this early morning match, and they made a mixed start. In fact, it's 7 for the loss of 1 wicket after completion of first over. So let's start some fresh proceedings from that side. And दूसरा ओवर इस वक्त IND Warriors की पारी में शुरू होता हुआ. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए इस वक्त गेंदबाज, और जहां तक का सवाल है इस वक्त पावर प्ले का, तो दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ. ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही थी. गेंद को छोड़ दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर कर वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है. और सुहेल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चुके इस बार गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थे, और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और सुहेल अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय सामना करते हुए इस वक्त ये गेंद ट्राई किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट. इनफैक्ट जब तक इनको शॉर्ट थर्ड पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ IND वॉरियर्स, और इस बीच सुहेल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में सजावट इस वक्त करते हुए, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. सुहेल सौरव के लिए अगली गेंद ऑफ द टोस. गेंद को खेलना चाहा शॉट फॉल की दिशा में फील्डर गेंद को फील्ड करे, जब तक पहले फील्डर की मिस फील्ड के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के बिना 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर प्रगति पर. सुहेल एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. It's 11 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Still 3 balls left in this over. और सुहेल की ओवर की अगली गेंद
इस बार just gone for drive, not succeeded. The ball came almost along the ground. और सीधा पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर। एक धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ IND वॉरियर्स। सोहेल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 12 रनों पर। 12 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Still a ball left in this over. एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और सोहेल इस ओवर में अंतिम बार 100 रनों के लिए गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ उभरता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, शॉट स्क्वायर लेके दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर। 13 for the loss of 1 wicket, 2 overs had been bowled, slower progressing here for IND Warriors and still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings. Next match will be the last match of today's morning. In fact, the match will be played between Agrimar IND versus KFC Konaje, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Agrimar IND ಹಾಗೂ KFC Konaje ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. तीसरा ओवर शुरू होता हुआ, थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स. असगर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. हियर ही कम्स फर्स्ट बॉल. असगर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 14 for the loss of 1 wicket at the start of the third over in fact. और असगर की ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. ये गेंद नो बॉल का इशारा, वाइड और फिर नो बॉल, तो फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. तो फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और देखना है कि इस फ्री हिट गेंद का बल्लेबाज किस तरह फायदा उठाते हैं. तो असगर अपनी पहली सही गेंद की तलाश में इस वक्त तैयार, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. Left it. This time I think it taken just inside the fence after 1 bounce in fact. स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके. 2 रन स्पीड दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके. पहले ऐसा लगा कि गेंद शायद सीमा रेखा को पार करेगी. देखिए इस वक्त फ्लटर वर्जन पर सौरव ने गेंद को उछाला था और गेंद पहुंची थी इस वक्त चंद टिप्पो बाद डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में सीमा रेखा के अंदर. कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. असगर फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस स्कूप किया इस वक्त सौरव ने, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. 4 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी और सौरव ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. विजय सामना करने के लिए तैयार और असगर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. बाएं हाथ के विजय के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा. बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटकाया लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 19 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress.
जहां तक सवाल है अगली गेंद का, ये गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन एंड दिस इज द विकेट नंबर सेकंड फॉर IND वॉरियर्स. मच स्ट्रेट लाइन, गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके और आखिरकार गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिड ऑफ स्टंप पर जा टकराई. गिलिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. 15 रन पर दूसरा विकेट गिर चुका है. $18 runs. In fact, the score is 18. I beg your pardon. 18 for the loss of 2 wickets. तो असगर धीरे धीरे अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त प्राप्त करते हुए और इस बीच तैयार अंपायर विकेट को इस वक्त सही करते हुए. मैदान पर दर्शक जो काफी हद तक कम हो चुके हैं, कुछ हद तक गिने चुने दर्शक इस वक्त नजर आते हुए. सुबह के 4 यहाँ पर बचते हुए निस्संदेह अगर ठीक तरह से कहा जाए तो 3:40 यहाँ पर बच चुके हैं. कुछ हद तक ठंडी का एहसास यहाँ पर खिलाड़ी और दर्शक दोनों करते हुए इस बीच ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ. एक्स्ट्रा कवर पर वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. को मिलाकर इस ओवर में गेंदे फेंके जा चुके हैं 4 और 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त असगर तैयार सामना करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज सौरभ फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सौरभ के लिए ये गेंद रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में. गेंद पहुंची 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा और आखिरकार दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 20 for the loss of 2 wicket and a third over has been came to an end. 3 overs completed, 20 on the board, half the way back, 2 wickets lost. 3 overs remaining in overall calculation in their innings. अब देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. तो जहां तक सवाल है चौथे ओवर का, तो इस वक्त चौथा ओवर शुरू होता हुआ और देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर उतरते हैं. So what a fantastic tournament is now progressing in the name of KFC 2024, which proudly organized by Konaje Friends Cricketers Team KFC. जहाँ तक का सवाल है, just talking about the next match, Agrimar IND will take over KFC Konaje the next match, and that will be the last match of today's morning. Is now coming up live and exclusively right in front of you right after this match. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है इस वक्त अब्दुल्ला गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ. पहली गेंद लेकर तैयार ऑफ सबसे बाहर कट किया इस वक्त. He's got outside edge on that at the last moment. He's got a single for that stroke और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर. It's 21 for the loss of 2 wicket at the start of the 4th over in fact. और गेंदबाज अब्दुल्ला इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए सही गेंद घोषित. गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही निर्णय अंपायर फयाज द्वारा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर. 21 for the loss of 2 wicket. और अगली गेंद ये गेंद ड्राइव करना चाहा, बल्ले का बाहरी गेंद टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर. 22 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Still the runs are coming in singles now
for the batsman. Isban, fantastic delivery, and he just got the lead of the batsman. Much straighter line, just wanted to play that one, and the ball after being beating is a batted leg. It passed just wide off his legs and stuck to his off stump. Bills are disturbed, and that is the wicket number 3. So have a look at this in the replay. किस तरीके से हुआ था राउंड द विकेट गेंद को फेंकी गई थी अराउंड द स्टंप्स. तो जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज का, तो क्रीज के कोने से इस गेंद को फेंकी थी और बेहतर गेंद इस वक्त गेंद को खेलने के प्रयास में चूंकि पूरी तरह और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद उनके बल्ले को वर्जित करती हुई सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराए. बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, तो इसी के साथ विकेट गिर चुका है. सौरव एक बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है. He is out for 7 and now it's 22 for 3. और इस बार ड्रॉप्ड ऑन इस फॉलो थ्रू और इस बार शायद 500 रुपए उनको मिल सकते थे अगर वो इस कैच को लपकते, लेकिन यहाँ पर ऐलान नहीं किया गया था, अनाउंस नहीं किया गया था. तो इस वक्त बच चुके हैं फॉलो थ्रू में. तो अब्दुल्ला के लिए 500 रुपए का नकद पुरस्कार घोषित किया है. किसने घोषित किया है? मैंने नहीं, बशीर एसपीआर ने 500 रुपए का नकद पुरस्कार घोषित किया. 500 रुपीज कैश प्राइज फॉर अब्दुल्ला डिक्लेयर्ड बाय बशीर एसपीआर. तो इस बार गेंद को इस वक्त खेल दिया शॉर्ट बैन पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर. एंड फोर्थ ओवर हैज बीन गेम्ड 24 ऑन द बोर्ड एंड 3 wickets lost. In fact 24, 3 wickets down, 4 overs completed with just 2 to go in their innings. So Suhail, the bowler, who will start some fresh proceedings from the commentator box, and और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज सुहेल गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. जहां तक का सवाल है बल्लेबाजी का, तो स्ट्राइक पर इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार सचिन और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए सुहेल सचिन के लिए. Off cut again, bowled out, just gone for a big one, losses off stump. One more wicket fallen, Sachin departs, much straighter line, and the batsman and the bowler just got the rid of the batsman in this delivery. So one more wicket fallen, they are looking in trouble for IND Warriors. It's 24 for 3 now, at this 24 for 4 now in fact, at the situation with just 11 balls to go in their innings. न्यू बैट्समैन नागराज इस वक्त कम्स आउट टू द मिडिल और सुहेल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नागराज के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद सुहेल अपने ओवर की अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद ऑफ कटर गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए बल्लेबाज नागराज ने और इस 1 रन के साथ उनका खाता जो कि खुल चुका है कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट
एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इनफैक्ट। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सोहेल और सामना करते हुए इस वक्त प्रसाद। फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक चलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है, ये जानते हुए कि प्रसाद बाएं हाथ के बल्लेबाज है और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चूके गेंद को उछालने के प्रयास में विकेट कीपर ने विकेट जरूर उखाड़े, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। यहाँ पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। ಅಗರಿಮಾರ್ ಐಎಂಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋನಾಜೆ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಗರಿಮಾರ್ ಐಎನ್ಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो सुहेल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करते हैं खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज तौर पर इस बीच रन से मिलेंगे 2 और 2 रन यहाँ पर मिल चुके हैं। और विकेट कीपर तेजी के साथ डाइविंग लगाते हुए विकेट जरूर उखाड़े, लेकिन बल्लेबाज के पास समय था कि 2 रन के साथ अपने अपने छोर पर वापस लौट सके। हम लोग कहते रिप्ले देखिए किस तरीके से थ्रू पहुंचा था, काफी वाइट डाइविंग लगाई, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं और सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। 27 for the loss of 4 wickets in the over number 5 in progress। एक बार फिर से अंपायर स्टंप्सों को सही करते हुए बार बार इस वक्त विकेट कीपर स्टंप्सों को उखाड़ते हुए और बार बार रन आउट करने की कोशिश करते हुए, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। तो इस वक्त गेंदबाज तैयार सुहेल दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रसाद के लिए। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला और गेंद सीधे डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में। The placement was too wrong and because of that the batsman paid the penalty for that। और प्रसाद का विकेट यहाँ पर गिर चुका है और देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, खूबसूरती के साथ तो नहीं, और प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था। डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया, कैच ले लिया गया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इट्स 27 for 5। So number 7 batsman is now comes out to the middle for IND Warriors। और अंतिम बार इस ओवर में सोहेल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज नंबर 7 बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए सोहेल की गेंदों का। Last time driven perfectly struck down to long off, in fact they're looking for the second and this time I think just we have to wait for the third umpire। So one more call for the third umpire, just we have to wait and see। No one is there। So he's gone. He's just many miles out from the crease and one more wicket fallen. So 5 overs completed, 28 on the board, 6 wickets lost, and now just a last over remaining in our calculation in their innings।
So umpire signaled that the fielding side exceed the time limit. Because of that, one fielder now brought inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. For KFC Trophy 2024 जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम ओवर का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अंतिम ओवर को लेकर इस वक्त तैयार. Aziz starts the first proceedings from that side and ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ करना है बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए और अंतिम ओवर आईएनडी वॉरियर्स की पारी में शुरू होता होगा. दर्शकों की संख्या काफी हद तक मैदान पर कम हो चुकी है और मैदान पर कुछ गिने चुने दर्शक ही इस वक्त नजर आते हुए. सुबह का वक्त लगभग 4 इस वक्त बजते हुए. ठंडी का एहसास दर्शक और खिलाड़ी दोनों इस वक्त करते हुए धुंध मैदान पर गिरते हुए ड्यू जिसे कहते हैं. इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. तो ड्यू इस वक्त मैदान पर गिरते हुए और निश्चित रूप से यहाँ पर ठंडी का माहौल इस मैदान पर छा चुका है. इस सेंट्रल मैदान केंद्र मैदान कोनाजे में. और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार है. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लेकिन लॉन्ग ऑफ पर मिड ऑफ पर फील्डर गेंद के जाते हुए और आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया गया है. One more wicket follow, just trying to go on for a big one, not succeeded. The ball calling is leading edge and high in the air and comfortably taken at mid off by the fielder with a perfect judgment. For the loss of 7 wickets, 4 balls left in their innings. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार जबकि नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका. नंबर 9 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल फॉर आईएनडी वॉरियर्स. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता चूके और गेंद को विकेट कीपर ने आगे क्यों रखकर फील्ड कर लिया. बेहतर गेंद थी गेंदबाज के, रन से नहीं मिला. अजीज एक बेहतर रन लेंथ और लाइन के साथ 3 गेंदें इस ओवर में अब तक फेंक चुके और अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरती के साथ तो नहीं लेकिन एक रन बल्लेबाज को जरूर मिलेगा. एक्स्ट्रा कवर 20 गज के दायरे के कुछ बाहर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है और इस बीच दूसरा रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज लेकिन अंतिम क्षण में अपने इरादे को बदलते हुए देखा कि थ्रो वहां पर पहुंच चुका है गेंदबाज के हाथों में. Exactly 30 the score. 2 balls left. Last 2 balls left in their innings. Aziz कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर तब विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके. बेहतर गेंदबाजी नॉन स्ट्राइक रन पर मौका लेकिन इस मौके को गवा चुके और इस बीच रन लेना और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है. स्टम्प्स को गेंद के साथ यहाँ पर उठा चुके थे गेंदबाज और इसी के साथ रन आउट हो चुका. विकेट नंबर 8 डाउन एंड नाउ इट्स 30 for the loss of 8 wickets. Last ball remaining in their innings. Next match will be the last match of today's morning will be played between Young Reliance versus KFC Konaje, and because of that I request once again all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a silent official chart. The last ball of the innings is now coming up. ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा पॉइंट पर गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा, दूसरा रन लेना चाहते लेकिन नहीं मिलेगा. एंड their stipulated overs are now completed.
31 the score, scored by IND Warriors for losing 8 wickets in the stipulated 6 overs. And now the target for SBK friends is 32. They have to score for victory with a required rate of exactly 5.33 runs per hour. With the help of 10 wicket, the present equation shows for the 32 they have to score in 6 overs, and their inning starts now within a just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब एसपी के वॉरियर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. So opening batters are walking towards the middle for SBR. The target for SBR is 32 to win this match in the stipulated 6 overs, and wait and see how the SBR will going to get this total. And SBR, here is an announcement from SBR Basir. If any player, any batter will going to get the boundary and 6, they will going to get 500 rupees. And opportunity for the batters, and straight away signal coming from umpire Satish Mudubidre, and Fayaz at non-strikers end, and in that replication in that strikers end, that's called like umpire. The Pritham will going to take the strike of the bowling of the bowler Charan. So 32 is going to be target. Here is a chasing will going to start. The first over of the power play, and long on and mid wicket to the two fielders in the deep. First ball, lovely delivery, just a little bit outside the line of leg stump. Batsman wanted to get that one in the onside region, missed it completely. Long on and deep extra cover, the two fielders in the deep, and Sharan will go into ball again. Swept that one, straight to the answer fielders. Collect fielders misfielded, so that both the batters completed their first run. First run from the bat of Pritham, and first run for SBR friends, one without loss of any wicket against team Shailu. So again that one more dotted delivery from the bowler Sharan. Starts well, and they know that they need it, depending a small total of 32 for opposition, so that they need to get a very good start. Sharan produced 3 very good deliveries, left arm around the wicket balls.
Again, edging it down to short third man. They're going for the single chance of run out there. Umpire referring for the third umpire to get the decision of run out. Looks like it's going to be a very close one. And wait and see what could be the result here. And it's a close one, absolutely close one. And it's not so easy in the naked eye to see. But very good throw coming from the field. The wicketkeeper tried to make the run out and well, it's going to be a very close one. That's why umpire asking for the third umpire to see that whether batsman is out or not out. Sometimes it's very difficult because the dust which is coming out of the ground when the batter trying to drag his bat, so that sometimes it's so difficult to get the result when it's going to be a touch and go. Yes, he's gone and just a shot of his crease. He tried his level best to drag his bat, but unfortunately couldn't manage to make it because on the line it's not good enough for the batter to save his wicket. As per the rules and regulation of the cricket is concerned, that some part of the bat need to be inside the line, and on the line certainly it's going to be difficult for the batter to save his wicket. And wicket number first, which is back into pavilion, it's one for the loss of one wicket. Team SB are friends. A good start from young Sharan so far. In this very cold morning, absolutely. We are just feeling a slight bit of cold morning dew factors comes into play. New batter walking towards the middle. Safwan is a new batter in. Last time in this replication, for fifth time in this over. Sharan to ball to the new batter, Safwan. Left arm round the wicket, driven beautifully. Oh, straight to the hands of field. Looks like once the batsman got that one right from the middle of the bat, but the placement is not good enough. Unfortunately, it's choosing one fielder out of the two in the power play. Have a look at that one in a replay. Little bit short outside the line of off-time. Batsman lofted that one. Good catch taken there by the field right, wideish long off. The wicket number 2, which is back into pavilion. Good comeback here by the bowling team. IND Warriors are getting some wickets in the first over itself. One for the loss of 2 wickets, making things a little bit harder. Even though 32 it looks to be the manageable target, but couldn't manage to get the good start here. 2 wickets already back in the pavilion. Sharan produced a vital breakthrough for his team. New batter walking towards the middle. 21 more runs required for the victory. 21, correction. This time opportunities have run out. And throw coming from the side of the batter is in the same end, both the batters. And one more wicket is back into pavilion. So after completion of over number 2, chasing a total score of 32 to win this match, it's a 10 for the loss of 2 wickets. Still they have to get another 22 runs to win this match in 4 overs. 24 balls, 22 runs required for the victory. Still the match is in balance.
So first over, 2 over of the power play, and equal result. 3 wickets taken there by the team Indo Warriors. No change in bowling. Shravan to continue because of this very good first over. Picked up 2 wickets by conceding 2 runs, so that he wanted to continue from the committee box, and Aziz will going to take the strike. Shravan. Shaurav going back to deep point region. Sharan to continue. I request the fielding team, please make it fast. Right arm over the wicket, Shravan. Left arm. Wow, beautifully bowled. Looks like the opportunity is created for the wicket keeper, but he missed it completely. And the dotted delivery, what could be the, they got a single in the form of bye. And with that single, score numbers on to 11 for the loss of 3 wicket. Sharan continues from the commentary box, and left arm around the wicket to Asghar. Lovely leg cutter, but lack of placement. A good piece of fielding there by the fielder. Asghar tried to get that one into the extra coverage and fails to get the placement right. Ball went straight to the hands of fielder. Score remains on 11 for the loss of 3 wicket. Asghar again facing next delivery. Driven down to deep long on, straight down the ground. This time they will going to come back for the second. In comes a throw, and Sharan misses a throw from the fielder. They completed 2 valuable runs. (13) for the loss of 3 wicket. Good piece of fielding there by the fielder, but not good enough to stop that couple of runs. Sharan to continue. Score. 13. So 14, a little bit correction, has 14 on the board for the loss of 3 wicket. Left arm balls. A lovely delivery again outside the line of off stump. The wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Good comeback here by the bowler. Sharan so far has been very impressive in his line and length. After that he bowled a very good first over. Again he continuing that line and length in this second over as well. Slow delivery, the batsman off the backward cuts that one down to cover point region, and this time Saurav fumbled, so that batsman completed 2 valuable runs. With the 2 valuable runs, score numbers on to 16 for the loss of 3 wicket, and that means half of the job is completed. They need to complete another half of the job in 3.2 deliveries. Sharan seaming away from us, right arm, left arm, round the wicket, drives that one down to long on region. Not more than a single, quick fielding there for the fielder at deep long on.
And just a single, one more tidy over there from Sharan. 3 overs completed. After completion of over number 3, chasing 32 to win this match. The team SBR friends are 17 for the loss of 3 wicket. Another 15 more runs required for the victory in remaining 3 overs. "17 for the loss of 3 wicket, and they need to get another 15 runs to win this match. Five runs per over is the required run rate for team SBR. Pradeep brought into attack. Pradeep, right arm over the wicket, balls. Reverse catch, it is the call. Ball which is went in the gap down to deep cow point region before the fielder from deep back point region to run across to his right to field the ball, return the ball. Absolutely ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. Asghar played a very good reverse stroke, and he will going to get 2 for that. 19 on the board for the loss of 3 wicket. One more dotted delivery there from Pradeep. Third time in this over. Right arm over the wicket, bounce to Asghar. Top edge opportunity for on of the field, but no one will going to get that. Ball landed safely. They coming back for the second, and they made it quite easily in the end. Very lucky escape here for Asghar. Couldn't manage to get that into his middle of the bat. Top edge landed safely just over the bowler, and with that couple of runs, Konaje moves on to 21 for the loss of 3 wicket. 11 more runs required for the victory. For the team SBR friends are looks like they are in a driver's seat of winning this match, and Pradeep had to do something special in this particular over if they wanted to back in the game. Asghar to take strike. Went for the reverse sweep, wicketkeeper misses it, and they will go for a single bike called by umpire. 22 on the board, just 10 more runs required for the victory. Ten required. Aziz back on strike. Went for the cross-batted shot. Wicketkeeper misses it. One more bike called by umpire. The warning exercise here for umpire Fayaz. 23 for the loss of 3 wicket, and 9 more runs required for the victory in 13 balls. Again, reverse sweep, played it one nicely down to deep back point region, but this time they will going to get single for that. Pradeep completes his over. 4 overs completed. After completion of 4 overs, is 24 for the loss of 3 wicket. 2 overs remaining, 8 runs required for the victory. Still that 500 rupees is waiting from Bashir of SBR announced that 500 rupees for every boundaries and 6, but still there is no boundary and 6. So next match, the last match, Young Reliance takes on KFC Konaje. I request the 2 teams captain please be reported here for the tossing ceremony. Team Young Reliance as well as KFC Konaje.
run to total, and with the addition of that single score, Namoza onto 25, 7 required from 11 balls. Bowler will going to try for his level best to keep the momentum. Again, lovely piece of fielding, but not good enough, I think so. No, umpire says not out, and one more run added. And with that, the single score was under 26 for the loss of 3 wickets, 6 required from 10 balls. So 6 more run required for the victory, and the bowler will going to continue from the committee box end. Away from us, right arm over the wicket. Very interesting kind of cricketing stroke. Cotton ball is taken place. Absolutely. There's nothing a stroke, just walking towards that ball, and wanted to get that one very fine. But batter missed it completely. Ball which is carried to the wicket for the bowler. Still 6 more runs required for the victory from 9 balls. Young Lions winning the toss and against KFC Konaje, the last match of the day number 1 of this prestigious cricket tournament. Still, they need to get 6 runs and to get the place in the next round. SBR friends are again place it down mid wicket. Oh, and opportunity of run out, overthrow, and they will going to grab this opportunity to come back for the second. And with that, a couple of runs scored, numbers under 28. And 6 more runs required for the victory. 4 more runs required for the victory. 28 means 4 required for the victory from 8 balls. Just a 4 required. 8 balls remaining. Right arm over wicket balls. Driven lack of placement. Set it as a field. A chance of run out there. And it's going to be out. 1 more wicket is back into pavilion. And ball went straight to the hands of fielder. So for the next match, toss which is on by the team Young Reliance. They are elected to field first in the last match. Four required. New batter walks towards the middle. This time ball hitting the umpire, and I think that could be a boundary otherwise. And umpire Payas couldn't manage to avoid that stroke from the batter. 3 runs required from last over.
So 3 required from last over. The bowler will going to try his level best to stop that 3 runs. 500 rupees still remaining. And now I think it's going to be a 500 rupees into the pocket of the batter who got a winning run at last. And Bashir is very happy that the 500 rupees into the pocket of the batter who got a boundary in the last the first delivery of the last over. Congratulations for the SBR friends. Hard luck, IND warriors. Couldn't manage to restrict these runs. And we are coming to the last match of the day number 1. SBR friends takes on team Young Reliance takes on KFC Konaje for the last over. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇವರು ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Right, the final match, धन्यवाद सतीश. So final match is now going to start between Young Reliance versus KFC Konaje, the host team. And in this match, news is here from the center that the captain of Young Reliance afterward was elected to field first. And 6 overs match, 6 overs per side to play. And there is an announcement. If any KFC Konaje batsman, if any batsman of KFC Konaje hit a 6, he will get 1,000 rupees cash prize from Mr. Abhilash. If any batsman of KFC Konaje hit a 6, he will be rewarded 1,000 rupees cash prize from Mr. Abhilash, sponsored by Mr. Abhilash. So the first ball of the last match of today's morning is now coming up of this prestigious cricket tournament, KFC Trophy 2024, which is proudly organized by Konaje Friends Cricketers Team KFC. फर्स्ट बॉल पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, रिवर्स शॉट इस वक्त खेला खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद जाती हुई इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 2 रन बिना किसी नुकसान के और बल्लेबाज इस वक्त अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं. पहली गेंद पर शिबा इस वक्त खाता इस वक्त खोल चुके हैं और सपना इस वक्त करने के लिए तैयार. शिबा एक बार और हर्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिबा के लिए ये गेंद इस वक्त इस बार दैट इज अ फैंटास्टिक डिलीवरी. Luckily the ball doesn't hit the leg stump at the last moment, just gone for a mighty heave, not succeeded on the onside area, and finally he survived in this delivery. Good one from the bowler और again the runs इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार हर्षित गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ आगे बढ़ाते हुए शिबा इस वक्त सपना करने के लिए तैयार. अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बाउल्ड आउट, जस्ट लॉस्ट हिज ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट. मच स्ट्रेट लाइन और गेंद लगभग जमीन के सहारे आई थी और आखिरकार गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए. ऑफ स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. देखिए गेंद किस तरीके से आई थी और गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास भी चुके और उनका विकेट उखड़ कर गिर चुका है. स्कोर है इस वक्त 2 रन 1 विकेट के निशान पर. इट्स 2 for 1 इन द फर्स्ट ओवर फॉर KFC Konaje. तो इस वक्त अगली गेंद को इस वक्त खेलना चाहता और ठीक तरह से खेल नहीं पाया. वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर. तो अब किरण स्ट्राइक पर आ चुका है. किरण के लिए हर चौके और छक्के के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है. बशीर और हर्षित इनकी ओर से फॉर एवरी 6 एंड अ बाउंड्री, every 6 and a 4, 500 rupees cash prize declared by Mr. Bashir and Mr. Harshit. और हर छक्का कोई भी बल्लेबाज KFC Konaje का लगाता है तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार अभिलाष श्रीमान अभिलाष इनकी ओर से घोषित किया गया है. तो गेंदबाज किरण के लिए इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त छोड़ दिया था. देखा कि लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर किरण सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का स्वीप करना चाहा. बेहतर गेंद थी, अपील जरूर है लेकिन शायद बल्ले का ऊपरी भाग इस वक्त टकराया था गेंद पर तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए और बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज हर्षित इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए किरण के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा चूंकि और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. झाड़ पूछ कर स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करते हुए कभी कभी स्वीप करने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी स्विच हिट खेलने का
खेलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर सफलता दोनों मौकों में उनके पक्ष में नहीं आई है। और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज हर्षित एक बार फिर से तैयार, किरण सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर गेंद को उछाल दिया मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ 500 रुपए उनके जेब में गिरेंगे बशीर और हर्षित इनकी ओर से, जो किरण ने इस वक्त लगाया है। It's got a 500 rupees cash prize from Mr. Bashir and also from Harshit for Kiran to hitting a boundary. Have a look at this in the replay. किस तरीके से गेंद को डिस्पैच किया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेकर और डीप इन विकेट के दरमियान 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक किरण के बल्ले से। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 9 on the board, 1 wicket lost. So previous man of the match, man of the match award goes to Aziz, who batted very well, scored 8 runs and captured 2 wickets for conceding just 3 runs in his 1 over. And because of this all-rounding performance, because of this all-rounding performance, Aziz of SBR adjudged the man of the match. I request Aziz of SBR please go on to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. So that's the story about previous match, and now first over completed, 9 on the board, 1 wicket lost for KFC Konaje, and still in 5 overs left in overall calculation. In the second over starts in the next 2 over पर होता हुआ पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, अनजान गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद को खेलना चाहता, ठीक तरह से खेल नहीं पाया, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। सुबह के 5 इस वक्त बचते हुए, और जहां तक का सवाल है इस श्रृंखला का, तो इस प्रतिष्ठित श्रृंखला prestigious cricket tournament, under this prestigious cricket tournament KFC Trophy 2024, the last match of today morning is now progressing again. इस बार reverse shot, improvisation, gone fine and it's crossed, it might be cut off just inside the fence. बेहतर फील्डिंग वहां पर रिवर्स शॉट खेला था, लेकिन बेहतर फील्डिंग अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद को फील्ड करने में सफल, और इस मैच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। It's 12 for the loss of 1 wicket. तो नंबर बी गेंदबाज 2 गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार 12 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है, और गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और फिर से एक बार गेंदबाज यंग रिलायंस के गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को चलना चाहा, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन वहां पर गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए फील्डर, और इस वजह से बल्लेबाज दोनों 1 रन सुरक्षित पूर्ण कर चुके हैं। वहां पर निश्चित रूप से रन आउट था स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन वहां पर ठीक तरह से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए शॉर्ट पॉइंट पर, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ
1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए वरुण इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई हल्के से गेंद को इस वक्त डिफ्लेक्ट कर दिया था, नहीं गेंद लेग बाई पैर से लग कर आई थी। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, एक चंद चौके और छक्कों की इस वक्त बल्लेबाजों को सख्त जरूरत है इस वक्त अपनी टीम की रन की गति को एक्सेलरेशन देने के लिए। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाह बेहतर गेंद, हालांकि गेंद लेग से बाहर जरूरत है लेकिन रिवर्स शॉट ऑफर किया था इस वक्त बल्लेबाज ने, तो इस वजह से सही तरीके से मारने से सही गेंद घोषित किया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला इस ओवर में अंतिम बार। गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। 1 मोर रन एडेड टू द टोटल, इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट नाउ, 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ इन फैक्ट। और बल्लेबाज किरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया किरण ने, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर। 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति यहां पहुंच गई। 2 गॉन, 17 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट लॉस्ट विद 4 टू गो इन देयर इनिंग्स। तो ए, बी और अब सी जो कि गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए, तो अनजान गेंदबाज, तीसरे अनजान गेंदबाज और कमेंटेटर बॉक्सन की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए तीसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ केएफसी कोनाजे की पारी में। स्कोर है इस वक्त 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, जहां तक का सवाल है इस वक्त काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र अक्षर में यहाँ पर दिखा देता हुआ। 2 ओवर के खेल के पश्चात तो फील्डिंग के प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन से इस वक्त हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज किरण इस वक्त सामना करते हुए। फर्स्ट बॉल कम्स, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है शॉर्ट स्क्वायर लेग पर विकेट कीपर के पैर पर टकराने के बाद। और इस बीच 1 रन का इजाफा। और आई थिंक he's got a bat on that at the last moment by the batsman and now it's a leg by। बल्लेबाज के पैर से टकरा कर गेंद निकल चुकी थी 1 रन के लिए। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रन, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट वरुण इस वक्त सामना करते हुए बल्लेबाज दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 19 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन द प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट। एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा किया जा रहा है यूट्यूब के जरिए। इस मेगा शक्लागा केएफसी ट्रॉफी 2024 के अंतर्गत 2024 के अंतर्गत अपील ऑफ कटर गेंद थी लेग बिफोर के लिए, लेकिन बैक लेग पर गेंद जरूर टकराई थी, लेकिन गेंद लेग स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर निकलती हुई और सही तरीके से अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। 1 रन का इजाफा इस वक्त हो चुका है, 20 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। चौके और छक्के की सख्त दरकार इस वक्त अपने रन की गति को बढ़ावा देने के लिए इस वक्त बल्लेबाजों को। और अगली गेंद, ये गेंद उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा। और लेग बाय का इशारा यहां पर हो चुका है। लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर। जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर 3 लेग बाय रन और 1 वाइड रन इस ओवर में आ चुके हैं। और चौथी बार इस ओवर में गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन बल्लेबाज को सिर्फ मिलेगा। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर।
कुछ गिने चुने दर्शक मैदान पर इस वक्त नजर आते हुए। सुबह का वक्त लगभग 5 इस वक्त बजते हुए, ऑलमोस्ट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर चूके हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, शॉर्ट फ्रंट लेग पर 1 रन का इजाफा हो चुका। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 24 रनों पर। 2 गेंदें अभी भी बाकी। गेंदबाज ये गेंद सही गेंद घोषित, गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। और डॉट गेंद इस वक्त उनके खाते में जुड़ चुका है। अंतिम बार इस ओवर में अनजान गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार वाइड गेंद घोषित और एक और रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा। 25। तो इस वक्त रिव्यू के लिए मांग की है और देखते हैं तृतीय अंपायर, तीसरे अंपायर यहां पर क्या निर्धार देते हैं। So no mind, it's a fair delivery, right delivery call by the third umpire और कोई रन उनके खाते में जोड़े नहीं जाएंगे। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 25 रनों पर। 25 for the loss of 1 wicket and 3 overs completed. 3 overs completed, 25 on the board, 1 wicket loss for KFC Konaje, the host team, and Young Reliance conceded 24 runs in their first 3 overs, 24 for the loss of 1 wicket. 3 ओवर का खेल बाकी। अब देखते हैं 3 ओवर में जो मेजबान टीम है, होस्ट टीम है KFC कोनाजे, और कितने रन यहाँ पर बटोर पाती है। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ, माइक्रोफोन पर अब आमंत्रित करना चाहूंगा दूसरी अंतिम बार फॉर द सेकंड लास्ट टाइम ऑन टुडे मॉर्निंग सतीश को अंग्रेजी में आगे का को देखा हाल सुनाने के लिए। धन्यवाद। Thank you very much, Shikobi. And 24 for the loss of 1 wicket. Good going here for the team. Host team so far doing a fantastic job. KFC Konaje, 2 opening batters. 25? 24. It's now the no wide. It's a 24 for the loss of 1 wicket. Kiran will go in to take the strike. And Shahid will go into ball that 4th over of the innings. Kiran being the one of the organizer of this cricket tournament will going to see how will go into bat in the remaining 3 overs. Right arm around the wicket, Shahid past the umpire Satish Murman. Oh, pulls that one. It's going to be a chance here for the fielder, but I think umpire is called. It's a no ball. And no ball at the same time. Confusion for the second run, and unfortunately Varun back into pavilion. Well, catch which is dropped, but even that catch which is a no ball called by umpire, it's called because of the height of the delivery. Kiran lofted that one, just reaching for the delivery, and unfortunately Varun back into pavilion. A free hit delivery for the batter now for because of that no ball, and the new batter has got opportunity to get this free hit delivery. Joel is by new batter in. Will go into face Shahid and free hit delivery.
Shahid, right arm round the wicket. Balled him, cleaned him up, and because of that free hit delivery, Zohel will going to survive from that delivery. Very good line in delegation there from Shahid along the carpety balls. Batsman wanted to go for the big shot, missed it completely, and fortunately because of that free hit delivery, Joel will be safe. Shahid to continue from the far end. Joel will going to take the strike. Right arm round the wicket, balls. Lovely delivery. That ball almost pitching in the middle and off stump, but the batsman again tried to make a little bit room to play the shot. Misses the line completely. Wicket keeper just collects the ball and then uprooted the base, but no damage done and no run scored. 26 for the loss of 2 wicket. Good bowling there from Shahid so far. After that he bowled no ball. He bowled a very good 2 deliveries after that, and scoreboard is not moving here. And 26 for the loss of 2 wickets. Shahid again bowling with a short run up. Right arm over the wicket, bounce to Joel. Joel tries it, a nice looking try down to long off range, and there is no fielder in the deep long off, but the deep extra cover field going to run across his right, but a long on fielder in fact getting that one, and before throw coming from the deep, ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, scoreboard moves on to 28 for the loss of 2 wicket in the over. Number 4 is in progress. Shahid to continue from the far end. Fourth time in this over. Right arm round the wicket. Driven just wide off short mid on fielder. He fields the ball down at short mid wicket. One more single added total. With that single, score numbers on to 29 for the loss of 2 wicket. The last 2 deliveries left in this over. Shahid will go into bowl that 5th delivery to Kiran. Shahid round the wicket to Kiran. Kiran again wanted to go for the expansive drive. Didn't got enough room to play the shot. Lovely line maintained there by the bowler Shahid in this over, keeping the batsman very quiet. Last delivery remaining in this 4th over. Shahid the bowled very well so far. 5 runs in this over. Kiran is batting on 9 with alpha upon boundary. Will going to take the strike. He attempted for a switch it, but again didn't got the bat onto that. Looks like it's going to be one more leg by here. Tidy over there from Shahid. 6 from that over. After completion of over number 4, it's 30 for the loss of 2 wicket team. KFC Konaje, the host team, they're searching for the right track. They got 30 runs and they got some run rate of 7.5 runs per over. 2 overs remaining in their innings. Fifth over is going to start, and Samir will going to bowl that 5th over to the right-hander batsman Kiran. Kiran picked up a single in the last delivery of the over, so that he will go into be the striker now. Right arm over the wicket delivers. Beautifully bowled outside the run of off stump, and Kiran just wanted to get that one in the onside region, but
He wanted to get that one against the turn of the delivery, against the line. Missed it completely. No damage done, no run scored. Samir, balls going to be wide. Kiran watching the ball till the last moment, left the ball rightly so. Nothing much to do with the delivery, and extra added to total. 31 for the loss of 2 wicket in the over. Number 5 is in progress. Switch it is attempted again. Kiran missed it completely. Kiran, after getting got a very good start from his bat, slight a bit of struggling to get the ball into his bat. Third time in this over. Going to be a wide. They will go into cross off for extra run there. Quick run taken by both the batters. 1+1, 2 wides. With that 2 wides, score moves on to 33 for the loss of 2 wicket in the over. Number 5 is in progress. Samir back to his body mark. Joel back to his strike. Again, a lovely delivery indeed. Ball just passing around the legs of the batter. Excellent delivery. 3 balls he bowled. The tidy line and length. One more delivery. Batsman just shuffled across the line of the delivery. Wicketkeeper completely missed it. The by call by umpire. One more extra. 34 for the loss of 2 wicket. Last 2 deliveries left in this over. There's slight a bit of break from the bowlers of team YRB are really getting into this match very well with some tidy overs. Driven down to mid-wicket division, fumble from the fielder, and they will going to grab the opportunity to come back for the second with that 2 valuable runs. Covered numbers on to 36 for the loss of 2 wicket. Last ball remaining in this over. One more tidy over is in progress. This time wide call by umpire. Ball is just going outside the line of off stump, and Kiran left the ball. Good judgment. One more single. 37 for the loss of 2 wicket. This time again Kiran wanted to go for the big stroke on the onside region. Appeal for run out. Umpire will go into refer for the third umpire for the decision. Kiran looking for the big drive. It's a direct hit, and definitely whenever there's a direct hit, it's going to be a close call for the third umpire. But Kings of Sports, absolutely, they got a very good technology to provide that perfect angle. Looks like the batsman just have made it or not. Let's wait and see. The third umpire, what will be the decision when the bails are off. The bat might be just landed. Just landed, so not out call for umpire. It's 38 for the loss of 2 wicket. Last over remaining. So last over from the far end. Kiran back on strike. Deep square leg, deep mid-wicket, deep long on. The fielder down a deep backward point and a deep extra cover. The 5 fielders outside the ring. Short cover point, short third man, short fine leg, short mid-wicket. The fielder inside the ring. The 4 fielders inside the ring. Altogether 5 men in the onside, 4 in the off. Shaif to ball first delivery. This time appeal for leg before wicket. Ball just going to be select stump and they quickly going for the quick single in the form of leg by. 39 for the loss of 2 wicket, and last 5 balls remaining. Shaif to Joel, coming down the track using his feet. This time chance of run out. Kiran a little bit in danger, but because of that throw which is not good enough from the fielder, the wicketkeeper completed that work, but not really getting the result in the favour. One more quick single taken. Scoreboard numbers on to 40 for the loss of 2 wicket in the over number. The last is in progress. Kiran left the ball. Wide call by umpire. 41 for the loss of 2 wickets. Still they have to face another 4 deliveries in this
in this final over. Saif to continue from the far end. Right arm over the wicket bounce to Kiran. Kiran lofted that one right in the gap towards the deep mid wicket boundary for 4 runs, and he will going to get another 500 rupees. Bashir. And Bashir and Arshit and proprietor of Swati Caterers giving that 500 rupees. SBR Bashir also provided 500 rupees for Kiran. Ball name, no. I thought he's gone, but ball just missing his bat and missing wicket as well. A lovely delivery there from the bowler. The ball just misses the stumps. So last delivery. Kiran wanted to go for the big shot, misses the line completely. One leads a single there in the form of leg by. Last ball remaining in this over. Lead by correction. 46 for the loss of 2 wicket, and last ball will go in to start from the far end. And Zoyle has got opportunity, last opportunity for him, and again it's going to be a wide coming down to track, but seeing the ball is going down the leg side. He's just left the ball rightly so. 47 for the loss of 2 wicket. Good score on the board for KFC Konaje. Again driven that one down to extra coverage, not more than a single. In comes a throw from the deep. They coming back for the second chance of run out, and good running between the wicket. 49. The 50 is going to be target for the team, and well. It's going to be a very good performance here from the KFC Konaje. They got to 49, and they set a target of 50 to win the match. For Young Reliance, and wait and see how Young Reliance will going to get this total of 50 to win this match, distributed 6 overs, and before the innings will going to start off, Young Reliance is a time to change in commentary box, and Kiran becoming unbeaten and came as opener for the side and scoring some runs for his team with the 2 boundaries with the 1,000 rupees into pocket, and it's a last and final time for this prestigious KFC Trophy 2024, which is proudly organized by Konaje Friends Cricketers in this beautiful cricket ground, Central Stadium here in Konaje. I request my friend Mr. Gopi to take over the microphone final time for this cricket tournament. Thank you. Gopi. Satish. So exactly 50 the target for Young Reliance set by KFC Konaje. Batted first, they managed to score 49 runs in their stipulated 6 overs. And exactly 50 runs Young Reliance have to score for victory with the required run rate of exactly 8.25 runs per over with help of 10 wickets. The present equation shows for them, and their innings now going to start within just a while. Till then, we'll take a short break, और एक छोटे से ब्रेक के बाद खुद मैं गोपी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा जब यहाँ पर यंग रिलायंस की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक करना. इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಯಂಗ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್.
Right, the match starts. The innings of Young Reliance is now going to start. Shabir and Samir, the openers. Meantime, the bowler who starts a fresh proceedings from the commentator box and is going to bowl the first over of their innings. Shafreed starts the fresh proceedings from the commentator box, and the first ball of the last session of the day number 1 of this prestigious cricket tournament KFC Trophy 2024 is now coming up. पहली गेंद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद को खेलना चाहा इस वक्त, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, सिर्फ गेंदबाज ने इस वक्त अपील की थी और आखिरकार इस अपील को सही तरीके से नकार दिया अंपायर ने। लेग से कुछ बाहर की ओर गेंद निकलते हुए 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है यंग रिलायंस क्रिकेटर्स का। तो ठीक 50 रन निर्धारित 6 ओवर में बनाने हैं। केएफसी कोनाजे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 49 रन बनाए थे। 49 स्कोर्ड बाय केएफसी कोनाजे इन 6 overs and batted first, and now exactly 50 the target for young Reliance set by KFC Konaje to qualify for the next round of this competition. और जहां तक सवाल है इस वक्त शफरीद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, समीर सामना करते हुए रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो दिन धीरे धीरे सुबह की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ और कुछ लगभग पौने 1 घंटे में यहाँ पर उजाला हो जाएगा और निश्चित रूप से यहाँ पर फ्लड लाइट्स की 1 घंटे के बाद यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त फ्लड लाइट्स जल चुके हैं और सुबह का वक्त मैच इस वक्त प्रगति पर, सुबह के 5:15 यहाँ पर बच चुके हैं और इस बीच लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी गेंदबाज ने और 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। 2 for the loss of 9 wicket in the over number 1 in progress. सफरीद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए इस वक्त समीर और ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई, लेकिन इस बार गेंद कुछ लेग स्टंप से ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। हालांकि गेंद लेग स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकली जरूर, जमीन के सहारे आते हुए और सही गेंद घोषित सही तरीके से अंपायर द्वारा स्कोर इस वक्त नहीं मिला। और फिर से एक बार गेंदबाज शफरीद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज समीर के लिए। ये गेंद ऑफ साइड पर गेंद को इस वक्त फ्लिक कर दिया ऑफ द रोज, लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट और 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर। एक निस्संदेह एक बेहतरीन शुरुआत की इस वक्त जरूरत यंग रिलायंस के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें 50 रनों के स्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव टारगेट तक अगर पहुंचना है तो। और शफरीद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, शबीर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज शफरीद इस ओवर में अंतिम बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई और इस बीच अंपायर का इशारा वाइड का हो चुका है और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। लेकिन यहाँ पर रिव्यू इस वक्त लिया गया है, देखते हैं यहाँ पर क्या ये वाइड है या नहीं, तृतीय अंपायर क्या कहते हैं। वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 1 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। अगर बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करना है तो निस्संदेह इस वाइड और नो बॉल के डिपार्टमेंट पर काबू पाना होगा, नियंत्रण प्राप्त करना होगा गेंदबाजों को। इस वक्त केएफसी कोनाजे के और इस बीच गेंदबाज
शफरी तक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद को खेल दिया इस वक्त वाइड स्लंग ऑन की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस और 2 वाइड फेंकने के बावजूद एक बेहतर ओवर इस वक्त फेंक चुके हैं शफरीद, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद ठीक 50 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 ओवर में इस वक्त यंग रिलायंस जोड़ चुका है सिर्फ 5 रन। स्लोवर स्टार्ट मेड बाय यंग रिलायंस, दे मैनेज्ड टू स्कोर ओनली 5 runs yet to lose in wicket after completion of first over, chasing the victory record of exactly 15 overs set by KFC Konaje in the last match of today's morning under this prestigious cricket tournament KFC Trophy 2024, which broadly organized by Konaje Friends cricketers टीम KFC। तो जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से किरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और इस वक्त वो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज समीर के लिए। तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, 45 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 5 remaining overs with the required run rate of exactly 9 runs per over at this situation for team Young Reliance. सेकेंड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स, और गेंदबाज इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए, और मिड विकेट फील्डर को इस वक्त भेज दिया गया है स्क्वायर लेग पर। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद किरण दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, "36 balls remaining in overall calculation. 45 more runs now they have to score for victory." ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, काफी बाहर, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर, 6 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और किरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बॉल्ड आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, pitching right on the block hole, and his middle of stump uprooted, bills are disturbed, and this is an outstanding delivery bowled by the bowler. Have a look at this in the replay पर देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त टॉस करते हुए बल्ले के अति निकट टिप्पा खिलाया था, लगभग ब्लॉक होल पर गेंद टिप्पा खाए, और आखिरकार ऐसा कहना पड़ेगा दैट इज एन एब्सोल्युटली अनप्लेएबल डिलीवरी बॉल बाय द बॉलर किरण। तो पहला विकेट गिर चुका है, सबीर इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन फॉर 1 बॉल ब्रिलियंटली बाय द बॉलिंग ऑफ किरण, एंड a first wicket lost for Young Reliance. It's 6 for the loss of 1 wicket. संकेत इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 3 बैट्समैन फॉर यंग रिलायंस, और इस बीच वो सामना करने के लिए तैयार है गेंदबाज किरण की गेंदों का। तो अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, और विकेटों को सही करने के बाद अंपायर अपने स्वस्थान पर स्क्वायर लेग पर लौटते हुए, और किरण इस बीच तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर, दाहिना तो ऊपर द विकेट, बेहतरीन गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी। इस बीच अपील जारी है, लेकिन लगभग शायद गेंद लाइन के बाहर कुछ हद तक टिप्पा खाई थी, और इस अपील को इस वक्त अंपायर ने नकार दिया, और स्कोर इस वक्त मिल चुका है उनके खाते में 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। किरण फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को उछाल नहीं पाए, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया 22 के रूप में, यह रन उनके खाते में जुट चुका है, और 22 के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए चौके और छक्कों की कोशिश जरूर कर रहे हैं, इस वक्त लगाने की कोशिश जरूर कर रहे बल्लेबाज, लेकिन
अब तक सफलता उनके पक्ष में नहीं आई. लेग स्टंप से बाहर वाइड. One more run added to the total, and with that single run, the scoreboard moving up to 8-9 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. काफी लंबा ओवर किरण का इस वक्त प्रगति पर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. Better again, lost that one. This time it fell short of a fielder. Long off, collected perfectly just inside the fence, and before that, the batsman have got plenty of to come back for the second run. Fantastic struck, and he's got a couple run for that. So 2 रन उनके खाते में जुड़ते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 11 रन. 10 से बढ़कर 11, 9 से बढ़कर 11 रनों पर, और एक विकेट गिर चुका है. गेंद इस बार गेंद को उछाला था, लेकिन ठीक तरह से गेंद को कनेक्ट करने में सफल. 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिला. 12 रन बन चुके हैं यहाँ पर, 1 विकेट के नुकसान पर. 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंद का, तो इस ओवर में अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज किरण तैयार. आखिरी बार इस ओवर में. इस बार गेंद को इस वक्त उछालना चाहा. ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, शायद छोड़ते तो वाइड हो सकता है, लेकिन शायद बल्ला उन्होंने अंतिम अक्षर में अड़ाया, तो इस वजह से सही गेंद को. 2 ओवर की समाप्ति. 2 ओवर्स कंप्लीटेड. स्टिल द स्ट्रगलिंग टाइम इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ Young Reliance. It's 12 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs, and now 38 to get from 4 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 9.5 runs per over. 24 balls remaining, 38 runs more. Now they have to score for victory. Still they got 9 wickets in their hand. 9 wickets they got kept intact. शफरीद जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 5 रन प्रदान किए थे, 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए थे. माफ कीजिए, 5 रन उन्होंने प्रदान किए थे, कोई विकेट उन्होंने प्राप्त नहीं किया था, लेकिन काफी किफायती गेंदबाजी की थी अपने पहले ओवर में. और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त वो अपना दूसरा ओवर शुरू करते हुए, और 2 ओवर के खेल के पश्चात तो फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है. फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. 24 balls remaining, 38 runs more. Now they have to score for victory. और गेंदबाज सफरीद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद. This time, luckily the ball doesn't hit the off stump, and this time this could be in trouble if the throw directly to the stump. In fact, the batsman survived in both occasions in this delivery. पहले गेंद सम से कुछ दूरी पर निकली थी, कुछ इंच दूरी पर. बाद में नॉन स्ट्राइकर पर निशाना लगा था विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करने के बाद, गेंद को फील्ड करने के बाद, लेकिन वहां पर निशाना चूकता हुआ. तो दोनों मौकों में इस वक्त बल्लेबाज बच चुका है. बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज शफरीद की. और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो शफरीद इस वक्त तैयार. दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर. फैंटास्टिक डिलीवरी केम अलोंग द कार्पेट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन. डॉट डिलीवरी. हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ यंग रिलायंस के बल्लेबाजों के ऊपर. चाहिए चंद चौके और छक्के उन्हें इस मैच में कमबैक करने के लिए. और इस बीच शफरीद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का. वाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर. 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. और फिर से एक बार शफरीद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट. इनफैक्ट रन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकल आए, लेकिन विकेट कीपर ने कोई जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वहां पर कोई बैकअप नहीं था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इस वजह से बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर वापस. 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में शफरीद फेंक चुके हैं और अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और बल्लेबाज इस वक्त अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. समीर संकेत नॉन स्ट्राइकर पर समीर इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा विकेट कीपर, चूंकि शॉर्ट फ्रंट लेग पर गेंद थी, लेकिन थ्रू जब तक शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर शॉर्ट फ्रंट लेग फील्डर का पहुंचे
इस बीच रन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोर बदल चुके हैं 22 के रूप में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 15 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Still a couple of balls left in this over और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 16 रनों पर 16 for the loss of 1 wicket with a couple of balls left in this over. और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का तो गेंदबाज शफरीद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बॉल्ड आउट जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट इन लेग स्टंप. बिल्स आर डिस्टर्ब्ड and one more wicket fallen. The problems are now more building up for Young Reliance. Now they are struggling. It's 16 for the loss of 3 wickets. 16 for the loss of 2 wickets in fact. Still one ball left in this over. और इंतजार है इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज का. सो नंबर 4 अनजान बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस ओवर के अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार है. स्कोर है इस वक्त 16 रन 16 for the loss of 2 wicket. Still the batsmen of Young Reliance searching for the right track at this situation. और for the last time in this over गेंदबाज शफरीद तैयार अपने कोटे की अपने स्पेल की अंतिम गेंद लेकर ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए एक्स्ट्रा क्विकर फैंटास्टिक डिलीवरी टू एंड द ओवर फ्रॉम शफरीद. 3 overs gone and struggling time continuing here for the batsmen of Young Reliance. They managed to score only 16 runs on the board for losing 2 wickets. 3 overs remaining and exactly 34 runs they have to score for victory against KFC Konaje and let's see can they reach the target or not. और इस आज के इस पहले दिन के 3 ओवर का खेल बाकी और उन तीनों ओवर्स का खेल का आंखों देखा छुड़वाने के लिए आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम टुडे मॉर्निंग मैं बुलाना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को यहाँ पर अंतिम 3 ओवर का आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आइए सतीश. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. And 16 for the loss of 2 wickets. Still long way to go. And 34 more runs required for the victory. First ball, right arm over the wicket. Going to be a wide. Starts with the wide by Anish. And with that extra score, numbers down to 17 for the loss of 2 wickets. And they need to get another 33 runs to win this match. The team Young Reliance against the team host team. And host team KFC. Konaje, and oh, that might be the very close if the ball will going to hit the stump. Kiran just trying for that direct hit into the striker's end, but couldn't manage to get the stumps and completed a single with that single score. But numbers on to 18 for the loss of 2 wicket. The 4th over is in progress. Anish bowls right arm over the wicket, deflected from the leg. Again, Kiran is a busy customer down at short fine leg region. Again, we got a single in the form of leg by with that leg by score, but numbers on to 19 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. And needed to get some big shot if they wanted to back in the game. Young Reliance Bengre against KFC Konaje. Young Reliance little bit direction and wanted to go for the big shot. Lovely collection behind the stump. Appeal for caught behind. Umpire says not out. Not Amazon. Just a dotted delivery there from Manish. Good comeback here by the bowler. 19 for the loss of 2 wicket. Again, the bowler will going to continue from the far end. Right arm over the wicket. Swept that one very nicely down to square leg region. They're going for the quick single. And wicket keeper fails to gather the throw from the fielder.
They completed quick single and with that addition of that single score numbers on to 920 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Target is going to be of 50 and another 30 more runs required for the victory in remaining 2.2 deliveries. That means 14 deliveries are remaining. They need to get another 30 runs to win this match and things a little bit 2 overs remaining and 28 more runs required for the victory. 14 runs per over required and 8. Bharat will going to start over number 5. Samir the batter will going to take the strike and 28 required from last 2 overs. Here we go. First ball starts with a wide outside the line of off stump and addition of that single score numbers under 23 for the loss of 3 wicket and 27 more runs required for the victory. Bharat bowling with a short run off away from us. Wanted to go for the reverse sweep again. He called the wide deliveries and with that wide score numbers under 24 for the loss of 3 wicket. 2 wide deliveries to start with. Still the opportunities there for the team to back in the game for young Reliance. 26 required from 12 balls. Caught behind the wicket and is gone. So Bharat this time able to get his line and length and the batsman went for the drive, lofted drive, got outside edge of the bat and the wicket keeper behind the stump did the rest and one more wicket is back into pavilion. It's 24 for the loss of 4 wicket in the over number 5 is in progress. So new batter coming to the middle here and right arm over the wicket balls again. Lovely delivery there from Bharat. After that 2 wide deliveries, Bharat managed to get his line and length and he followed by 2 very good deliveries, 1 wicket and 10 balls remaining, 26 runs required for the victory. Bharat again right arm over the wicket balls.
driven that one straight to the answer fielder, and no chance at all for any run. 9 balls and 26 required for the victory. The time is exactly 5 past 35, 5 for 40. Good morning, everyone. Outside line of off stump, and going to be one more dotted delivery. 24 for the loss of 4 wicket. 26 required. Wide outside and for leg stump, and going for the extra run. 1 + 1, two more run added to total with that couple of runs scored, but moves under 26 for the loss of 4 wicket. KFC Trophy 2024, which is proudly organized by Team Konaje Friends Cricketers in this most beautiful huge cricket ground here in Konaje. And again the Bharat bowls a wide, that 4th wide of this over. I don't know why he's feeling that much of pressure. A lot of runs he's going to defend. 24 still required, but he fails to get the line and length. 4 balls already bowled, extra deliveries in this over. This time outside the line of off stump, extra bounce in the negation there for Bharat. 7 balls, 23 required for the victory. Bharat again, away from us. One more very good delivery indeed. That's it. 1 more over completed. Last over remaining. 23 required for the victory. 23 required from last over for the team Young Reliance against team KFC Konaje. And look like it's going to be a difficult task in front of team Young Reliance. Needed to get some at least 4 sixes in this over, last over. Anish will go into ball that last over. 23 required for the victory. Right arm round the wicket. Lofted at one. It's going to be a chance here for the fielder to get catch. And wicket number 1 more wicket is just back into pavilion. And Anish got a wicket here in his first ball. Lovely looking drive, but couldn't manage to get the placement right. Across the line, swings that one beautifully. But the fielder there in the right position at mid wicket completes the catch. Good running catch taken by the fielder. And 5 balls remaining, 23 runs required for the victory. .23 required from 5 balls, and went for the big shot. Wicketkeeper missed it, and they will going to get the single in the form of leg by. 1 more addition. 22 required from 4 balls. This is a final opportunity. 4 sixes required. Otherwise 3 sixes and 1 boundary required for the victory. And missed it completely. Now 4 minutes left in this game. 3 balls, 22. 3 sixes will not going to help, because they got a deficit of 4 runs, even though they get 3 sixes will not going to help a team Young Reliance Bengre. And KFC Konaje, they are in a driver's seat. Absolutely, just 4 minutes left in this game. 1 more beautiful shot, absolutely good shot, but again the same fielder has got some catching practices in the deep mid wicket region. Two balls remaining, 22 runs required for the victory. 11 runs per delivery required run rate. Required run rate 68. Here we go.
Outside run of half time, beautifully ball. Now last ball remaining, 22 required for the victory. That's it, team KFC won this match quite comprehensively against Young Reliance Bengre. 21 runs, huge victory for KFC Konaje. Congratulations for the host team. They won the match. They played the last match of the day number 1, and now going to finish this first day and night cricket match of this prestigious KFC Trophy 2024, which is proudly organized by Konaje Friends Cricketers. And we'll back exactly at 11 o'clock in the morning, and till then we are saying goodbye from our commentary box. Myself, Satish Salyan, and Mr. Gopi will going to give special thanks for the organizer being the part of this cricket tournament, and all the best for the remaining matches of this prestigious KFC Trophy 2024. Thanks a lot. For recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe